एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, हमें खुशी हो रही है आपको बताकर कि ऐसे कोई भी इवेंट्स जब होते हैं तो इनका मकसद सिर्फ नेटवर्किंग नहीं है, इनका मकसद सिर्फ डिस्कशन नहीं है, बल्कि एक फ्रूटफुल, एक रिज़ल्ट ओरिएंटेड स्टेज इसे तैयार करना है। और हमें आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि साईं हनुमंत श्री गुरुदेव एग्री स्पॉन्ज एंटरप्राइजेस के साथ साथ अडानी विलमार और आईटीसी इन इन ग्रुप्स के बीच में जो डील हुए हैं इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान थ्रू वेरियस जो चैनल पार्टनर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, जिनमें विशाल खंडेलवाल जी हैं, संदीप खंडेलवाल जी हैं, प्रवीण झंवर जी हैं, रोहित शर्मा जी हैं, इन सब के थ्रू बायर और सेलर के बीच में जो डील हुई है उसका एक आंकड़ा हमारे बीच आया है। 50,000 टन की डील यहाँ पर साइन हुई है और ये डील कंप्लीट हुई है, तो हमें इस बात की बहुत खुशी है। हैव अ ग्रेट राउंड ऑफ अपलॉज। ऐसे मंच, ऐसे इवेंट्स इसलिए भी सार्थक होते हैं कि जो फाइनल हम एक इकोसिस्टम डेवलप करना चाहते हैं और उसमें सबके लिए विन विन सिचुएशन बने, वो विन विन सिचुएशन इसी तरीके से हासिल होता है। सो वी वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द स्टेक होल्डर्स और जिनके थ्रू ये हुआ है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि 2 दिनों तक चलने वाले इस इवेंट में और भी ऐसे डील्स साइन होंगे और सभी तरफ प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस निकल के आएगी और मोर स्ट्रॉन्गर नेटवर्क के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं बिजनेस की ओर में। I think presentation is ready. So now we are very happy to have you on the stage, Monojit Indra sir, and over to you. Nothing means more to us than the future of our children. And in our jobs as millers, we know that the vitamins and minerals we add to the food we produce will help our families and thousands of families like us To grow up strong, to succeed, and to pursue their dreams. So we try to make our rice, flour, and oil as nutritious as we can. To the highest possible quality. Because we know that doing this will make a big difference to our businesses. And an even bigger difference to the health of our communities. Right now, many millers want to fortify well, yet the technical and the financial hurdles that stand their way are much too high. This means millions of people still aren't getting the vital nutrients they need. Millers for Nutrition is here to change that. We are a growing community of millers and industry partners spanning the globe, helping millers become the heroes of healthy, more nutritious food. We are up and running in 8 countries, providing top-level training, testing, and technical support. Making good fortification make more sense to the bottom line. This is a win-win for everyone because better product quality helps business bloom and boosts the health of their customers. Do this well, we reach millions of people. Do this really well, in just 3 years, we'll reach 1 billion. We are Millers for Business, Millers untuk komunitas, Millers for families, Millers for children, Millers for Nutrition. Good afternoon, everyone. It's a privilege to be here in this platform, and thank you IIRS for putting up this superb conference. And it's our privilege to represent our organization TechnoServe in this platform and talking about the impactful work that we are doing in terms of the nutritional elements, improving the nutrition quotient. I'll just take 5 minutes to talk about some of the, to introduce this program. In the interest of time, I just played that video which was kind of self-explanatory to some extent in terms of the kind of work which this program is doing. So I am here representing an organization called TechnoServe, which is
an international non-profit that operates in close to 30 countries in the world, and it is operating for almost last 50 years. TechnoServe is implementing a program which is funded by some of the international donors, which is working in terms of reducing the impact of malnutrition in the developing and emerging countries in the world. Specifically coming to India, India's nutrition challenge, it's a kind of triple burden. So while we have persistent undernutrition, we also have at the same time widespread micronutrient deficiencies. And we at the same time, we also have, especially more in the urban centers, rising non-communicable diseases. So that's why we call it a triple burden in terms of the nutrition challenge. So on one hand, India is working and it's taking a very confident stride in the global stage as it becomes economically stronger. But at the same time, unless we tackle these basic nutrition problems in the country, will not be able to be counted among the developed countries in the world, which our Honorable Prime Minister has put a vision for ourselves by 2047. So now there are various ways in terms of tackling these malnutrition problems. There is one of the most common way in which the government tries to tackle these malnutrition problems is supplementation. Then there is a dietary diversification, and food fortification is one of them. It is not the only one, but it is one of the solutions which is available. Now it is a combination of all these. So as they put up the slides back again, it is a combination of all these solutions which have to be done so to tackle this malnutrition problem. Now, why food fortification is being touted as one of the most important solution is that because it is very, very cost effective and it is extremely scalable solution. So cost effective and scalable, these are the two very important aspects in a country like India. And the third element which is there is that very little consumer behavior change is required. So therefore it is cost effective, it is culturally compatible, and it is a scalable and inclusive solution, which is, these are the three most important reasons why food fortification is being provided, is being touted as one of the most important solutions to tackle this malnutrition. Now, millets are essential to make this food fortification effective. But what we see is that they face too many barriers to fortify effectively. So, while 143 countries have made fortification of at least one staple mandatory, there is almost half of the fortifiable food is still not fortified in the world. Now here comes Millets for Nutrition. So what is Millets for Nutrition doing? Millets for Nutrition is providing a digital toolbox, it is providing tailored technical assistance and testing support to the millets who are joining this coalition. In addition to providing this hand-holding support in terms of technical aspects, it is also recognizing the performance and rewarding the progress of these millets, at the same time celebrating the success and demonstrating in impact. The overall mission and vision which is being taken is that the better nutrition for 1 billion people in about 3 years time frame, which is this program trying to achieve. So this is being run in 8 countries in the world, out of which 4 of them are in Asia, including India, which is one of the most important countries in which we are implementing this program. There are 3 food vehicles: flour, oil, and rice. And the reason we are here is that rice is one of the food vehicles in which the fortification is happening, and Millets for Nutrition is working with the rice millers in India.
So you can see that this coalition is supported by various ecosystem partners. On one hand, we have some of the global and Indian companies who are in the business of premix, equipment manufacture, etc. We have a whole list of industry associations and some of the top names in the milling industry in India who are part of this coalition. So coming specifically to the rice sector, the reason why we are here is that the Millers for Nutrition is working on 3 specific areas in Indian rice sector. The first is, it is playing a catalytic role in terms of improvement of food safety and quality of the FRK units. The fortified rice kernel units, which are making the fortified rice kernel, which is eventually blended with the rice to make a fortified rice. The second theme in which it is working is promoting launch of fortified rice in the commercial retail markets in India. And the third what it is doing is that promoting South-South collaboration with countries like Indonesia and Nigeria, wherein India is being used as a learning center in terms of dissemination of the learning which has accrued in India over the past 5 years. Specifically coming to this quality enhancement through the model fortified rice kernel units, we have chosen some of the high rice producing states in India, including Chhattisgarh, and in each of these states we are working with some of the progressive fortified rice kernel units and improving their quality systems so that they can become a model fortified rice kernel unit by implementing the food safety management system, and these centers could be then used as a demonstration center for learning dissemination to the other fortified rice kernel units within that state. In fact, just recently we organized one such learning exchange visit in close to Raipur in a place called Dhamteri, where we have developed one such model FRK units. Coming to the second one, which is our thrust, which is open market expansion of fortified rice. While the government of India has taken humongous efforts and today is distributing close to 40 million metric ton of fortified rice through the various social safety net programs, in the open commercial market, availability of fortified rice is still at its infancy. So here again we are working with some of the large regional, medium, small and regional players who are showing interest to work with us to launch fortified rice in the open market, by which what will happen is that close to 60 to 70 million metric ton of rice which is sold in the open commercial market, for which the people who do not having access to PDS rice, they can have access to the fortified rice. So this is one such brand which has been recently launched in West Bengal, and the brand is called Bengal Crown. They worked with Millers for Nutrition, and from zero, today in a 3 to 4 months time, they are already selling close to 200 metric tons of fortified packaged rice under their brand in the open market, mostly by utilizing various e-commerce platforms, modern trade, etc., some of the modern distribution platforms. You can see this is a broader picture in terms of some of the prominent brands which are working with us and which have launched their offering in the commercial retail market by working with Millers for Nutrition, and Millers for Nutrition has provided them technical as well as marketing handholding for making their launches successful. These are some of the press coverages which we have received. The last theme, the last lever on which we are working is in terms of the South-South collaboration. So as I mentioned, the Indonesia and Nigeria, these are the two countries which are working with India closely, both at the government level as well as the private sector level. So Indonesia government is planning to introduce fortified rice
through its school feeding program. And Millers for Nutrition is also working in Indonesia. With our partner organization, we are trying to kind of engage and do advocacy with government of Indonesia so that this fortified rice is made compulsory in Indonesia's school feeding program, which is almost similar to our midday meal program. Now, if this happens, this can open up a huge kind of export opportunity for the fortified rice kernel manufacturers from India, because right now Indonesia is at a stage where India was sometime around 2019, 2020, when fortified rice was just getting introduced in the country. So these are some of the areas in which we just recently organized a government delegation visit from Indonesia who came and spent about a week in India to understand this, our ecosystem. Soon we will be also arranging a private sector delegation visit for them, and this looks to be a very low-hanging fruit for our FRK manufacturers. So these are some of the pictures, and we are here today and tomorrow. I would be happy, me and my colleague are here, and we'd be happy to catch up with you on the sidelines of this convening, answer any questions. And we would like to work with more and more millers in terms of taking this forward so that not just economically, but also by 2047, we can have a healthy, prosperous India. Thank you so much. Thank you so much, sir. और sir, और अब हम आशु अग्रवाल जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज़ स्टेज पर आएं और आप हमारे स्पीकर को फेलिसिटेट करें मेमेंटो देकर. सर प्लीज़. बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये प्रेजेंटेशन रहा है और आशु अग्रवाल जी मेमेंटो देते हुए हमारे स्पीकर को थैंक यू सो मच. और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले पैनल डिस्कशन की ओर. IIRS इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट 2026 थिंक राइस थिंक इंडिया, इसको लेकर ही ये 2 दिनों का बहुत ही शानदार और ये वृहद आयोजन यहाँ पर हो रहा है, जिसमें न सिर्फ देश भर के बल्कि वर्ल्ड वाइड हमारे साथ में डिग्निटरीज़ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अलग अलग पॉइंटर्स हैं, पैनल डिस्कशंस हैं, जिसमें बतौर पैनलिस्ट हमारे साथ में डिग्निटरीज़ जो हैं वो यहाँ पर जुड़ते चले जा रहे हैं और बहुत सी चीज़ों को लेकर, विषयों को लेकर बातचीत यहाँ पर हो रही है. सो बिना देरी के अब हम अपने पैनलिस्ट को स्टेज पर इन्वाइट करते हैं. तो सबसे पहले अब ये जो अगला पैनल डिस्कशन होना है वो डिमांड, सप्लाई एंड चेंजिंग ग्लोबल ट्रेंड्स को लेकर ये होना है, जिसमें बतौर पैनलिस्ट हमारे साथ में जो स्टेज शेयर करने वाले हैं वो है मिस्टर शोभित बगड़िया जी, डायरेक्टर बगड़िया ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड रायपुर. प्लीज़ कम अपॉन द स्टेज सर. मिस्टर राजेश पहरिया जैन जी, चीफ मैनेजर BD क्रिप्को एग्री बिजनेस लिमिटेड न्यू दिल्ली. मिस्टर मयूर जैन जी, मैनेजिंग डायरेक्टर श्री गुरुदेव एग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. I am requesting to all this panelists, please come up on the stage. Mr. Shobhit Bagadia ji, Director Bagadia Brothers Private Limited, Raipur. Mr. Rajesh Paharia Jain ji, Chief Manager BD Crypco Agribusiness Limited, New Delhi. Mr. Mayur Jain ji, मैनेजिंग डायरेक्टर श्री गुरुदेव एग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. और इस पैनल डिस्कशन को जो मॉडरेट करेंगी वो हैं मिस श्रेयसी अग्रवाल, कंसल्टेंट इंडिया, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर ITC UN WTO एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डेवलपमेंट चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ट्रेड एसोसिएशन डिफेक्टो इंडिया. So now over to you.
Namaste to all. A very good afternoon. I know after lunch a session is not the easiest thing, but the show must go on, and let's carry on with our next discussion. So namaste once again. I am Shreyasi Agarwal. I am a consultant to International Trade Center, joint body between WTO and United Nations, and also the Chief Executive Officer at Development Chamber of Food and Agriculture Trade Association, which is working on agriculture-led economy for Viksit Bharat. Well, we are now moving towards a very differently structured rice cycle. It is not dominated by shortage anymore. It is driven by surplus, driven by buyer empowerment, driven by compliance-sensitive trade. Now, when we talk about India, India is the largest producer of rice. It is also the largest exporter of rice by volume. India also has the potential and is the price setter in all terms, also a balance maker or a stabilizer when it comes to the supply of non-basmati rice in the world, also the risk taker. The question never is or never was, can India be the leader in exports or can it export? The question really is, can India export with profitability, with authority, and with predictability? Now to deep dive into this thought, I'm joined and I invite my esteemed panel, Mr. Shobhit Bagaria, the Director of Bagaria Brothers Private Limited, Raipur, Mr. Rajesh Praharia Jain, Chief Manager, BD, Kripco Agribusiness Limited, New Delhi, and Mr. Mayur Jain, Managing Director, Shri Gurudev Agro India Private Limited. This session, we will be discussing the current global demand and supply situation, key import markets for rice, non-basmati rice, the price movement trends and market behavior, and what is really the international buyer looking at. Well, I'll start with a thought. Surplus doesn't just compress prices, it exposes who has a strategy versus who only has scale. And first question, Mr. Bagaria, to you. Chhattisgarh is sitting at the heart of India's non-basmati surplus, while global stocks are historically high. How can private rice exporters thrive as price setters during surplus cycles, securing stronger margins, particularly in Africa, especially West Africa, where it is a very competitive buyer market? Yeah. Thank you, Shreyasi ji, for the question. I think the answer lies in your question also itself. If we are considering today's cycle as a surplus cycle, being a exporter or a trader, I don't have the privilege of being a price setter or hoping for good margins. Since it is a purely buyer's market today, I am not very optimistic as to how I would be able to set a price or try for broad margins. That is not possible. First, we have to understand that. Secondly, as an exporter, what should we do? Instead of aiming for these two things, we should aim at our cost efficiency. That is how we will outgrow this period. This is a cycle. This comes and goes. There will time come wherein demand will be better than the supply. So to sustain till that time, we should focus on our cost efficiency rather than focusing on the margins. Now, in order to cut your cost, you have ample of things you can do. First, you can go for foreign exchange hedging, which we always do, but we just do it for the sake of it. We don't use it as a commodity. So we need to understand how the exchange works, how to analyze as to what is the situation going forward to be when I make my shipment. When do I hedge? How much should I hedge? Why am I hedging? That has to be understood first, not just for because I have sold a cargo, that is why I have to hedge.
that is how, that's one of the things you can do. Apart from this, a lot of things can be done as well. Right. So is it right to say that you're highlighting that in surplus cycles, pricing power comes with discipline and not desperation? Of course. Right. I will also ask another question, which is, again, with West Africa. West Africa today is fragmented, foreign exchange stressed buyers, government-to-government traders, tenders, private millers, and food security buyers all behave differently. How are you segmenting the African demand? And where do you refuse to completely compete on pricing? I think I'm going to build on my previous answer itself. Today, I don't think I can choose whom do I sell and whom do I not sell. If I have surplus cargo with me, I should aim to service or supply n number of people which I can grab. Because today the buyers are less, sellers are more. So rather than choosing whom should I sell or whom should I not sell, I should aim and make a system wherein I can cater to multiple people. Of course, they could be governments, they could be private traders, they could be any kind of buyer. You'll have to customize every deal according to their needs and overseeing your safety as well. But I have to cater to everybody. Otherwise, you won't be able to do good volume in such a market. And during this time, if you don't do good volume, the probability of even earning is not there. That's right. Quickly, hopping on to Mr. Rajesh Praharia. One question that I have is, with global supply far exceeding consumption, price pressure transmits backwards to the farmer first. How does a cooperative-led institution like yours, CRIPCO, prevent farmer distress while still enabling export competitiveness? Shresi ji, we always see in the normal economics also, wherever the supply and demand imbalance is there, if the supply is short and the demand is more, the prices benefit always goes to the growers. But in case of rice, we are seeing that the supply is extensive and the demand is diminishing every second day, because we are getting a tough competition from our co-exporters like Pakistan, Myanmar and other people. Like keeping in view the farmers' perspective, how they are getting the benefit, out of their, say, 100% of the production, 60% is being procured by Food Corporation of India, that is government. So they are getting a minimum support price for that. Still, if I compare the economic cost and the minimum support price, what they are getting it, there can be a difference. The cost of production, the cost of the fertilizer input, the cost of the power, whatever the benefit which is being given, that might not be matching their number. But at the end of the day, for their 60% of the production, farmers are getting benefited. For the 40% of the production, they have to come to the private traders. So all the farmers, the 100% procurement is not done by the government. So it is the private industry also who has to participate in the same and come to that level. Keeping in view the minimum support price and the international market price, India will never be able to export at the minimum support prices. So that economics of supply and demand benefits goes to the farmers only when the balance of the pricing is done by both the private traders and the government agencies. Government can do it by providing some subsidies for the exports to the farmers for the growing in any of the form, maybe not the DBT benefit, direct benefit is not given, or maybe some, now we call it a bhavanta, the differential can be passed on. So those things need to be worked out. But till the time the government will be the major procurement agency, I don't foresee any comparison wherein the benefit, 100% benefit will be given to the farmers. Right. And also drawing an insight from the previous conversation with Mr. Bagadia, he did mention that, one way to, have better margins is to sort of subsidize your input cost. And one question that I have on that is that fertilizer procurement and output pricing are rarely discussed together, yet they define export cost structures. How can input side optimization actually become a trade competitiveness tool for non-basmati rice?
India is a net importer of fertilizer, whatever it is, whether it is nitrogen, phosphate, potassium, NPK, urea. India is one of the largest importer because our production of the grains is highest. So we produce almost 33% to 35%. Rest, all the chemicals, we are importing it from globally, all the origins. All the cooperative companies which are directly importing and giving the subsidies to the fertilizer to the subsidized to the farmers, they all are importing. So cost effectiveness, they all, the entire producing countries, whether it is Jordan, whether it is China, or whether it is Russia, they all know that the India requires a particular number of fertilizers. So they will never reduce the prices. Ultimately, the cost of imports is higher, the fertilizer cannot be subsidized. Government can subsidize to a particular formula level, particular percentage level. It cannot be that I have to come to that MSP price, farmers' fertilizer prices will remain changed. So lot of inflation changes, lot of import cost also is being added, and accordingly the subsidy has been granted to the companies who are importing and distributing directly to the farmers. And there is no commercial benefit which is being taken as an extra margin by all the cooperatives like IFCO, CRIPCO and all the people. So it's right to say that the competitiveness starts well before it reaches the port. Absolutely, because it's import and exports, in particularly for the agriculture, it's a phenomenon. We might produce seeds, but our land is no more fertile without fertilizer. It is very difficult for India to come to that yield, come to that production number and match the requirement of the Indian population. Right. With those thoughts, Mr. Mayur Jain, with India's rice surplus and global stocks high, how is Shri Gurudev Agro navigating 2026 supply dynamics from Chhattisgarh? Thank you, ma'am. I would say for 2026, the supply of the rice is not the matter because already we are sitting at the surplus stage. For 2026, I see moving the rice good quantity, good quality at the good time is the major concerns. Because whenever we see in any of the industry scenario where the surplus of the material is there, we see three infrastructure issues. Like there has to be equally manageable for the transport and logistic. And basically to maintain the buying trends in the lower wise so that our inventory cost doesn't go up in a very way higher zone. Because when you have a surplus round the clock in the year, you'll getting the materials every now and then. So for this surplus here, I recommend and I myself believe as my personal opinion that we should not hold on buying very much. We should, whatever we need to buy, whatever the market is buying will be done in a very trench basis because the supply would be there in a very ample quantity. And areas where we need to look after for this surplus area is the infrastructure of the movement in the transit zone. Either looking after for the ports, railways, or by trucks, or whatever the means we may have to see, because n number of suppliers, n number of people will be depending on the fixed logistics and infrastructure only. That is not growing at the pace what we are growing the supplies. So we need to, when we see ourselves, India as a good supplier, as a teamwork, as a stockholders for this particular industry, we see equally manageable good infrastructure and supply in the time to the buyers will add on the value of the Indian exporters also, ma'am. Right. In terms of shipping and your roadways and all the logistics. All the logistics, because we are bottleneck at that particular situation, ma'am. It is, yes. I'd also like to ask you another Africa question. Which key importing markets like Africa show strongest demand and why? Like, I don't have very vast experience in that, but the best of my knowledge, I can tell you, like Africa is one of the prominent buyers, which is going with a very stable with the buying demands. I see the East Asia also can be explored with the better options, and as in the last sessions, all the senior of our industry told that we need to explore the different areas where quantity can be derived in the better way. Some people told about the Latin America, North America, or Philippines, or some areas like that. So whenever we see the surplus in one zone, we should also see where we can explore the opportunities available, which is untapped right now. So parallelly, we have to work in both of the phase, ma'am. Thank you. Mr. Shobhit,
in surplus cycles, the biggest hidden cost is not freight or fret, however you like to call it, it's carrying risk. So that's the thought that, I come with. Now, with large opening stocks globally, buyers delay contracts expecting price softening. How do you manage milling, inventory, and shipment timing so that you're not financially, globally indecisive? Yeah, that's a nice question, Shayasi ji. I think as a miller, first one has to consider if the demand is weak or is not apt according to their own capacity of the mill. First of all, we should see how much committed quantity are we able to sell in the market, whether it be in domestic market or the exports or through trades, domestic trades, whatever. But first we need to analyze how much quantity can we sell, basically, every month or every quarter, whatever. After making a bit of an assessment of that, we have to see how much exports can be done, what levels are we able to achieve, and how much commitment are we getting in it. In fact, in carrying an inventory has its own cost, and it is a very big cost and a hidden cost. In fact, what we understand is rice is an inventory, paddy is an optionality. So if you're carrying rice and not able to dispose it off, you will be in a soup in one day. So first we have to analyze that. Second, in terms of inventory, we need to make a cap according to one's own capacity. How much quantity can I carry, even as an inventory? And I have to cap the time as well. Okay, I'm going to carry this much of quantity for this much of time. And if I'm not able to sell it during that time, I need to sell it at whatever discount I can get and just finish it off so that I can take the next quantity or the trade. And that is how the business cycle will work for you. It's not possible for you to earn every time. Eventually, if you are in the cycle from start till the end, the probability is in your side. So in that matter, we have to segregate and analyze what our own potential is. Coming to the shipment, again, if you are adhering to these two rules, I think you will get good relations with the shippers as well. You'll get timely vessels with you, even for such destinations wherein people might face a difficulty in procuring the vessels at regular intervals. So if you are able to cater to the market at each point of time, I think all the market forces are there with you then. It becomes a bit easier for you to navigate such harsh waters, and that is how one should be done. So I think the new North Star matrix for me coming out of this is timing. Timing discipline is as critical as market access. A quick question for Mr. Rajesh. Sorry for me flipping through my pages, old school. India's challenge is no longer aggregation, it's alignment with demand signals. How can institutions like CRIPCO help farmers, FPOs respond to market-led signals instead of MSP-led signals alone? See, post lot of development has taken place, post you can say the current regime of the government, wherein they have been focusing on cooperative sectors in a very larger manner. The cooperative ministry initially started with FPO. Now some or other of the FPOs have been becoming little obsolete. Now the cooperative companies have been formed under the cooperatives ministry, and a lot of cooperative companies have been channelized to pamper the farmers' production, to guide them properly. There are two companies I can name out. One is NCOL, that is National Cooperative for Organics Limited, and then there is one company called BBSL, that Bharatiya Beej Sahkarita Limited, which are focusing on production by the farmer, which should increase, where they can get the maximum value of whatever they are producing it. Organics NCOL has started their own operations of procurement, production and everything in such a large scale that now they are coming to the retailers also. BBSL, which is under the CRIPCO, now with CRIPCO we are coming up with a quite number of good seeds for higher production and a better quality and not the common variety.
Common variety seeds are available with everyone. So majorly they are focusing on special varieties, whether it is paddy, whether it is wheat, or whether it is to any kind of a superfood like millet or anything. FPOs, at a one time they were doing quite good, but somehow or other how, with the cooperative sector coming in, FPOs has become little obsolete. Now we are the government of India under the Ministry of Cooperation, they are focusing majorly on cooperative sector. Sahkar se Sahkarita. From protection to participation. Yes. If I can put it that way. Right. Mr. Mayur, what price trends are you seeing and how is the buyer behavior shifting? I see with the good quantum of supplies available in the market, the price will be hovering at the same level, at the same range bound, because everyone, the buyer segment, the importer segment, everyone knows in the worldwide the supply is in a very stable zone and we have a good surplus amount of quantity. But when we speak about the buyer sentiment, now the buyer are like tight with their tummies. They know the supply would be available with some small nuisance newses or some unofficial, unorganized newses flow into the market. The buyer panic doesn't happen. They are much confident that sooner or later the price will be coming at the same level. And I see when the buyer are seeing the price level to be similar, the price level will be consistent round the year for 2026 till the time supply is at this level only, ma'am. Would you say this buyer is selective now or more aggressive now? Which word would define the buyer better? I would say the aggressive would be not in the rat race competition, but when you see aggressive would be a case when the quantity of the buying is lower at the side and the supply is higher at the side. So the same is happening at the time of the people who are exporting. At that particular situations also there are huge quantum of exporters are doing, but the quantum of importing is at the limited value. So there is both competition at the lower, at the miller side also and at the buyer side also, ma'am. So this is the last round of questions, starting with you, Mr. Shobhit. Vietnam, the golden word or the taboo word for us. Vietnam is competing aggressively on consistency, not just price. What operational or quality levers do Indian exporters need to fix if we want to stay dominant beyond just volume leadership? No doubt Vietnam is consistent in their quality and they have been very good in maintaining that. But at the same time, we need to see is that India is a volume game. Vietnam cannot match us in any manner whatsoever. First of all, and whatever Vietnam has done, they have done in consistency of the quality. We just need to industrialize that consistency with the Indian volume. And in order to do that, we need to start bottom from the mills itself. Sometimes we are forced to mix up the different kind of paddies in order to get those volumes. Whenever we also procure, we find a bit of situations wherein we are getting different kind of specifications, but at the end, and we need to average it out in order to get those desired specs. But eventually Vietnam is not a very big competitor for us as such, because they are mainly into white or fragrance rice, whereas we don't have much of ground in that field in terms of export. But yeah, we can certainly look after Vietnam for such consistencies and regulate our mills and have a standard SOP procedures wherein we can do all these things. But it is a bit difficult since we are dealing in a lot of volume as compared to what Vietnam is doing. Also, I think from scale towards predictability, compliance, and we do have a session on quality, so I'll park it for that session. Mr. Rajesh, in a surplus world, discipline matters. Are there markets or channels where India should consciously step back to avoid race to the bottom pricing? Can you just repeat it once again? Okay. In a surplus world, discipline matters. Are there markets or channels where India should consciously step back to avoid race to the bottom pricing? I'll talk about Basmati and non-Basmati, both numbers. We have been doing almost 46% of the global trade to almost all the countries in the world, covering both Basmati and non-Basmati.
I don't find any new trade or a new country wherein I can go and export. The countries which were not importing earlier has opened up their arms openly, and they have come back to India. Even the specific varieties which India was not preparing, they were buying some other varieties from some other countries. Now they have shifted again back to India. The market like Philippines, which was not importing much, now they have started importing again. There has been a market, you can say Seychelles is a very small country. They have been buying a specific variety, but that particular variety was available either in Thailand or in Vietnam. Now they are buying Indian varieties. Libya again is a big market. Because of their own specific requirement, they were buying Egyptian camelino rice. Now they are again back with the Indian market. There has been the markets which we were tapping in, we were working very strongly. Our strong associate board, APEDA, has been very supportive, wherein they have been helping us in getting to the new market, pitching into that particular sector and segment, and we covering both basmati and non-basmati. I don't find a single new market is available for rice marketing at the moment. So strategic restraint is a form of leadership. Not competitiveness, because every market has got their own taste and own requirement. If I go to the Europe market and if I try to sell them IIRS 64, they will not buy. If I go to Benin and I try to sell them 1121 basmati, they will not buy that by volume, except that Indian expats or few restaurant owners will buy it. So all the varieties have got their own specific market. Everyone who has been into this trade, they are well aware that which market will like to have which variety, and they will try to ship that particular variety. Thank you. The last question. Mr. Mayur, the last question for you. What quality or sustainability factors are international buyers prioritizing for 2026? Ma'am, with having the surplus of the supplies in our end, the buyer would be looking after for better cleaning of the grains, better polishing, good control on the moisture, because with a good surplus availability, the aging of the rice can be hovered at more at the port levels also. Because of the liquidation and the consumptions at the destinations, we have to make sure basically the age life of the rice, once it is processed till the time it is being disposed, we have to make sure that particular is being maintained well, so that if anything goes delay at the port level also, destinations also, the rice quality remains intact for that. Yes. So thank you to each one of you. It's been a pleasure hosting you, and I hope I've covered all the questions. And if we do have any questions from the audience, or if anybody wants to, perhaps highlight any other point which has been missed, would be happy to take that up. Thank you, gentlemen. It's been a pleasure. Thank you so much. थैंक यू सो मच। और इस पूरे शानदार पैनल डिस्कशन के बाद एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, और साथ ही साथ में मेमेंटो के लिए हम मुकेश जैन जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे पैनलिस्ट को मेमेंटो दें। डिमांड, सप्लाई और चेंजिंग ग्लोबल ट्रेंड्स को लेकर ये बहुत ही सारगर्भित ये पूरी चर्चा हुई है। पैनल डिस्कशन यहाँ पर हुआ है, जिसमें तमाम सभी पैनलिस्ट ने बहुत ही शानदार तरीके से अपने पॉइंटर्स रखे हैं, अपने बात रखे हैं। मुकेश जैन जी एक एक करके सभी हमारे पैनलिस्ट को यहाँ पर फेलिसिटेट कर रहे हैं। कोसा, जो कि मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ की पहचान है, और उसे यहाँ पर एक उपहार स्वरूप भेंट करते हुए, और साथ ही साथ में रॉट आयरन से बनी ये बहुत ही सुंदर कलाकृति, जो कि छत्तीसगढ़ की पहचान है, इसे भी भेंट स्वरूप यहाँ पर दिया जा रहा है। इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट 2026 का ये शानदार आयोजन है, जिसमें लगातार हम पैनल डिस्कशंस यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको लेकर बातचीत हो रही है, एक्सपर्टीज़ हमारे बीच में पहुँचे हुए हैं, अपने पॉइंटर्स यहाँ पर रख रहे हैं। और इस पूरे पैनल डिस्कशन को बहुत ही सुंदर तरीके से जिन्होंने मॉडरेट किया है वो है मिस श्रेयसी अग्रवाल जी, उन्हें भी अब फेलिसिटेट यहाँ पर किया जा रहा है।
Current global demand and supply situation, key consuming and important marks to watch, price movement trends and market behavior, and what international buyers are focusing on in 2026. ये कुछ ज़रूरी पॉइंटर्स थे जिसको लेकर ये पूरा पैनल डिस्कशन बेस्ड था. So, थैंक यू सो मच. और इससे पहले कि हम अपने अगले डिस्कशन की ओर में, प्रेजेंटेशन की ओर में आगे बढ़े, हमें बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारे साथ इस कार्यक्रम में श्री कांतिलाल बोथरा जी का आगमन यहाँ पर हो चुका है, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिल एसोसिएशन. हम उनके स्वागत के लिए मुकेश जैन जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उनका स्वागत करें. श्री कांतिलाल बोथरा जी. इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट 2026, जिसमें थिंक राइस थिंक इंडिया को लेकर ये बातचीत हो रही है 2 दिनों तक बहुत ही वृहद रूप में. ये शानदार आयोजन जिसका आगाज़ आज से यहाँ पर हो चुका है और इनॉग्रल सेशन में हमारे साथ में माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री OP चौधरी जी की भी उपस्थिति रही और उनके कर कमलों से ही आज के इस शानदार कार्यक्रम का आगाज़ यहाँ पर हुआ है. और यही इस कार्यक्रम की खासियत और खूबसूरती है कि प्रदेश भर से, देश भर से और देश के बाहर से भी, दूसरे देशों से भी हमारे साथ में मेहमान आए हैं और लगातार उनके पहुंचने का सिलसिला भी निरंतर जारी है और यही इस कार्यक्रम को और ख़ास बना रहा है. बहरहाल श्री कांतिलाल बोथरा जी हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं. अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिल एसोसिएशन का स्वागत श्री मुकेश जैन जी यहाँ पर कर रहे हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. श्री विष्णु बिंदल जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं. हम आपके स्वागत के लिए CA अमित अग्रवाल जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आएं और आप श्री विष्णु बिंदल जी का स्वागत करेंगे. IIRS इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट 2026 का ये आयोजन organized by TRIA CG, the Rice Exporters Association of Chhattisgarh, supported by Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Agricultural Processed Food Products Export Development Authority, APIDA, Federation of India Chambers of Commerce and Industry, FICCI, Confederation of Indian Industries, CII, Trade Promotion Council of India, TPCI, All India Rice Exporter Association, AIREA. 2 दिनों तक चलने वाले इस इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट में बहुत से पैनल डिस्कशंस और बहुत से प्रेजेंटेशंस यहाँ पर होने हैं. हम अपने तय कार्यक्रम से लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और तय की गई रूपरेखा के अनुरूप अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपने अगले सेशन की ओर. और हमें बताते हुए ये बहुत खुशी हो रही कि सतीश शर्मा जी भी हमारे बीच में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं. हम आपके भी स्वागत के लिए आग्रह करते हैं कि आप पुष्पगुच्छ से उनका स्वागत करेंगे. अनिल अग्रवाल जी स्वागत करते हुए, सतीश शर्मा जी. इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट में हमारे साथ में डिग्निटरीज़, एक्सपर्टीज़, सभी एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत ही एक खुशी हमें हो रही है कि लगातार इस बात को लेकर चर्चा यहाँ पर हो रही है कि राइस बोल ऑफ इंडिया, जिसके नाम से छत्तीसगढ़ जाना जाता है, उसी छत्तीसगढ़ में हम और आप सभी मौजूद हैं और इस राइस बोल ऑफ इंडिया में राइस को लेकर बातचीत यहाँ पर हो रही है और उसी के अनुरूप यहाँ पर इतना वृहद और शानदार इस
कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है। एक्सपर्ट्स हमारे साथ में लगातार आ रहे हैं और जुड़ रहे हैं, हमें उन्हें सुनने का, जानने का मौका यहाँ पर मिल रहा है। लगातार पैनल डिस्कशंस हो रहे हैं जिसके अलग अलग पॉइंटर्स हैं, लेकिन अब हम तान्या राणा जी को भी सुनेंगे, लेकिन उनसे पहले हम मंच पर आमंत्रित करते हैं कैप्टन धनंजय कुमार जी को, वाइस प्रेसिडेंट। आप कृपया आए, बोथरा शिपिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से आप हैं और आपके प्रेजेंटेशन के लिए हम आपको इनवाइट करते हैं स्टेज पर। कैप्टन धनंजय कुमार जी, और इनके बाद हम मिस तान्या राणा जी, सीनियर प्राइस रिपोर्टर एग्रीकल्चर एंड फूड प्राइसिंग S&P ग्लोबल को हम सुनेंगे और हम आपका प्रेजेंटेशन देखेंगे। सो ओवर टू यू सर। थैंक यू। हेलो हेलो, नमस्कार छत्तीसगढ़ रायपुर। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मुकेश जैन जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और इस भरी सभा को संबोधित करने का मौका दिया। मैं ऑल्सो स्वागत करना चाहूँगा हमारे डिग्निटरीज का, यहाँ पार्टिसिपेंट्स का, और जो इस ट्रेड से लगातार जुड़े हुए हैं। ये दूसरा ईयर है जब मुकेश जी ने इतनी बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ छत्तीसगढ़ रायपुर में इसका आयोजन किया है। इसके आयोजन के लिए मुकेश जी का जितना भी धन्यवाद किया जाए वो कम है। वी हैव बीन listening everybody since morning. Somebody talked about the volume, somebody talked about the logistic supports, somebody talked about the infrastructure which has been provided to Chhattisgarh and which is coming up in Chhattisgarh, getting a support from Vizag Port as well as Kakinada Port. I am from Bothra Group, and I think Bothra Group name is known to all. If somebody has a doubt, Bothra Group is into the terminals, ports and terminals. We have around 8 terminals in East Coast and 1 terminal in West Coast, Bombay Port. Out of that, we have got 3 terminals in Kakinada under Bothra Group, whereas Kakinada Seaport has got 14 terminals. तो इस 14 टर्मिनल में 3 टर्मिनल बोथरा ग्रुप हैंडल करती है। तो आप राइस से संबंधित कोई भी चीज़ अगर है आपके जहन में जिसकी कनेक्टिविटी हो सकती है बाहर के देशों से, वो हमारे पास उपलब्ध है। दैट मीन्स वी हैव अ कंटेनर टर्मिनल इन काकीनाडा एज वेल एज वी आर हैंडलिंग ब्रेकबल कार्गोज इन काकीनाडा, वाइजैक एंड हल्दिया। रही बात राइस के बिजनेस की, तो राइस बिजनेस से संबंधित जितने भी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, सर मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को कि हज़ारों की संख्या में सभी का एक्सपीरियंस है यहाँ पे, और इस सभा में आकर हम जितने एक्सपीरियंस गेन करते हैं उसका अगर 10% भी अगर हम यूज़ कर लें तो आई थिंक प्रधानमंत्री जी और इस छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट की जो भी प्रेरणाएं आगे लेके चल के जाने की है वो सारी की सारी पूरी हो जाएगी। मुकेश जी ने लास्ट ईयर जब इस चीज़ का आयोजन किया तो हम लोग बहुत अचंभित थे कि ये कितना सक्षम हो पाएगा और कितना सफल हो पाएगा। तो इस साल इसका जो सेकेंड एडिशन आया है उससे देखकर ही पता चल रहा है कि ये आयोजन कितना सफल है। इस सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए और इसको आगे बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट ने जितनी भी योजनाएं डाली है वो हमें एक नई भारत की ओर अग्रसर करने के लिए तो लेके जा ही रही है, प्लस इस देश और इस राज्य की भी सफलता का एक सीधा साधा उदाहरण है। बोथरा ग्रुप और काकीनाडा सी पोर्ट अभी हमारे ट्रेड पार्टनर्स को एक नई ऑफर भी देने वाली है, जो नई ऑफर का खुलासा हम कुछ देर के बाद करेंगे। लेकिन हम निरंतर इस संस्थान जो राइस एसोसिएशन है इसके साथ में हैं। आप हमारे साथ रहिए, हमसे जुड़िए और अपनी जितनी भी परेशानी है या जितनी भी चीज़ें हमें करनी है इस राइस एसोसिएशन के लिए और राइस एक्सपोर्ट्स के लिए वो हम करने के लिए तैयार हैं। आई थिंक जो आज के डेट में जो गति शक्ति का जो 6 कॉरिडोर लेन आ रहा है जिसमें कि ये जो दूरी है वो 12 घंटे से 5 घंटे हो जाएगी और आपकी 130 किलोमीटर की
खर्च भी बढ़ेगी, कम जाएगी. So reducing the cost on the logistics is directly going to benefit the customers. Either it is the shippers here or the consignees. So I would again request each and everybody sitting in this forum and for the coming days, we try to think big and we can achieve big with all supports from Bothra Group. Thank you very much, Captain Dhananjay. Thank you, sir. सर प्लीज़ हम आपको स्टेज पर बुलाना चाहेंगे सर प्लीज़. थैंक यू सो मच सर. और अब हम विनीता सुधाकर जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ. विनीता सुधांशु जी को क्या आप प्लीज़ स्टेज पर आएँ और हमारे गेस्ट को आप फेलिसिटेट करें. कैप्टन धनंजय कुमार जी, वाइस प्रेसिडेंट बोथरा शिपिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड. थैंक यू सो मच सर फॉर सच वंडरफुल प्रेजेंटेशन. और फेलिसिटेट करते हुए श्रीमती विनीता सुधांशु जी, थैंक यू सो मच. और चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रेजेंटेशन की तरफ. और अब हम इनवाइट करते हैं मिस तान्या राणा जी, सीनियर प्राइस रिपोर्टर एग्रीकल्चर एंड फूड प्राइसिंग S&P ग्लोबल. प्लीज़ कम अप ऑन द स्टेज. आउटलुक ऑफ द एशियन राइस मार्केट पर आप प्रेजेंटेशन यहाँ पर देने जा रही हैं. इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट का ये आयोजन यहाँ पर हो रहा है जिसका आगाज़ आज से हो चुका है. प्लीज़ कम अप ऑन द स्टेज. और एक एक करके सभी एक्सपर्ट्स हमारे साथ में जुड़ते चले जा रहे हैं. और बहुत ही सुंदर ये मौका है कि ऐसे एक्सपर्ट्स को और पैनल डिस्कशंस में पैनलिस्ट को सभी को सुनने का, जानने का मौका इस प्रोग्राम के थ्रू हमें मिल रहा है. सो नाउ ओवर टू यू मैम. ओके. Hi everyone, I am Tanya Rana, Senior Price Reporter, S&P Global Energy. So today I'll be talking about the Asian rice market outlook. So these are the topics that I'll be covering in the next few minutes. But before that, I would like to give you a brief introduction about the company and what we do. So a lot of market participants have been using our prices in their contracts, monitor their commodity markets, and achieve full transparency around transaction. These commodity prices cover spot and forward curves as well, and ensure that you receive a consistent and a credible source of information that help you better understand the key changes in the market. So as a price reporter, we do speak to different people in the market on a day-to-day basis, and we collect information from them, and based on the information, we assess prices. The price assessment is based on a methodology that we follow, and the methodology, for example, the prices are reflective for the shipment 15 to 45 days ahead of the market, and it is also transparent and independent of any external factor. So in this line graph, you can see the price of 5% white rice, broken white rice, from all the major exporters in the world. So recently, Indian 5% broken prices fell as low as $332 per metric ton FOB from the current 347 level. So now that the prices have pulled back from the lows, still despite that, Indian prices is the cheapest in the market at the moment for 5% broken white rice. Talking about India for production, we have an upward bias at 151.8 million metric ton, mostly because of improved yields and increase in harvested areas. For exports, we are at 24 million metric ton, because of
now that the restrictions are uplifted and for exports, we have ample domestic supplies in the market, competitively priced also. So we are seeing exports at 24 million metric ton in the current marketing year. Also, improved yield helped India surpass China to become the world's largest rice producer. And we project that in the current marketing year also, India will maintain that position. So when I say ample domestic supply, I also want to talk about the rice supply in the FCI with Food Corporation of India. So rice stocks with FCI is at around 31 million metric ton as of December 1st, 11% higher on the year and 202% higher than the buffer norm. So as of October 1st, the buffer norm is 10.25 million metric ton. So that means India is sitting with huge stocks at the moment. So one interesting fact to note here is the widening price spread between Thailand and Indian parboiled prices. So if you look at the latter part of December and early January, you see a widening spread between Indian and Thai parboiled prices. So Thailand is trading at a premium of $38 per metric ton at the moment. Indian rice, Indian PB is cheaper than Thailand, so buyers are more likely to shift towards Indian parboiled rice. But interestingly, if you go back to July and August, at that point of time, the trend was exactly the opposite. Thai rice was cheaper and buyers opted for Thai rice. So you can see a clear shift in buyers' preference due to price competitiveness. Talking about Thailand, we have a downward bias for production. We are projecting at 20.4 million metric ton, mostly because of decrease in, contraction of harvested area. Also, last year there was flood in Thailand, so flood impacted the production levels. Also, if I talk about exports, so we are projecting it at 7.7 million metric ton for Thailand, mostly because of G2G deals, government to government. 500K with China, up to 100K with Singapore, and they also have planned to expand sales of white rice as well as parboiled rice to Middle East and African market. And last year, Thailand exported around 7.8 million metric ton. So that was because of strong shipment and demand from US. So US, despite being a very big producer, they are also a very big consumer of Thai rice. And when I say Thai rice, it is mostly the Thai home mali rice, which is a premium grade and very popular among the Asian American population in the US. So despite the 19% tariff that we have on Thai rice right now, the demand has been consistent, and US imports nearly 800K metric ton of Thai rice on an annual basis. Mostly because consumers are willing to pay more for the quality and taste. So this is the trend of Thai home mali prices, which has been steady. So prices have stabilized around $1,109 per metric ton FOB FCL after falling in mid-November due to flood-related disruptions. And the prices have since rebounded by around $200, supported by steady demand. So if you compare the price of 5% broken white rice across Asia, Thailand is the most expensive right now, trading at $385 per metric ton FOB. That is mostly because of limited paddy availability in the market. Next to Thailand, we have Pakistan, which is trading at $375 at the moment. So for Pakistan, we have projection for production at 9.62 million metric ton for the current marketing year. Mostly because we have a downward bias, mostly because of the decline in the rice prices last year that reduced the motivation of the farmers to grow more rice this year. For exports, we are at 5.2 million metric ton. So right now we are seeing market tightness that is because of delayed selling rather than actual crop shortage.
So stockists are holding on to the paddy in anticipation of a price rise. So Pakistan is a very big supplier to East Africa. So East African market is heavily dominated by Pakistan. So you see Kenya, Madagascar, Mozambique, it's all dominated by the Pakistan suppliers. I mean, Pakistan is dominating the entire East Africa region. So talking about Vietnam, for Vietnam, we are projecting the production at 26 million metric ton. We have a downward bias for production because again the farmers are moving on to other crops such as fruits and vegetables because of declining rice prices last year. For exports, we are projecting at 7.4 million metric ton, mostly because of the Philippine restriction, Indonesian restriction, and intense competition between India and Thailand. For imports, we are projecting at 3.9, and Vietnam is also a very big importer of rice. So Vietnam is the second largest importer in the world of rice, in the world for rice. So Vietnam imports a lot of Cambodian paddy. So here in this bar graph, you can see in 2024, they imported nearly 2.9 million metric ton paddy from Cambodia. And 2025 until November, they imported 4.5 million metric ton paddy. So you see a growing reliance on the Cambodian paddy, mostly because they bring the Cambodian paddy in Vietnam, process it, and they export it further. So Philippines is a major importer, ranked first. So it's the largest importer in the world. And Vietnam so Philippines makes up nearly 40 to 45% of the Vietnam total export. So any policy change in the Vietnamese rice market is going to impact, any policy change in Philippines is going to impact the Vietnamese rice market. So right now, the government of the Philippines, they have banned imports until April, with an exception in January that they will import in the month of January, this month. So they are going to import 500K metric ton of rice, and they want to move away from Vietnam and import from the other non-traditional suppliers like Cambodia, Myanmar, perhaps India as well. And they will be importing less than 4 million metric ton. That's what the Philippine government has mentioned recently. And also the import duty will be increased. So from the current 15%, they are going to increase to 20% since January 16, this month. So you see here, we have a downward bias for imports, obviously because of Philippine restriction. And the stock to use ratio is going to decline. And we are projecting at 12, around 12 something. So mostly because of tighter availability in the domestic market. For Indonesia also, they have, the government, Indonesian government has reaffirmed that they will not import rice despite lower production, because they mentioned that they have enough government reserve. So we have an upward bias for imports at 0.8 million metric ton, because imports are not entirely prohibited. They still can import the private sector, basmati, japonica, fragrant, and broken rice. Here I would like to talk a bit about Bulog. So Bulog is Indonesia's government procurement agency, and they have been out of the market last year also. This year also they have said that they will not import rice. So in 2024, they imported huge volumes. So they have an import quota. They imported nearly 3.1 million metric ton through the tenders. So these are the companies that you see on the screen. They won the Bulog tender in 2024. So right now, Indonesia, there's an ongoing free meal program that was rolled out in January last year. That was also a part of President Subianto's election manifesto that aims to feed nearly 83 million people, 30% of the population. So this could put pressure on the rice reserve. So if domestic procurement falls short,
they might come back in the market and procure rice. But that depends on how successful the next harvest is going to be. Here I would like to talk about the rising Chinese interest in Myanmar rice. So Myanmar Rice Federation is targeting 3 million metric ton exports in the current financial year and 1 million metric ton to China. So until November, they have already exported 800k metric ton to China, closer to the target of 1 million. And we are also hearing from the market that China may increase the Myanmar rice import quota for this year. So lastly, I would like to conclude by saying India's surplus rice supply is likely to weigh on the global prices and reshape the trade in this quarter. But as we all know that India is a huge player in the market, so any policy change that happens in India is going to affect the market, and other markets are likely to follow the trend. So if you want to get in touch with me, that's my contact detail. I'm here to have a chat with you. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for such informative presentation. और हम आपको फेलिसिटेट करने के लिए आदर्श अग्रवाल जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ स्टेज पर आएँ। आदर्श अग्रवाल जी, और हमारे स्पीकर को आप फेलिसिटेट करेंगे। Ms. Tanya Rana ji, Senior Price Reporter, Agriculture and Food Pricing S&P Global का आप प्रेजेंटेशन अभी सुन रहे थे, और आपको फेलिसिटेट करने के लिए हम आदर्श अग्रवाल जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की पहचान कोसा और साथ ही साथ में बहुत ही सुंदर जो छत्तीसगढ़ की कला के नाम से मुख्य रूप से जो जानी जाती है, उसे उपहार स्वरूप भेंट हम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रेजेंटेशन की ओर। डॉक्टर विवेक शर्मा जी, जो कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर से हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि प्लीज़ कम अप ऑन द स्टेज, आप कृपया मंच पर आएँ। बहुत ही खुशी का ये मौका है जब इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट जैसा ये शानदार आयोजन, जिसमें राइस को लेकर, चावल को लेकर इतनी सारी बातें यहाँ पर हो रही है, कैसे और इसे ब्रांडिंग को लेकर, साथ ही साथ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर बातचीत हो रही है, और अलग अलग एक्सपर्टीज़ हमारे बीच में पहुँचे हुए हैं, उन्हें सुनने का, जानने का मौका हमें मिल रहा है। सर प्लीज़। आप सबको सादर नमस्कार। जैसे प्रेजेंटेशन हमारे वाइस चांसलर साहब को करना था, तो कुछ कारणों से वो पहुंच नहीं पाए। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में स्थित है। जब आप रायपुर शहर से इस प्रोग्राम स्थल के लिए आ रहे होंगे, वहीं पर हमारा विश्वविद्यालय है। छत्तीसगढ़ में राइस पर रिसर्च का काम बहुत पुराना है। 1904 से राइस रिसर्च छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो गया था, और पिछले 50 वर्षों में हमने पूरे देश से मोर देन 23,000 वेराइटीज़ ऑफ द राइस उसको रायपुर में कलेक्ट करके रखा है। जर्म प्लाज्म को मेंटेन कर रहे हैं, और उससे काफ़ी वेराइटीज़ हमने मोर देन 50 वेराइटीज़ डेवलप की है। अब नया फोकस प्रोग्राम हमने शुरू किया है, राइस फॉर एक्सपोर्ट। उसके अंतर्गत हम लोग छत्तीसगढ़ के जो हमारे विभिन्न भागों की विशेष वेराइटीज़ हैं, बस्तर से लेकर सरगुजा तक, ऐसी अभी 2 वेराइटीज़ के लिए हमने जीआई टैग प्राप्त किया है, और आगे आने वाले 2 वर्षों में लगभग 10 वेराइटीज़ हमारे स्टॉल में भी रखी हुई हैं। जवा फूल, लोकटी माछी, करहनी, विष्णुभोग, और कुछ स्पेशल वेराइटीज़ फॉर थेरेपेटिक यूज़ है, उसको भी हमारा करने का प्लान है। मैं आप सबको यूनिवर्सिटी में विजिट करने के लिए आमंत्रित करता हूं। आपके पास जब भी समय हो, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में विजिट कीजिए। एक राइस म्यूजियम भी हमने तैयार करके रखा हुआ है। पूरे साल भर आपको डिफरेंट वेराइटीज़ के कैरेक्टर्स, उसका फिजिकल अपीयरेंस, सारी चीज़ डिटेल्स मिल जाएगी। और
मैं आपसे सबसे दरख्वास्त करूंगा कि सबसे अच्छा इंडिया में राइस का एक्सपेरिमेंटेशन प्रोग्राम होता है, वो रायपुर में होता है, हमारी यूनिवर्सिटी में होता है, उसके लिए कई बार हमको प्राइज़ भी मिल चुका है। तो सितंबर अक्टूबर के मध्य में आपसे निवेदन करूंगा कि कभी भी आएँ, हमारे रिसर्च स्टेशन का विजिट करें और जिस भी प्रकार के प्रोडक्ट की आपको आवश्यकता होगी, वी विल ट्राई टू ब्रीड इट, वी वुड लाइक टू डिलीवर इट। आप सबने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर। और हम उज्जवल दीपक जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ मंच पर आएँ और हमारे गेस्ट को आप फेलिसिटेट करें। डॉक्टर विवेक शर्मा जी को हम सुन रहे थे, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से आप हैं और आपने अपना वक्तव्य रखा, आपने अपना उद्बोधन दिया है और आपको स्मृति चिन्ह देने के लिए उज्जवल दीपक जी से दरख्वास्त है कि आप उन्हें सम्मानित करें शॉल और स्मृति चिन्ह के साथ में, मेमेंटो के साथ। Think Rice, Think India. Taking India's rice story to the world इस मोटिव के साथ में 2 दिनों का ये शानदार प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है, जिसकी शुरुआत, जिसका आगाज़ आज से यहाँ पर हो चुका है। और बहुत खुशी हो रही है हमें ये बताते हुए कि सुबह से ही लगातार अलग अलग डिग्निटरीज़ हमारे साथ में पहुँच रहे हैं। माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री OP चौधरी जी की भी उपस्थिति यहाँ पर रही और उन्हीं के हाथों इनॉग्रल सेशन हुआ है। और फिर हमारे साथ में फॉरेन डिग्निटरीज़ भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं जिनको जानने का, सुनने का मौका लगातार अलग अलग सेशंस के थ्रू यहाँ पर हमें मिलता ही जा रहा है। और अब हम बढ़ते हैं आगे अपने अगले सेशन की ओर और अब हम इनवाइट करते हैं डॉक्टर सौरभ बदोनी जी को, साइंटिस्ट, लीड ग्रेन क्वालिटी एंड न्यूट्रिशन, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट वाराणसी। आप प्लीज़ मंच पर आएँ और अब आपका प्रेजेंटेशन अब हम सुनेंगे डॉक्टर सौरभ बदोनी जी। ठीक है, ये आपको नीड है रिमोट प्रेजेंटेशन के लिए? हाँ, थैंक यू। Presentation is going to load. No issues. So thank you for inviting, and thank you all organizers, OPIDA for inviting IIRS here. So I think my name is Saurabh Badoni, working as a scientist in International Rice Research Institute. So by the time actually slides, my voice is clear or is it echoing? Clear. Thank you. So yeah, so I belong to the Center of Excellence in Rice Value Addition, where currently we are focusing on rice varieties, and we have been talking about it since when we starting of this program. So the value addition is very key component of our institute, where currently we are focusing mainly on the heirloom rice varieties or traditional rice varieties. I think before me, Dr. Vivek already highlighted those, that how diverse those are in Chhattisgarh, and even in being in India, really those are very diverse. And what we identified, that there are more than 5,000 varieties still unexplored in India. The point is timely knowing those varieties and getting them tested thoroughly for what they are known for what they are actually having value for. Otherwise, the farmer at the other end won't find them lucrative to grow in their field. So it's very important to find those varieties, link them to the value chain, so that benefit can be harnessed and farmer can get the premium of their produce. So yeah, so think going ahead, so this is just, I would like to highlight a snapshot in a couple of minutes. So I think I already highlighted about it. I belong to International Rice Research Institute, our headquarters is actually in Philippines, and this is the first and only research center outside Philippines of IIRS in India, in Varanasi especially. And this is one of the main component Center of Excellence in Rice Value Addition where I belong to.
So before I get into the details, I think just to highlight, I think my previous presenters already highlighted about it, but would like to briefly touch base that exactly overall the rice export, non-basmati and basmati, where that stands. As you can see, basmati we are exporting is actually a low volume, high premium commodity, unlike the non-basmati, which is high volume but low premium commodity. As you can see, it is reflecting from the total revenue we are getting out of the basmati and non-basmati. And after all, if you boil it down, so approximately basmati export value we are getting around 900 to 1,000 USD per metric ton. However, non-basmati, even we are exporting more than 14 million tons, we are getting less value out of it. And it's already highlighted by Tanya from S&P Global that how it is being, very fluctuating. So the point is, now, though we are a largest producer of rice, and also the production of non-basmati is also very high, how to find actually, and also we have the stocks full in our, with the CI and others, what way we can find out the value out of it so that it can harness, it can help our farmers, it can help our value chain stakeholders to get the premium. So that's where we currently try to focus on. So currently this is just a small study, but again we are continuing on it. So we already started this work with APIDA, with the support of APIDA, where we collaborated with them and started identifying the varieties across the India. So this shows that how those varieties, GI tagged varieties, or even non-GI tagged but with some known value added traits like high aroma, like known medicinal values, known diabetic friendly values, and all some of the anti-cancerous, antioxidant values. We know most of those rices varieties you might be hearing from several stakeholders. What is important is to know it from the scientific perspective so that it has a data-driven evidences, and from the high-level, top-notch laboratories where we have higher standards of ISO. So currently we got that accreditation, and now we are doing those analysis, in-depth analysis also in our lab based at Varanasi. So the focus was so there was actually 300 non-basmati varieties from the here traditional varieties, which had actually the short grain aromatics, pigmented rice, and also the specialty rice of both categories, GI tagged or non-GI tagged. But what was important that more than 25 GI tagged varieties were there in the panel across the country, and more than 20 low GI accessions we identified out of it. So the important point was, when we did the scanning, we considered all the high-level volumes and high-level phenotypes, like for instance, low glycemic index. As people say that this is diabetic friendly, but how we can identify it with the right phenotypic, with right test. So we already optimized those tests for glycemic index, as a low GI, for all the antioxidant, because sometimes we hear from our friends that, yes, this variety is anti-cancerous, but how that value comes in. So we need to do it with the right scientific intervention. So we did it, and also some of the aromatic benchmark. We took those highest level benchmark and identified. So there are some of the initial outputs. I'm showing it here, but you can find more in the stall of APIDA and in our stall in the section. But my point is, we had tried to highlight them what exactly the value proposition of those varieties currently out of 300. So this is just to show that how we benchmark those, how we characterize those and put those value proposition there. But actually that's just the first step. The point is how it can be helpful for further linkages. And also, just a while ago, Dr. Vivek highlighted that there are so many varieties of 23,000 varieties lying at Chhattisgarh. It's very, very need of the hour actually to get those phenotype for such high value testing, and then identify promising varieties out of that list, so that how it can be linked with the export proposition as soon as possible without
any delay. So, and then we are currently developing the database out of it so that all the information therein can be highlighted in this database, and then stakeholders can take benefit out of it, all the value proposition. So this is actually the ISO accreditation which I highlighted, which currently we are using our lab for, and then all the pesticides and all testing. So what was important was to link it with the market. So just to start with the help of APIDA, we tried to fetch actually some of the attraction from Southeast Asian market. So there we started work with APIDA, where they helped us to link it with some of the chefs. We identified those varieties with the suitable consumer preference, taste preference as per Japanese market, and then we shortlisted them with the help of APIDA and then chefs from this Japan and Indian region origin. And then that's how we identified around 3 varieties which has really the potential. And when we went to the Japan market, we found those varieties promising and meeting the consumer acceptance of the region. So how it is important that going with the scientific intervention, identifying those varieties. So by this way, we identified from 50 sticky varieties to 7. Out of 7, then we narrow down based on consumer preference to 3. So that's how we can narrow down and reach out to the market. And after reaching out to the market, identifying the bigger market, then we can go with the backward linkages to the farmer, which is very important. So that farmer can actually, we know the market, and then the farmer can grow those varieties where really the market is. So that's something is the intervention needed. So that is with the APIDA in Japan we worked on. Out of it, there is some other intervention we have also done. We developed the ultra-low GI varieties and high protein varieties at our institute, which actually ultra-low, it means, I think most of you know about the glycemic index, but you know that when we consume the rice, it goes into we consume it, it increases our, any food increases our blood glucose, but rice is having the higher starch value sometimes. So I think it increases the blood glucose. If it increases blood glucose in a very gradual way, there is no spike, so that we call it as a low glycemic index. And that is the rice varieties we should be focusing on to tackle the issue, because rice is known as a culprit in current days, and it's very important to keep our food habit intact and also having the healthier rice with us with the higher protein values. So that we developed, and currently we are planning to link it with the national stakeholders in India and also the further market linkages further. So that something is there. In addition to that, there is what we have tried to do, wherever we identify the high value nutritious varieties with high zinc, high iron, and sometimes the high antioxidant. In certain colored rice varieties, there are certain varieties which are higher in antioxidant, because all colored rice varieties are not equally nutritious or antioxidant rich. So when we look into it, we have the benchmark, identified promising ones, and then link them with the product development. So that's how there are some product were developed with the support of APIDA, of course. And then the cookies, and this is just to start with. There are cookies, there are a range of products prepared out of it, and not only different flakes from different rice varieties, but also the muesli or breakfast cereals we made out of it. So that's how it can be made. And then important point was that in some of the products, because you know those products, rice flakes, rice muesli, which we developed out of it, the important point was the nutrition, the mix of nutrition, a cocktail of nutrition, which contains actually high mineral-rich varieties, which contains also the high antioxidant-rich varieties, which are having the high range. So that's what actually we are currently these products are being displayed in the stall itself. And evening there is some program with APIDA also, where it will be kind of a projected launch. So the point is, the main aspect which I would like to bring the attention is how and where the intervention needed. So I think what is important, as already highlighted by previous presenter and also moderator, Mr. Nitin Gupta from Olam Agri,
he also highlighted that how it is important to intervene actually from the quality perspective, because yield is already there. But to identify the right market, export market with right quality proposition, quality need. If it is a sticky rice, then we need to look into it. If it is healthier rice, some market needs, we need to also look into it. But we need to classify them. Rather than classifying them in the MS, SS and all those category, that classification in such a way, quality-driven market is very important so that we can identify the right value of our rice variety lying in our country. And this will help actually to help us to link the backward to the farmer, so to help them and also to help ourselves as a business, as a stakeholder company. So that's something is important. And second point was policy intervention, because all these type of seed which we are talking about, these seeds are having the informal seed chain. So we don't have most of these varieties in formal seed chain. Seed chain means if you go to certain agency and get the seed of these high quality varieties, you won't get it. So it means it needs a right seed chain, informal seed chain, and also so that seed can be procured by farmers, seed can be procured by any traders. That's where it's important. And all policy support should be there so that all the governments should have those channel viable to nourish this type of initiatives. And then third one is again strengthening rice value chain. So not only starting from the farmer to the miller to trader and again the consumer. Before I think it goes to the consumer, it's very important to let them integrate in a well manner. So that's again very important. I had a discussion with Mr. Mukesh Jain, who is actually having the this whole and soul responsibility of IIRS. So how can we link those stakeholders together so that we can harness the value of this rice, high value rice, in a better way for the benefit of all. And then again, how value addition, which I already mentioned, how we can diversify this. Because more diversification is needed to get the value. Diversification, it means not only limited to some products, but they are market-driven products. If you are targeting the Southeast Asia, there are different products. If you are targeting the Europe, then different products. And there is a potential, enough potential over there. And then again, awareness and capacity building. Because in some cases, we are currently having those programs in our institute where the stakeholders are being trained for the right value proposition. Incubation is being done. So that's where I think it is actually needed in effective ways. So that's how currently our institute is currently contributing to test it, not only test them scientifically with the help of scientific data-driven evidences, but also the GIS-based mapping so that we can map the right areas where we can grow those varieties, because these are state or localized varieties, niche. We can grow them in niche markets, so that's where it is important. And then again, the capacity building and value-added product developments. That's how it is important. So with this, I would like to highlight that how it can help to let us actually a bigger, higher volume of market. And it is actually up to 20 USD, right from the 5.5 to 20 billion USD. We can get this done and then make this India actually vision of 2047. So this is actually our team. I thank our team and also lead, Dr. Nese and Sudhanshu. And thank you for this thing. So if any questions, then this is my contact details might not be there. I will meet you and then maybe because that's missed, but we can, converse after that. Thank you. Thank you. Sir, please, थोड़ा रुकिए. Thank you so much, sir. और हम अनिल अग्रवाल जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ कम अप ऑन द स्टेज. आप हमारे स्पीकर को आप फेलिसिटेट करेंगे. डॉक्टर सौरभ बदोनी जी, साइंटिस्ट, लीड ग्रेन क्वालिटी एंड न्यूट्रिशन, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट वाराणसी से आप हैं. और ये हमारी खुशकिस्मती है कि इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट में हमें आपको सुनने का मौका यहाँ पर मिल रहा है. और आपने बहुत ही अच्छा एक प्रेजेंटेशन भी यहाँ पर दिया है, जिस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज यहाँ पर मिला है. थैंक यू सो मच अगेन. और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले पैनल डिस्कशन की ओर, क्योंकि जब से इस
प्रोग्राम की शुरुआत हुई है। लगातार अलग अलग पॉइंटर्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं जिस पर बेस्ड पैनल डिस्कशंस यहाँ पर हो रहे हैं और बतौर पैनलिस्ट हमारे साथ में एक एक करके बहुत से डिग्निटरीज़ हैं, एक्सपर्ट्स हैं जो कि इस पैनल डिस्कशन का हिस्सा बनते जा रहे हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा वो बनते जा रहे हैं और हमें उन्हें सुनने का, जानने का मौका इस प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पर मिल रहा है। तो चलिए अब बिना देरी के हम इनवाइट करते हैं स्टेज पर Mr. Navreet Pruthiji, Committee Member, GAFTA Board and ARC Fumigator Committee. Mr. A.K. Purkarji, Retired Assistant Director, Entomology, the Plant Quarantine Division of Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage. Mr. S. Jagannatha Rajuji, Head Agri-Business. Dr. Purushottam Mohapatra ji, PhD in Entomology, Manager Sales and Operations, SGS India Private Limited. और इस पूरे पैनल डिस्कशन को जो मॉडरेट करने जा रहे हैं वो हैं मिस श्रेयसी अग्रवाल जी, कंसल्टेंट इंडिया, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, ITC, UN, WTO and Chief Executive Officer, Development Chamber of Food and Agriculture Trade Association, de facto India. तो पैनलिस्ट हमारे साथ में यहाँ पर स्टेज पर आ चुके हैं। हम मॉडरेटर को भी इनवाइट करते हैं और इस पूरे पैनल डिस्कशन का जो सब्जेक्ट होने वाला है वो है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, टेस्टिंग, बायर कंप्लायंस एंड फ्यूमिगेशन प्रैक्टिसेस। इसको लेकर ये बातचीत और ये पूरा पैनल डिस्कशन इसी पर बेस्ड होगा। तो हम चाहेंगे एक बार ज़ोरदार तालियां हों इस पैनल डिस्कशन के लिए और एक्सपर्टीज़ हमारे बीच में आ चुके हैं, पैनलिस्ट यहाँ पर आ चुके हैं और मॉडरेटर भी अब यहाँ पर आ चुके हैं। सो नाउ अब बिना देरी के हम इस पैनल डिस्कशन की ओर अब आगे बढ़ते हैं। So now over to you, ma'am. Namaste to everyone once again. I'm going to reintroduce myself, Shresi Agarwal, Chief Executive Officer of Development Chamber of Food and Agriculture Trade Association, also consultant to International Trade Center. Why do I keep announcing the chamber over and over again? Because the session that we are going to speak about or deep dive into is very closely intertwined with what we are doing or what we propose to do at the chamber, and also my work as a consultant at International Trade Center, which is SPS, and if I break it down, it is sanitary and phytosanitary, MRLs, and your quality checks. So of course, when we talk about a surplus growth or surplus-led growth, then what is important and what will drive access and also acceptance is quality. With that thought, I'd like to invite the esteemed panelist, Mr. Navreet Pruthi, Committee Member, GAFTA Board, and ARC Fumigator Committee Board Member, International Maritime Fumigation, New Delhi. Mr. A.K. Purkar, Retired Assistant Director, Entomology, the Plant Quarantine Division of Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage. Mr. S. Jagdish Raju, Agri-Business Head, Bureau Veritas India Private Limited, and Dr. Purushottam Mohapatra. It's Mahapatra, how do I pronounce it? Okay, Dr. Purushottam. PhD in Entomology, Manager Sales and Operations, SGS India Private Limited. This session, and as the MC already announced, is such an important session because we talk of trade, we talk of production cycles, everything is intertwined, interlinked with quality at every level: production, value addition, processing, and then packaging, fumigation, and then exports to the time it reaches the consumer's table. With that thought, we will discuss quality benchmarks in major importing countries in this session.
role of fumigation and phytosanitary treatment in meeting import norms, testing, inspection and certification requirements, ensuring consistency in product quality, reducing rejections and strengthening the buyer trust. First up, I have my first question for Mr. Navreet Pruthi. GAFTA protocols are increasingly being scrutinized by buyers, not just port authorities. How does compliant fumigation now influence buyer confidence, insurance acceptance, and contract repeatability? Good afternoon, everyone. Firstly, I'd like to thank the Rice Exporters Association of Chhattisgarh for this opportunity to be able to present to you our thoughts on this particular topic. GAFTA is an association where 80% of the world's trade contracts happen through them. So 80% of the world's trade contracts are GAFTA contracts. So while this has been generalized, GAFTA has now specifically come out with GAFTA 122, which is specifically for rice. So this contract is purely for rice, and they've incorporated things and points which people in this trade require. The draft was out sometime in November. I'll be happy to share a copy with anyone who wants it. I don't know if it's been further worked on. I haven't lately been updated on that. But once it is, you will find this on the GAFTA website. With regards to GAFTA wants everything standardized, and the reason for that is that they feel that once everything is standardized and things happen in a manner in which they're supposed to happen, then they don't foresee that there should be a problem at the other end of the spectrum or the destination in this case. So when a fumigation is done or when rice is, for example, loaded, the quality parameters that are set, those are given. If those are followed the way they want them done, this will ensure that your goods reach the destination, that is free of any challenges that may lead to a dispute. And once you're able to do that, that would, also help in the long run, lower your insurance costs. It will enhance your reputation, enhance your brand value, and also will help you build the trust with the customer, which will then further, you'll be able to cut down on your costs that come along the chain of things. Absolutely, and having executed a project with WTO in the capacity with STDF, which is Standard Trade Development Facility, value chain development was an important integral part of it, and every part of the value chain. So very similar to what you just defined. My first question to Mr. Purkar, from your experience, which insect or infestation failures most often trigger long-term buyer distrust, not just single rejections? Good afternoon, everybody. As per Madam has already given my introduction. So she has already mentioned that I worked. Hello, are you getting me? Hello, you are getting me? So, Madam has already given my introduction. Okay, अब आएगा शायद हाँ. Introduction that I worked in the Ministry of Agriculture, Government of India, Directorate of Plant Protection, Quarantine, Storage. I had experience of 38 years of working in quarantine division at all the international airports and seaports, like you can say the Chennai, Calcutta, Bombay, and Delhi. Besides that, after my retirement, I got myself associated with the fumigation agency that is known as Pest Mart of India Limited, and I gained the experience of fumigation also of
fumigation of agricultural commodities meant for export to abroad. As far as there are the lot of agricultural commodities, they are being exported all over the world, and they are regulated as per the guidelines of the International Plant Protection Convention. And as per the aim of International Plant Protection Convention is to give the guidelines to all the signatory country of the IPPC, that they should formulate their rules and regulations for the import of agricultural commodity to protect their flora and fauna. So accordingly, every plant quarantine, all the countries, they have their own plant quarantine regulations, and those regulations are to be complied with by the exporting country. So as far as rice is concerned, there is number of store grain pests are associated with it. If you visit our exhibition, there you will find we have put up a chart where you can see various store grain pests associated with rice, and one of them is khapra beetle, Trichoderma granarium. In fact, in the import regulations of the importing country, they don't want the khapra beetle should come along with the rice. That is one of the very serious pests of the rice. Along with that, some other insects are also there. And for import of rice from India, no country wants any khapra beetle in their consignment. Secondly, as per some regulations, as per the requirement of China rice import, Government of India have formulated SOP. Accordingly, the rice meant for export to China is inspected, and fumigation and certification is done. In case of khapra beetle, most normal dosage of fumigation is hardly 48 gram per cubic meter, whereas for khapra beetle, all the countries they have prescribed that the rice should be fumigated with 80 grams and some countries 100 grams per cubic meter to eliminate khapra beetle totally. In case they notice on reaching the consignment to destination, if they find any khapra beetle, they reject the consignment, either they deport or consider for refumigation at the port of entry. Secondly, there are some other minor pests also. They are also, sometimes they take it seriously in case they are noticed in a large number. So in this case, the khapra beetle is the most disturbing insect for the importing country from India. It is known as a quarantine pest. We call the quarantine pests which are not recorded in any other country. So khapra beetle is a native of India and it is not found in other countries. So all the countries importing rice or other commodities from India totally take care of this khapra beetle doesn't enter to their country. Thank you, Mr. Purkar. Of course, some failures do cost us markets, not just shipments. Moving on. My next question is for Mr. Jagannathan Raju. Which tests are non-negotiable and which are value-adding, and how should exporters prioritize the same? Good afternoon to all. And first of all, my hearty congratulations to Chhattisgarh Rice Association for organizing such a great event, and especially Mr. Mukesh ji and his team. And coming to the question, regarding the tests, you are asking us to prioritize on the experts, whatever the exporters has to do. There are certain chemical tests and physical parameters tests which can be done. But the exporters should prioritize to which country they are exporting the cargoes, and they should be aware of what are the requirements of the importing country and what are the test requirements and what are the elements to be tested for a particular country. Because from country to country, the elements of the pesticides or whatever the elements, chemical pesticides or whatever, even it's of non-GMO also, elements keep on changing. And they should be aware of what the country requires, and they should have a database with us or with a particular region, or region-wise they should have a database. So these are the elements what we get at this origin, and these are the components we get, and these are the results. If we have a database, or
if ample time is not there, we should have at least a database and extra past record of those tests and test results. And for any test, for any chemical test or any physical or whatever test, physical test may not be require a much ample time, but all the chemical tests require a minimum time of 5 to 6 days. And when the exporter is going for a tender, he will be having a week of 10 days time with him. So they should submit those samples prior to the tender submission, and they should have a targeted region where they are trying to procure the cargo from that region. And that region samples to be tested for the required parameters as per the requirement of the country. So in that case, they can avoid the risk and whatever the consequences at other destinations, importing countries. So prioritization protects both time and trust. Yes. Thank you for that. Dr. Purushottam, my next question is to you. Which molecules are becoming high-risk flags in 2026, especially for non-basmati rice? Yeah, good afternoon, everybody. First of all, my thanks to the Chhattisgarh Rice Exporters Association for this wonderful event and providing me the opportunity to be in the panel. Now, regarding pesticide molecules, it is a vast subject. All are using the pesticides in the fields. However, in non-basmati rice, there are very less number of molecules that is detected. And basically, it is tricyclozole, carbendazim, you can say chloropyrifos, then aceclopnac, imidacloprid. These are some of the pesticides that has been detected regularly in non-basmati rice, but not in a large scale. Where it is used regularly, it has been detected. Thank you. Mr. Navreet, quick 2 questions for you. In oversupplied markets, shortcuts appear. What are the most common phosphine failures you see, and how directly do you translate into cargo disputes or claims? Okay, let's call them fumigation failures and not just phosphine alone. Let me go back a little bit. Failures start from the beginning, and that beginning is from your stage of paddy, to processing, storage. That is where you find invisible risks. You have your stack, you don't see that it's done properly, fumigated properly, ventilated properly. So you have problems that start from the middle, and that grows. So by the time you see that, you've already, damaged a lot of your cargo. Coming on to the shortcuts that occur because of oversupplies and challenges to exporters, a bit of shortcut on processes and prices lead to a lot of challenges. A simple example is that if the cargo is not fumigated properly, and why would it not be fumigated properly? Now, there are 2 things to this. You have one side is the exporter who, wants to try to get the best possible prices so he can keep his costs under check. The second aspect is the fumigator who wants to give a service to an exporter at a price that may not be remunerative. And if it is not remunerative, that means there's going to be some cost cutting somewhere to cover up. With that happening, I'll give in just a perspective that I want to share is that the overall cost of fumigation to the value of cargo is 0.0013%. That's all, 0.0013%. It is so negligible that, it's not registering so well on a calculator. It's going to cost you hundreds of thousands of dollars if there's a problem at destination. But just getting a job done properly, ensuring that you've done the job, the right dosages are used, product is placed properly, you achieve the concentration and times that are required to give you a kill, will save you a lot of challenges. I'll give an example. Let's take a shipload of 30,000 tons. And say we take a decent fumigation that in India would probably not cost more than 30 cents. So that's $9,000. But at the same time, if this vessel reaches destination and that there is infestation in it, the cost starts escalating from there. So if you look at fumigation that costs, from 30 cents that you're paying at destination would probably become $1, $1.50 to $2 a ton at destination. Further, you have to take into account you will suffer demurrages, average of $15,000, $20,000 a day.
this is just the basics I'm saying. There are so many other costs involved, whether vessel shifts out, doesn't shift, port charges. So this all is a huge cost. So you just need to compare, say, a basic cost of, say, $150,000 to $9,000. So the price difference makes it really, really a simple thought that you really need to, it's not much of a cost. You need to look at it in a broader manner. It's up to you, as I say, that you can, either make or destroy value at every step of the way. And if you are a little careful in what you do, it's going to save you a lot of trouble. And surely we do say that, penny wise, pound foolish, shortcuts, technical lapses become commercial disputes. I would also like to ask you another question, being sensitive on the time. Despite global pressure, some markets still insist on methyl bromide. Where is its use still unavoidable, and how should exporters manage regulatory safety and reputational risk? Methyl bromide is a product that there has been no substitute for it so far. I mean, as fumigators, we feel that it's been banned, and the reasons are not correct as per us. A lot of money has been spent, hundreds of millions of dollars have been spent on substitutes, but there's been no substitutes. We are back to using, in the Western countries, molecules that were in the 50s and 60s, things like sulfonyl fluoride, which is now under a new name of Profume, or hydrogen cyanide. We are back to using these products. Methyl bromide, the use of it is determined by the importing country. More often than not, the exporting country doesn't have a choice. And there are certain insects, like Dr. Purkar was mentioning, Khapra beetle. Khapra beetle requires a product like methyl bromide to give a kill, a really proper kill. Phosphine doesn't give that kill that is required because the exposures and time required is a lot longer. I'll quickly finish. I also want to state over here one thing, that in India, you are really left with phosphine as a fumigant. There is resistance to phosphine. And if we are not careful, if we don't fumigate properly with proper dosages, proper exposures, we will reach a stage where we will not have a product to kill infestation, and that will be a sad day for this trade. Sure, so exporters must balance with regulation and reputation. Right. One quick question for Mr. Purkar. What systematic gaps weaken the credibility of phytosanitary certification? How can exporters fix this? What systematic gaps weaken the credibility of phytosanitary certifications, and how can exporters fix this gap? You see, in India, for export certification, Government of India have established quarantine station all over India, and they are facilitating the exporters for inspection and certification. So for phytosanitary certification, that is issued by the government department, and then second part is the fumigation aspect, that is done by the fumigation agencies. Earlier, about 20 years back, only there were few fumigation agencies. They had employed technical personnel, and they were approved by the Government of India for undertaking fumigation of methyl bromide and aluminum phosphide. So people were taking the advantage by issuing the fraudulent fumigation certificate and also the phytosanitary certificate. Recently, the Government of India has started issuing the phytosanitary certificate online. So there hardly any chance of fraudulent issue of the phytosanitary certificate. Even the earlier phytosanitary certificate were also available in the market, and people were utilizing them. And as far as the issue of fumigation certificate is concerned, presently there are a number of accredited fumigation agencies now, and their expertise has been approved, and periodically their technical know-how is assessed and accreditation is continued.
they are undertaking the fumigation as per the requirement of the buying country, and they are issuing presently certificate of their own, but in time to come, this fumigation certificate will also be issued online, so that there won't be any fraudulent issue of both the documents, and it will take care of the export certification work. Credibility is institutional, not procedural. Mr. Jagannathan, what moisture and storage thresholds matter most for African and Middle Eastern buyers today? Actually, this one is a current most happening one, because most of the claims, whatever we get from destinations, are based off molding and condensation. And the ideal temperature for any transportation of the cargo is between 13 to 13.5, and we generally fix it as 13 to 14% based on the storages and whatever the transportations are there. But ideal is 13 to 14, and whatever the above 14% moisture is always dangerous. And only moisture doesn't place is not only the key factor. We call it as IIRS, equilibrium relative humidity, which is based on the temperature, climatic conditions, and the movement of the cargo from one tropical region to other regions, climatic conditions. So, considering the bag condition of the bags, what are the packages material we are using, and how we are shipping the cargoes, and based on the current situations that we are shipping the most of the consignments on containers on break bulk vessels, and we are doing in double laminated polypropylene bags or BOPP bags. So for these sort of bags, and based on the loading conditions, where we are stuffing 20 to 26 tons or 27 tons in a container, the ideal temperature should be less than 13.5% to avoid damage, whatever the damages to the cargo or delays, whatever detentions. I mean to say that, penalties at destinations. That directly links storage to storage, even climatic access. conditions, temperature, at what temperature we are loading the cargoes. Basically, when we load the cargoes at high temperature, that's a summer at 36, 37 degrees centigrade, and automatically IIRS raises to above 70%. Equilibrium relative humidity, it has to be less than 50 to 60%, below 60%. That we calculate based on temperature, humidity, and climatic, on the day temperature where we are loading the cargoes. So these three factors plays a vital role, not only moisture, but moisture has to be ideally between 13 to 13.5 for containers and 13 to 14% for break bulk consignments. And even the storing conditions, the lot size should be less than 250 or 300, and with the ample space around the stocks, whatever they are storing. Very well. Dr. Purushottam, where are Indian exporters most exposed today? Soil, water, or processing? This is particularly related to heavy metals. It could be, generic. Okay. See, current processors, they are mostly exposed to all the three factors. If I will say regarding heavy metal or pesticide, they are related, particularly it is coming from soil or water. Let us take a case of heavy metals. It mostly comes from water. And if the heavy metals is contaminated, mostly arsenic and your lead, chromium, these all are coming from water. Very rarely it is coming from the processes. And if water and soil both are contaminated, you will find your heavy metals in your product. And after that, all the spraying and all the inputs that they add to it and all the preservation techniques. Right. This is my final question to each one of you. Mr. Navneet, if you had to prioritize one, is risk best mitigated at origin or at sea, and why? If I had to prioritize, I would say at sea, because the conditions over here are hygiene conditions, the conditions at our ports. Studies have been carried out that have proved that we are unable to load insect-free cargo on board. So because of that, to fumigate on a vessel at sea
is your only alternative to ensure that a proper fumigation is carried out and no insects are seen at destination. We, as fumigators, we need to ensure that we do a good job, because it's the quality of our job that is seen first at the destination and not the quality of the product. So when a container door opens or a vessel hold opens, it's the quality of work that we have done that comes first to notice. If somebody sees, the importer sees insects, he's not going to be bothered with the quality of the rice anymore. He's going to want to solve this first. So that is why at sea is the best way to do it. And this clearly signifies or clarifies where exporters need to invest first. Mr. Purkar, my last question to you. If you had to name one misconception exporters have about quarantine compliance, what would it be? If you had to name one misconception exporters have about quarantine compliance, what would that be? In fact, the exporters are very much, they are concerned about their material, that it should reach properly and accepted by the importing countries. So for that purpose, the exporter has also to play a big role in this aspect. And for export certification, as I mentioned earlier also, number of quarantine stations all over India, more than 90, have been established. And also to make available other resources, they are outsourcing also, and government has given accreditation to certain private agencies also for inspection, treatment, and then reporting to the government for certification. And these agencies, they are collaborating with the state agriculture colleges and universities for their laboratory tests, etc. So their main concern is about the quality. For that, there are three stakeholders: the exporters, fumigators, and the phytosanitary authorities. If everybody takes care of, their problem will be solved. Absolutely. Holistically, find a solution to the problem. Mr. Jagannathan, one last question. How does Bureau Veritas maintain trust across jurisdictions? To gain the trust, we should perform well and we should maintain our standards. And for that, we keep on training our team at regular intervals, quarterly, and depending on the new consignment requirements or whatever the requirements of the standards, whatever they list, but we keep on training them and at regular intervals and keep on monitoring them. On-site monitoring is being done. We will be doing on-site monitoring for each and every staff member who works out for us quarterly, and we goes through the internal audits as well as external audit every year. Every year we go through external audit also through NABL, which is done by a third party other than our internal team. And with training and other audits, we we ensure that we are up to the standard and requirement of the buyers. So credibility is an asset, a competitive asset. My last question to you, Dr. Purushottam. How can exporters use scientific data proactively rather than defensively or reactively? Yeah, nowadays everything is data driven. So I expect our exporters to gather the data and analyze how the past behaviors, maybe you can say trading, price, even infestation, everything. Based on that, they have to arrive at a point where they can take some decisions proactively instead of reacting after getting some issues. That reframes labs as trade partners, not just certifiers. It's been an absolute pleasure hosting all four of you, understanding the nitty-gritties, the nuances of quality, compliance, SPS regulation, fumigation. If there is anything that we've missed out and if you would like to highlight, I'd be happy to take it up. Or if anyone has a question around testing, buyer compliance, fumigation. So thank you. We close the session. A big thank you to
for right export. So my suggestion is, there are three, as earlier I mentioned, three stakeholders are there: exporters, fumigator, and phytosanitary authorities. The exporter has also to play a big role in exporting good quality rice. First is they should procure good quality material. There should not be any live insects, and they should see after the procurement, the material moves to the godown from the market. There should not be any contamination during the transit, and all the storage should be disinfested before storing. And then after, it should be produced for the fumigation and then certification. If this process are taken proper care, the things will be, there won't be any problem. Secondly, presently all the quarantine authorities, they have their regulations of import and export. Sometimes the importing country don't inform their importing country's regulation to the exporter. So my suggestion is, whenever exporters enter into any agreement of export, they should ascertain the latest quarantine regulations and requirement of the fumigation disinfestation, and bring it to the notice of the phytosanitary authorities and the fumigation agencies to comply with, to avoid all sort of problem which arises subsequently. Thank you very much. Thank you, Mr. Purkar. Gentlemen, it's been a pleasure hosting you. Thank you so much, and thank you to IIRS for this wonderful occasion to discuss about this very important topic. Thank you so much. Thank you so much, sir. और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, टेस्टिंग, बायर कंप्लायंस एंड फ्यूमिगेशन प्रैक्टिसेस को लेकर ये चर्चा हुई है. सर प्लीज़ आप स्टेज पर रहेंगे, आप सभी से रिक्वेस्ट है. सर हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, आप प्लीज़ स्टेज पर रहें. और आप सभी को फेलिसिटेट करने के लिए हम संदीप खंडेलवाल जी को इनवाइट करते हैं कि प्लीज़ कम अप ऑन द स्टेज. मिस्टर संदीप खंडेलवाल जी, क्या आप कृपया मंच पर आएँ और हमारे पैनलिस्ट को आप फेलिसिटेट करेंगे. हमारे साथ में बतौर पैनलिस्ट आज इस पैनल डिस्कशन में जो शामिल हुए, मिस्टर नवरीत पृथ्वी जी, कमेटी मेंबर, GAFTA बोर्ड एंड ARC फ्यूमिगेटर कमेटी. मिस्टर AK पुरकर जी, रिटायर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर एंटोमोलॉजी, द प्लांट क्वारंटीन डिवीजन ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटीन एंड स्टोरेज. मिस्टर S जगन्नाथा राजू जी, हेड एग्री बिजनेस. सभी को एक एक करके आप फेलिसिटेट कर रहे हैं. संदीप खंडेलवाल जी, साथ ही अमित अग्रवाल जी को भी हम स्टेज पर बुलाना चाहेंगे. आप प्लीज़ मंच पर आएँ और आप भी हमारे पैनलिस्ट को, हमारे गेस्ट को आप फेलिसिटेट करेंगे. थैंक यू सो मच सर. अमित अग्रवाल जी. अमित अग्रवाल जी को भी हम बुलाना चाहेंगे. अनिल अग्रवाल जी, थैंक यू सो मच सर. और पुनः आपसे आग्रह सर कि आप इस पूरे पैनल डिस्कशन को, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से मॉडरेट किया है, आप उन्हें फेलिसिटेट करेंगे. मॉडरेटर को मिस श्रेयसी अग्रवाल जी, कंसल्टेंट इंडिया, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, ITC UNWTO. थैंक यू सो मच सर. और एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं.
for a group photograph, ताकि ये पल हमेशा के लिए जहन पर कैद रहे। इसके लिए एक बहुत सुंदर ये तस्वीर। Thank you so much to all of you. क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, टेस्टिंग, बायर कंप्लायंस एंड फिमिगेशन प्रैक्टिसेस को लेकर ये पैनल डिस्कशन यहाँ पर हुआ है, जिसमें अलग अलग एक्सपर्टीज़ और पैनलिस्ट के रूप में हमारे साथ में गेस्ट यहाँ पर जुड़े और उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी बातें रखी हैं और बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे जो कि इस पूरे डिस्कशन से निकल कर बाहर आए हैं। और अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चूँकि 2 दिनों तक ये पूरा प्रोग्राम होना है जिसमें अलग अलग सेशंस रखे गए हैं, पैनल डिस्कशंस हैं, स्पीकर्स हमारे साथ में मौजूद हैं, बहुत से ऐसे गेस्ट हैं जो कि उनके प्रेजेंटेशन हमें देखने का मौका मिल रहा है, बहुत से स्पीकर्स हैं जिन्हें सुनने का मौका मिल रहा है और साथ ही साथ में प्रेजेंटेशंस भी यहाँ पर हो रहे हैं और पैनल डिस्कशंस भी हो रहे हैं अलग अलग पॉइंटर्स को लेकर, अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर, जिसके थ्रू हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे जानने का और सुनने का मौका हमारे एक्सपर्टीज़ के थ्रू इसी प्रोग्राम और इस स्टेज के माध्यम से यहाँ पर मिल रहा है। तो चलिए अब बिना देरी के हम स्टेज पर अब इनवाइट करते हैं मिस अनीता बारीक जी को, IIRS क्लस्टर हेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कि आप प्लीज़ स्टेज पर आएँ आप अपने प्रेजेंटेशन के लिए। राइस ऑफ बोल, जिसे छत्तीसगढ़ के रूप में जाना जाता है, और ऐसी जगह पर हम और आप सभी मौजूद हैं और यहाँ पर इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट जैसा ये शानदार प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है। सो नाउ ओवर टू यू मैम। थैंक यू वेरी मच। A very good afternoon to all the delegates, policymakers, stakeholders, industry, exporters, everybody present out here. First of all, I would like to give a huge round of applause, and I'll really congratulate the Rice Exports Association of Chhattisgarh, APEDA, the Ministry of Commerce and all the stakeholders that they have put up such a massive show here in Chhattisgarh by organizing the India International Rice Summit here in Raipur. This is really an apt venue for a rice summit because Chhattisgarh is the state which is very, very central to India's agricultural strength. And it is rightly said as the rice bowl of central India. From the summit, it is already understood that a lot of global leaders, delegates, and global business is present here and participating in this summit. This also reflects the strength and importance of Indian rice in the global market, and also the trust and confidence that international market that has shown here on the Indian rice, and considering India as a greater source of sourcing destination for rice. And we can see that only production, having the production strength of rice is not enough. It is important that if you want to become a global leader in rice supply chain, it is important that you need to have a resilient and greater supply chain which is affordable, which is reliable, and it is able to move your goods in a timely manner. And here comes the role of a strategic logistic partner like Container Corporation, which is one of the leading multimodal logistic provider of India. And here, recognizing the potential of rice export and export of other minerals and other products from Chhattisgarh, Container Corporation of India has invested about 300 crores and established a multimodal logistic park in Raipur. This multimodal logistic park in Raipur is spread across 113 acres. It has almost all the facilities including warehousing, rail connectivity, road connectivity, and customs clearance. It has all the logistic solutions that are required for export-import activity.
And this facility is promoting all the rice export from this region and also facilitating the importers over here. Today this facility has been generated with a huge capacity, though it has the capacity to handle almost 10,000 TUs per month. It is underutilized. Currently only 10 to 20% of the MMLP is utilized. It still has a surplus land of about 2 lakh square meter, which can be utilized for warehousing, other kinds of logistic facilities such as packaging unit, silo creation. It can also be utilized for post-harvest activities in the MMLP. I would urge the exporters and industry present here to have a look at the multimodal logistic park available here at Raipur, and they can partner with us for all kinds of their logistic needs, which Concur is totally committed to provide. Besides this, Concur has also engaged with lot of our stakeholders in this previous months. Concur has tirelessly worked with shipping liners, the industry here, the importers, and also the Chhattisgarh government. With all this massive effort, we have seen there is a positive trend in the import to the MMLP Raipur. And this is definitely going to support the export out from there, because today we almost have surplus assets, surplus infrastructure and surplus inventory available at MMLP Raipur, and it is totally ready to support the exports of any kinds of product that is going to go from Raipur and Chhattisgarh. Besides this infrastructure, Concur has also streamlined a lot of processes which will help the exporters. For example, Concur has already exempted the EIC TIC charges for exporters who are utilizing the MMLP Raipur. Besides that, Concur has also increased the free time for the exporters from earlier time to right now. It is 15 days free time given for the transit warehousing, and also various kinds of attractive business proposals have been given. For example, if some exporters are giving a certain kind of volume, there are volume discounts that are given to the exporters. Concur is also giving credit facility to AEO certificate holder. So through these processes, Concur is promoting all kinds of trade from this MMLP. Another issue is that today's world is a volatile world. There are regulatory restriction, there is tariff restriction, and it's a competitive world. Here, if the exporter wants to be successful, the exporter has to really adapt to the port congestion, to the regulatory mechanism, or any kind of untoward incident that is coming forth. So in order to manage and to have a resilient supply chain, we have been customizing the services to the customer. There are various kinds of services that is being offered by Concur according to the needs of the customer. Concur also has a lot of domestic containers, so, and Concur is connected and integrated to all the gateway ports. So if the customer wants to take some of the commodities by domestic containers and then further want to move by bulk or break bulk, all of those customized services are provided by Concur. Besides that, Railway is a great partner for Container Corporation. For a swift and speedy movement of containers, Indian Railways is a huge partner of Container Corporation, and Indian Railways has also come up with a lot of new initiatives. In the last year, Indian Railways has come up with a policy called ECRT, that means Exclusive Rail Container Terminal, and this ECRT access charge has been fixed at 80,000 rupees per move, which is lesser than the CRT charges. CRT charges are generally 1,60,000. So the ECRT is also very much cost beneficial to the exporters, and a lot of our customers are utilizing Kakinada port for their bulk and break bulk movement. So Kakinada port terminal, Goodset terminal has been converted into ECRT, and that benefit of the reduced access charge is passed on to the customers. So that is how we have been providing value to all our customers. Not only providing logistic solution,
Conquer is also one of the nodal agency and a partner agency for Chhattisgarh government. Chhattisgarh government is sourcing gunny bales for paddy procurement, and Conquer is one of the biggest partner for Chhattisgarh government in sourcing and also distributing these gunny bales to various depots of Markfed, and that is how Conquer is supporting the whole logistic chain of rice, not only export but also for the domestic movement. So all of these initiatives I would call is that it is not only sum total of the whole, it is even bigger than that. It is a little bigger than the sum total of the whole. And how Conquer is able to move forward as the market leader, we can understand that Conquer has a pan-India presence. Currently, Conquer is operating from 67 terminals. Besides terminal, Conquer also operates from container rail terminals, there are ECRTs, there are private sidings, and all the gateway ports, container ports of India. And with this pan-India presence, Conquer is working in almost all the states of the country with this 67 terminals. Some of the terminals are purely EXIM terminals. We also have terminals which are purely domestic. We have strategic tie-ups, and there are also terminals which handles both domestic and EXIM. And Container Corporation has, in the North India, it has a presence of 22 terminals. In the West, the presence is of 19 terminals. In South, including Chhattisgarh, there are 15 terminals, and the eastern side, there are 11 terminals. The container rail terminals are spread across 16 states of India, and including Chhattisgarh, and the ECRTs are spread across 7 states, and 12 ECRTs are there for container operation. In 15 states, around 59 private sidings are there, and Conquer is operating from all of this private siding. Wherever there is a customer need, Conquer is supplying the containers and moving their exports as well as imports from the private sidings also. Conquer has presence, as I said earlier, over all the container ports of India. All the gateway ports, Conquer is integrated. They are evacuating imports, exports, and also empty containers wherever repositioning is required. Due to this pan-India network, Conquer is giving a reliable and efficient service, and the supply chain is resilient. In this last year, Conquer achieved a massive feat of the only container operator achieving 5 million TEUs of physical performance. In that, over 3.8 million TEUs were domestic containers, and over 1.1 million TEUs were export and import containers. So how Conquer is able to give this kind of service? It is because of the asset reach, the asset strength that Conquer has. Due to this strength of the assets, Conquer is able to give a very reliable service to the customers. So it has over 400 rakes, Conquer owned rakes, not only relying on railways. Conquer has its own investment, and over 56,700 containers are available with Conquer. So it is not dependent on the market volatility. Whenever there is a demand, there is a massive demand, Conquer is able to scale up the supply. And Conquer has enough of equipment, handling equipments in its kitty to handle all kinds of cargo. These are Conquer owned cargo. Besides this, there are a lot of outsourcing by Conquer. We have partners, contractors who provide the equipment services whenever there is a demand. The value creation is through a customer-centric approach by Container Corporation and providing total logistics solution. Today's world, if you want to be competitive, you need to provide competitive services with end-to-end solutions to the customers. And Conquer is in the forefront of this. Conquer is also committed to green energy and green logistics. And as end-to-end services in our terminals, we are equipped with rail transportation,
Conquer is also giving first mile and last mile transportation, warehousing facilities, steep dooring at the port, customs facility, fumigation, palletization. All of the facilities are provided under one roof. Today, everybody is sensitive about green logistics. There are countries in the world, they are sensitive about how much of carbon that has been utilized during the mobility process of the goods. So Conquer is at the forefront of that. 95% of the cargo movement is through rail movement, and as you understand, Indian Railways is achieving almost 100% electrification. So all the cargo that is moved is environment friendly, it is green. Besides that, Conquer has also invested in green energy, like for the first mile and last mile load movement. Conquer has deployed 235 LNG trucks. LNG, as we understand, is a greener form of energy, and that is going to help the environment. Besides that, Conquer has also tied up with TERI to establish an excellence center. It has strategic tie-up with GAIL India for adoption of LNG gas all over our terminals. The other new initiative which is going to be very important for the rice or for the exporters is that for the first time Conquer has started doing shipping. That means Conquer owned containers are now going to go out of the country. These containers are owned by container, they are ISO container, 20-footer containers. Already shipments have started, so that as part of this Atmanirbhar Bharat, the exporters need not be dependent on the liners only. Now we are going to have our Indian make, Indian containers going out of the country for the Indian exports. So this is one massive news I wanted to share with the industry. Please take benefit out of it, because this is going to be a game changer in the coming years. Conquer has also, it has been issuing BLs to our customers, and we have started this service already to Middle East and also to Southeast Asia and China, and very soon we are going to start the service for Africa also. So all the exporters present out here, I would request that please have a look at it. This is definitely going to give more value to you, and we are constantly available to all of you for negotiation or discussion or to customize your services. Today's world is based on information technology, and IT in the past 1 decade has changed all our lives. Our households have changed, our workplace has changed, our public spaces has changed. Without IT, nothing can be moved. So here, logistic industry also, it is very, very important that adoption of technology is there, and the visibility of the containers are there, and there is a constant flow of information, because supply chain, there are so much of changes happening at every stage. You need to have the information, otherwise you are not able to give information to your customers, to your partners, and you are not able to visualize your cargo. So information technology is very important, and Conquer is in the forefront in adopting information technology. For the first mile and last mile transportation in Conquer, we have already developed a mobile app. So any customer who wants to do first mile, last mile transportation, they can book their container through mobile app, they can track it. There is also AI-based terminal management. You can locate your container in the terminal. There is automation of contracts and billing. Shipping liners can forward their requests through e-forwarding note, and e-office is totally digital. Today, nobody is doing anything, any official work through paper. So all the files are moved through e-office. Conquer has also launched a rake monitoring system. As I said, 95% of the containers are moved by rail. So this application is giving total visibility to the containers, where the customer knows where their container, whether it is in terminal, whether it is in particular station, or whether it has reached the port. So there is a complete visibility. This is geospatial monitoring system. It is enabled with the location, so you can track your container and you can provide, it will provide you with the right location.
As I said, the terminal management is AI based. Through this, all the movement, for example, gate movement, classification of goods, if there is any damage or deficiency, if there is any shield break, wagon number, container number, hazardous classification, yard management, everything is being done through AI-based management system and warehousing. Besides all of that, we are also integrated into port community. Today's world, port community is very important, where all the information is channelized back and forth. We also have our integration of our IT system with the iSkate. So customs, port community, and also various agencies of Government of India, all their systems are also integrated with Container Corporation's own ERP. So there is a complete visibility of the systems and processes to the customer. So this integrated service is able to provide a lot of value to the customer, and they can save their time in documentation and the processes that are involved in export and import. By terminal automation, there is also increased data accuracy, increased traceability, reduction in, of course, by green channel of transportation, reduction in emission, the swift information, and because there is a swift information, decision can be taken in a faster manner. So I'm done with my presentation, but I would also like to urge all the exporters and stakeholders present here. At the heart of Chhattisgarh, at Raipur, there is a multimodal park of Container Corporation. Since you are spending a lot of time here in these 2 days for this Rice Summit, please do visit to the multimodal park, have a look. I'm sure you are going to appreciate it, the kind of infrastructure available here. And again, I want to say that it's a great moment for all of us. We also have a booth here in the exhibition. Please do visit the booth. And any information you want, my team is constantly present here today and tomorrow also. If you need any information, they'll be happy to facilitate you and provide all the things that you require. Thank you very much. Thank you for a patient hearing. थैंक यू सो मच मैम। और आपके फेलिसिटेशन के लिए हम सुनीता जैन जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ स्टेज पर आएँ और हमारी स्पीकर को आप फेलिसिटेट करें। सुनीता जैन जी। अनीता बारिक जी, IIRS क्लस्टर हेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को हम लगातार अभी सुन रहे थे, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये प्रेजेंटेशन उन्होंने यहाँ पर दिया है, जिसमें बहुत से ऐसे ज़रूरी पॉइंटर्स भी यहाँ पर निकल कर आए हैं। और अब हम सुनीता जैन जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे स्पीकर को आप फेलिसिटेट करें। यही खूबसूरती है कि छत्तीसगढ़ में जब ये आयोजन हो रहा है, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में जिस चीज़ के लिए छत्तीसगढ़ जाना जाता है, यानी कि कोसा, और साथ ही साथ में ये लौह शिल्प, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ की एक अलग ही पहचान है। और इससे ही हमारे आज पहुँचे हुए सभी अतिथियों को, मेहमानों को, स्पीकर्स को, डिग्निटरीज़ को हम ये तोहफ़ा उपहार स्वरूप यहाँ पर भेंट कर रहे हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब हम रिक्वेस्ट करते हैं, आमंत्रित करते हैं मंच पर मिस्टर उज्ज्वल दीपक जी को, स्टेट स्पोक पर्सन बीजेपी छत्तीसगढ़ एंड फाउंडर DUO's फूड्स। आप प्लीज़ आएँ और अपना प्रेजेंटेशन दें। आपकी स्पीच होगी एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट एंड मंडी टैक्स एंड वैल्यू एडिशन पर। सो ओवर टू यू सर। नमस्कार। लंच के बाद का ये वाला सेशन, अब तो चाय का भी समय हो गया है, उसके बावजूद इतनी संख्या में लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर उपस्थित आयोजकगण, छत्तीसगढ़ राइस एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन, आदरणीय मुकेश जैन जी, अपीडा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड, एंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी, चेंबर्स,
निर्यातक और किसान भाई, धान का कटोरा छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। और धान का कटोरा छत्तीसगढ़ में यह कार्यक्रम आयोजित करवाने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुकेश जैन जी का, छत्तीसगढ़ राइस एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन को। और रायपुर छत्तीसगढ़ से बेहतर कोई जगह हो भी नहीं सकती, मेरा ऐसा मानना है। और इसके पीछे एक सोच है। एक आम छत्तीसगढ़ी घर में जीवन चावल से शुरू होता है और चावल में खत्म होता है। मैं आपको उदाहरण दूंगा इसका। यहाँ का जो स्टेपल फूड है, जो हमारा नाश्ता है, हम लगभग पोहा खाते हैं रोज सवेरे घर पे, या चीला बनता है, या साउथ इंडिया की इडली भी आजकल बहुत खाई जाती है। रात के बचे हुए चावल से हम अंगाकर रोटी भी बना लेते हैं। मन करे तो बोरे एक डिश होती है यहाँ पे, बोरे और बासी। बोरे पके हुए चावल को ठंडे पानी में भिगोकर किसी भी अन्य चीज के साथ खाया जा सकता है। और जो किसान होता है, छत्तीसगढ़ का किसान, बोरे और बासी से ही वो कार्बोहाइड्रेट, वो एनर्जी कंज्यूम करता है। शाम को फिर नाश्ते में हम चावल से बने कोई नाश्ता करते हैं, और रात को फिर चावल, और जो फिर चावल बच जाता है वो अगले दिन उपयोग में आता है। मेजर यही इकोनॉमी है, यही दिनचर्या रहती है एक आम छत्तीसगढ़ी के घर की। और ऐसे धान के कटोरे में जब ये आयोजन हो रहा है तो निश्चित ही हर्ष की बात है। एंड व्हेन वी डिस्कस द स्टेट ऑफ ग्रोथ of a state like Chhattisgarh, it is not about just we are talking about one sector. We are probably talking about किसान की इनकम, राज्य की इकोनॉमी और भारत की ग्लोबल फूड लीडरशिप की। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दैट स्टेपल डाइट ऑफ छत्तीसगढ़ टू फूड लीडरशिप ऑफ इंडिया, ये जर्नी यहां से चालू होती है, मुझे ऐसा लगता है। और जब 15% कंट्रीब्यूशन छत्तीसगढ़ जैसे राज्य का है पूरे भारत के एक्सपोर्ट पे, तो ये और जरूरी हो जाता है कि ऐसे आयोजनों के माध्यम से हम यहाँ पे कुछ अच्छी चर्चा करें और यहाँ से कुछ लेके जाएं, यहाँ से कुछ सीख के जाएं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट राइस एज ए इकोनॉमी ऑफ छत्तीसगढ़, इट इज नॉट जस्ट सफिशिएंट, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। मैं एक छोटे से दृश्य के साथ अपनी बात रखना चाहता हूं कि जब महासमुंद, धमतरी या बालोद का कोई किसान अच्छे बीज के साथ, अच्छे फर्टिलाइजर के साथ, अच्छे मार्केट के साथ, अच्छी राइस मिलिंग, अच्छी पैकेजिंग और अच्छी ब्रांडिंग के बाद अगर यूरोप में, अफ्रीका में या मिडिल ईस्ट में उसका धान, उसका चावल, जो फिनिश प्रोडक्ट है चावल, चाहे वो दुबराज हो या और कोई किस्म हो, जब वो पहुंचती है तब छत्तीसगढ़ के ओरिजिन से बनी हुई कोई किसी चीज का नाम होता है। तो हम सिर्फ चावल नहीं बेच रहे होते हैं, हम एक ब्रांड बना रहे होते हैं, ब्रांड ओरिजिनेटेड फ्रॉम छत्तीसगढ़। और एक राज्य की प्रगति के लिए सिर्फ चावल उगाना नहीं, चावल प्रोक्योर नहीं करना, वेलफेयर स्कीम्स के तहत चावल खरीद के उसे सस्ते दाम में देना, दिस विल नॉट सफाइस, दिस विल नॉट एंड द गेम हियर, इट विल स्टार्ट। और जब तक हम अच्छी पैकेजिंग के साथ, अच्छी मिलिंग के साथ इस फिनिश प्रोडक्ट को पूरे वर्ल्ड में नहीं पहुंचा पाएंगे, देन इट इज ए कलेक्टिव फेलियर। हम अभी तक सो फार सो गुड हैं, मुझे लगता है ऐसे राज्य 25 साल हो गए छत्तीसगढ़ राज्य को बने हुए, पर हमने बस हम बॉर्डर लाइन पे हैं, हम बस वहां पहुंचने ही वाले हैं। बस जरूरत है कलेक्टिव एफर्ट की, और वो कलेक्टिव एफर्ट छत्तीसगढ़ राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के माध्यम से, ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से ही संभव होगा, जहां पे नीति निर्धारक, पॉलिसी मेकर्स, राज्य शासन, उद्योग, निर्यातक साथ बैठ के ऐसी सार्थक चर्चा करें
then only it's possible. और धान केवल एक अनाज नहीं है, पूरी वैल्यू चेन है। और अगर मुझे जो विषय दिया गया है यहां पर, एग्रो एक्सपोर्ट्स, वैल्यू एडिशन और मंडी टैक्स, ये तीनों ही ताकत हैं, क्योंकि किसान का भरोसा इसमें शामिल है, उद्योग की कॉम्पिटिटिवनेस इसमें शामिल है, और क्वालिटी प्रोडक्ट टू द वर्ल्ड। आई थिंक these three things आर वेरी इंपॉर्टेंट। और छत्तीसगढ़ भारत की फूड सिक्योरिटी की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है हम, क्योंकि छत्तीसगढ़ का किसान जब खेत में खड़ा होता है तो भारत का फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसकी शुरुआत 2012 में छत्तीसगढ़ से हुई थी, जिसे बाद में केंद्र सरकार ने पूरे देश में लागू किया, उसका बैकबोन छत्तीसगढ़ से चालू होता है, और ये इकोनॉमी को डिफाइन करता है हमारे यहाँ की। और अब समय आ गया है कि इस ताकत को, इस सिस्टम को हम प्रोसेस वैल्यू चेन में तब्दील करें, और इसका जो बेस है वो एमएसपी है। और हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एमएसपी को सिर्फ एक समर्थन मूल्य नहीं, इसे गारंटी बना दिया है छत्तीसगढ़ में। इसे हम मोदी की गारंटी के नाम से जानते हैं, जहां पर 3100 रुपये प्रति क्विंटल और 21 क्विंटल तक मैक्सिमम, जो कि दाना दाना होता है किसान का, और एक मुश्त रकम जिसको आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई जी यहां पर लागू कर रहे हैं। तो जो वो पैसा मार्केट में आता है किसान के माध्यम से, फिर वो कस्बों में खर्च होता है, एक किसान ट्रैक्टर ले रहा है, ऑटोमोबाइल सेल में बढ़ोतरी हो रही है, जमीनों के दाम बढ़ रहे हैं, लॉजिस्टिक नेटवर्क तगड़ा हो रहा है, और हर कोई प्रॉस्पर कर रहा है। तो वी आर नॉट जस्ट गिविंग टू द फार्मर, वी आर ऑल्सो टेकिंग बैक इन द इकोनॉमी। तो रोटेशन हो रहा है पैसे का, और यही संकल्प है और यही सिद्धि है सरकार की। और आज जब हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, हम 15% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ से भारत देश के एक्सपोर्ट पे, तो हम क्वालिटी की बात भी करना यहाँ पे जरूरी हो जाता है। और आज वैश्विक बाजार क्या कहता है कि उसे ट्रेसेबिलिटी चाहिए, कहाँ से आया है, ओरिजिन कहाँ से हुआ प्रोडक्ट का, क्वालिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, एंड रिलायबल सोर्स चाहिए। अगर ये चारों चीज़ें कोई भी संस्था, कोई भी राज्य, कोई भी उद्यमी प्रोवाइड कर सके, तो देयर इज नो लुकिंग बैक फॉर राइस। और अब जरूरत है सीजी ओरिजिन को एक ब्रांड बनाने की और फार्म टू पोर्ट का लागत घटाने की। हमारे वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी आज सवेरे थे उद्घाटन सत्र में, और उन्होंने कहा कि कैसे हम लैंडलॉक्ड स्टेट हैं, पर रायपुर से विशाखापट्टनम की दूरी को कैसे घटाया जा रहा है, हाईवे बना के, एक्सप्रेस हाईवे बना के। और परिवहन विभाग, नेशनल हाईवेज डिपार्टमेंट इस दिशा में हमारे साथ मिलकर काम कर रहा है। इस दूरी को घटाया जा रहा है ताकि पोर्ट की जो दूरी है, तो हम लैंडलॉक्ड स्टेट होने के कारण वो कमी भी जो छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं रह गई है, उसे हम पूरा कर सकें। और एक बड़ा जो टर्म यहाँ से निकलना चाहिए ऐसे आयोजन से, वो है धान से डॉलर तक की यात्रा। हम धान से डॉलर, डी से डी, इस यात्रा को कैसे कंप्लीट करें, कैसे छत्तीसगढ़ डॉलर करेंसी में बात कर सकता है। क्योंकि आज हम समर्थन मूल्य की रकम पर बात करते हैं, हम धान के बोनस की बात करते हैं, पर हम डॉलर की बात नहीं करते हैं। तो वो समय आ चुका है शायद, और इस प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय विष्णुदेव साई जी के नेतृत्व में, मुझे मुकेश जैन जी बता रहे थे कि जब वो इस कार्यक्रम के लिए माननीय मुख्यमंत्री को आमंत्रित करने गए थे, तो उन्होंने कहा कि वो इस विषय पर बात करने के लिए आतुर थे हमारे मुख्यमंत्री जी, कि कैसे निर्यात बढ़ाया जाए छत्तीसगढ़ से, कैसे छत्तीसगढ़ एक एक्सपोर्ट सरप्लस, हम अभी तक पावर सरप्लस स्टेट थे, हम बिजली बनाते थे, कैसे हम धान में भी, चावल में भी एक सरप्लस राज्य बन सकते हैं। इस विषय पर उनकी राय पूछी गई, और इस दिशा में जो भी कार्य हो सकते हैं सरकार की तरफ से, उसको करने के लिए सकारात्मक दिशा बढ़ती हुई आगे दिखाई दे रही है, जो कि छत्तीसगढ़ राइस एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन के माध्यम से पूरी तो दिखाई दे रही है। और जो भी नीति बन रही है, उसका स्पष्ट उद्देश्य है कि राज्य में जो वैल्यू जोड़ेगा, जो रोजगार देगा, जो जीएसटी में कंट्रीब्यूट करेगा, जो बजट में बढ़ोतरी करेगा, उससे सहयोग दिया जाएगा। एक ही सूत्र वाक्य है, देयर इज वन सिंगल फॉर्मूला, whosoever will contribute to state's progress and development, he or she or the संस्था will be facilitated। मंडी टैक्स की जब हम बात करते हैं, हमें समझना पड़ेगा कि
मंडी टैक्स इज ए क्रिटिकल इकोनॉमिक लीवर ऑफ द स्टेट, पर मंडी का उद्देश्य सिर्फ राजस्व नहीं, बाजार का विकास होना चाहिए, मार्केट का डेवलपमेंट होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में मंडी टैक्स लेवी किए जाते हैं बाजार के विकास के लिए, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने के लिए। पर सॉल्यूशन क्या है? मंडी टैक्स इज एन इशू। आई हैव बीन टोल्ड दैट इट इज नॉट जस्टिफाइंग द एक्सपोर्ट मार्जिन्स। एक्सपोर्ट मार्जिन्स में कहीं ना कहीं कमी हो रही है मंडी टैक्स के कारण। आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी से भी बात की गई है एसोसिएशन द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में चर्चा की गई है और एक सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी सभा में उपस्थित रहने वाले हैं और मेरी आशा है कि हमारी सरकार एक प्रोग्रेसिव सरकार है। उन्होंने बातों को गंभीरता से सुना है। 2025 तक इसे जीरो टैक्स किया गया था और आगे भी ऐसा रहे, हमारी उम्मीद ऐसी होनी चाहिए। बट ये भी सोचने की जरूरी कि इसे डिसमेंटल करना ये सॉल्यूशन नहीं है। मुझे लगता है इसके लिए डिफरेंशिएशन पॉलिसी में होना चाहिए, अ पॉलिसी विच इज फ्रेंडली फॉर एक्सपोर्ट्स, जस्ट फॉर एक्सपोर्ट्स, ताकि उस एक सेक्टर को जिसको मार्जिन में लॉस हो रहा है, उस सेक्टर को फायदा मिले मंडी टैक्स से। बट लेट मी कंक्लूड विथ क्लैरिटी, एंड आई बीन लिसनिंग टू वेरियस सेशंस हियर, that agriculture, though it feeds the nation, but trade is what empowers the farmer. Mandi reform is not a revenue loss, it is revenue expansion. Value addition is not a cost, it is income creation. Exports are not optional, they are essential. Chhattisgarh has production strength, India has market opportunity. What we now require is policy alignment, institutional convergence and disciplined execution. एंड इस दिशा में काम करने के लिए चेंबर्स एंड एसोसिएशंस लाइक श्रेयसी अग्रवाल जी, हु इज द फाउंडर ऑफ डिफैक्टो इंडिया डेवलपमेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स, जो इस दिशा में अच्छा काम कर रही हैं, तो ऐसी संस्थाओं का मिलकर शासन के साथ, प्रशासन के साथ, अपीडा के साथ, ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ मिलकर पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करना ये वक्त की ज़रूरत है। धान के कटोरे से राइस एक्सपोर्ट हब तक बनने की ये जर्नी, मुझे लगता है इसकी शुरुआत आज यहाँ से हो रही है। और आज धान के निर्यातक के रूप में ही नहीं, फूड डिप्लोमेसी के रूप में इसे देखा जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के पास 3 चीज़ें हैं: किसान की मेहनत, राज्य के स्केल और सिस्टम की ताकत। चौथी ताकत जोड़नी है ब्रांड, एथिकल कंप्लायंस। अगर ये चारों चीज़ें हो गई हैं तो छत्तीसगढ़ को भारत के 2047 में विकसित भारत बनने के इस यात्रा में इस कंट्रीब्यूशन से कोई नहीं रोक पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और धान के दाने में छत्तीसगढ़ की मिट्टी है और इसी मिट्टी में भारत का भविष्य। जय छत्तीसगढ़, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और मुकेश जैन जी से अब रिक्वेस्ट हम करते हैं कि आप हमारे स्पीकर को आप फेलिसिटेट करें शॉल के साथ, और साथ ही साथ में एक स्मृति चिन्ह मेमेंटो देकर हम अपने सभी आज के इस प्रोग्राम में पहुंचे हुए डिग्निटरीज को, गेस्ट को, स्पीकर्स को, पैनलिस्ट को हम यह उपहार स्वरूप भेंट कर रहे हैं, ताकि IIRS का ये प्रोग्राम हमेशा के लिए स्मृति चिन्ह पर अंकित रहे। थैंक यू सो मच सर। और चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सेशन की ओर बिना देरी के। अब ये जो अगला पैनल डिस्कशन होने जा रहा है उसका सब्जेक्ट है प्राइसिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। इस पूरे पैनल डिस्कशन में बात होगी स्कोप ऑफ इंडेक्सिंग इन राइस मार्केट को लेकर, की फैक्टर्स अफेक्टिंग राइस प्राइसेस को लेकर, रोल्स ऑफ पॉलिसी एंड रेगुलेशन इन ट्रेड डिसीजंस, मैनेजिंग प्राइस वॉलिटी एंड बिजनेस रिस्क, प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज फॉर स्टेइंग कॉम्पिटिटिव। ये सारे सब्जेक्ट और ये सारे विषय यहाँ पर रहने वाले हैं और इसी के इर्द गिर्द और इसी सब्जेक्ट के बेस पर ये पैनल डिस्कशन अब होने जा रहा है। हम बतौर पैनलिस्ट इस पूरे पैनल डिस्कशन में जो हिस्सा लेने जा रहे हैं, अब
अब हम उनके नाम एक एक करके लेते जाते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, दरख्वास्त रहेगी कि आप सभी अब कृपया स्टेज पर आए। सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती विनीता सुधांशु जी, जनरल मैनेजर अपेडा, डॉक्टर अभिषेक गोवलकर जी, हेड एग्री बिजनेस बिगमेंट, मिस्टर नीरज कुमार जी, सीनियर ट्रेडर राइस, आदित्य बिरला ग्लोबल ट्रेडिंग, मिस नम्रता कथैत जी, एसोसिएट प्राइस रिपोर्टर S&P ग्लोबल। और इस पूरे पैनल डिस्कशन को जो मॉडरेट करने जा रहे हैं वो हैं मिस्टर संजय सेठी जी, नेशनल एक्सपर्ट प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट एंड MTR FAO ऑफ द UN। सो हम आप सभी पैनलिस्ट और मॉडरेटर को स्टेज पर इनवाइट करते हैं। प्राइसिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट को लेकर ये पूरी बातचीत और ये पैनल डिस्कशन यहाँ पर रहने वाला है, जिसमें हम अपने पैनलिस्ट को यहाँ पर सुनेंगे, जानेंगे और कैसे ये अफेक्ट कर रहा है मार्केट को, प्राइसिंग और रिस्क मैनेजमेंट कितना है, कैसे हो रहा है, रिस्क फैक्टर कितना है और उसका मैनेजमेंट कितना और किस हद तक, किस स्तर तक हो रहा है, इन सभी चीज़ों को लेकर अब ये पूरी चर्चा यहाँ पर होने वाली है। सभी गेस्ट हमारे बीच पहुँच चुके हैं, पैनलिस्ट पहुँच चुके हैं। सो नाउ ओवर टू यू ऑल। So we need some help from you. So we have some people who are standing on the back. If you can help us to get them in the front seats. There are a lot of seats which are available here. So if those people who are in the back, if they can come in the front. जो पीछे बैठे हैं उनको इको आ रहा है, आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही है. So they can come in the front. आप सभी से रिक्वेस्ट रहेंगे कि जो भी गेस्ट हमारे पीछे बैठे हुए हैं पीछे वाली रो में, वो सब सामने आ जाएं, क्योंकि सामने की जो सीट्स खाली हुई हैं वो ताकि फुलफिल हो सके और वॉइस की डिलीवरी भी आप तक क्लियर यहाँ पर हो सके। और जो खड़े हैं वो भी आ जाए। जी, और जो खड़े हुए वो भी आप सभी कृपया अपना स्थान ग्रहण कर ले, अपनी जगह पर आ जाएं, सो ताकि हम अब इस पूरे पैनल डिस्कशन का लुत्फ उठा सकें और जो पैनलिस्ट और एक्सपर्ट्स हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं ताकि हम उनको और ध्यानपूर्वक और बहुत अच्छे से सुन सकें। और वो अभी भी खड़े हैं। एक बार और बोल दीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी गेस्ट यहाँ पर खड़े हुए हैं कृपया, क्योंकि हम लगातार अपने अगले और अलग अलग सेशंस की ओर में आगे बढ़ रहे हैं, आप सभी से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपनी जगह पर आ जाएं और जितने भी गेस्ट लास्ट रो पर हमें नज़र आ रहे हैं आप सभी से भी सर रिक्वेस्ट रहेगा कि आप प्लीज़ अपना स्थान ग्रहण कर लें और जो भी जगह यहाँ पर बची हुई है, क्योंकि लास्ट की गेस्ट तक में वॉइस क्लियर शायद डिलीवरी नहीं हो पा रही है। और साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है ताकि डिसिप्लिन भी मेंटेन हो सके और जो पैनल डिस्कशन यहाँ पर अब हम लगातार क्योंकि कंटिन्यू कर रहे हैं, इससे हम आगे कंटिन्यू कर सकें और इस पैनल डिस्कशन को ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सर। So my name is Sanjay Sethi. Thank you ma'am for helping us organize this. Those who are standing in the back, I have a question from all of you, and before I ask the question, I would like to inform you, especially those who are standing in the back, that this is a session about pricing and risk. In the session on pricing and risk, what you can take away from this session, that if you know from your past experience, you would have noticed that the people who make money or lose money, they lose because of the decisions which go wrong on pricing and risk. It is rarely that you lose the money because of the quality. You don't go out of business because of quality. You go out of business when the pricing and the risk go wrong. So I would like to ask questions from all of you. How many of you think, आप अपने हाथ उठा सकते हैं ये बताने के लिए कि आप लोग कितने लोग ये सोचते हैं that when the price moved as per your expectation and you lost the money. आप अपने हाथ उठा सकते हैं, आप में से कितने लोग ये सोचते हैं कि जो आपने सोचा था प्राइस वही प्राइस आया लेकिन फिर भी आपका नुकसान हो गया? आप में से कोई लोग हाथ उठा के ये बताना चाहेंगे? तो सबने पैसा कमाया है। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप ये बता सकते हैं आप में से कितने लोगों ने ये सोचा कि प्राइस जो मैंने सोचा था वो तो नहीं आया लेकिन फिर भी मैंने पैसा कमाया?
आप में से कितने लोग ऐसा सोचते हैं? क्या आपके साथ ऐसा घटित हुआ है कि प्राइस तो आपकी एक्सपेक्टेशन से गलत हो गया लेकिन फिर भी आपने पैसा कमाया? ये भी किसी ने नहीं किया। इसका मतलब ये है कि यहां इस रूम में ट्रेडर्स ही नहीं आए। आप में से कितने लोग ट्रेडर्स हैं? अपना हाथ उठाना चाहेंगे? बहुत कम ट्रेडर्स हैं। देखिए, ये एक सुनहरा मौका है, हमारे पास एक लाइन ऑफ स्पीकर्स है विच कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन मैनेज द रिस्क। ये जो डिफरेंस था दो क्वेश्चन का, जिसमें कि प्राइसिंग ठीक हो या ना हो, लेकिन हमने उसके बीच का जो गैप है उस रिस्क को मैनेज कर लिया। और रिस्क को मैनेज कर लिया मतलब कि हमने 3 तरह के रिस्क को मैनेज कर लिया। प्राइस के रिस्क को मैनेज कर लिया, हमने काउंटर पार्टी के रिस्क को मैनेज कर लिया, और हमने पॉलिसी के रिस्क को मैनेज कर लिया। आज इस स्टेज पे जो स्पीकर्स हैं वो आपको तीनों तरह के रिस्क के बारे में बता सकते हैं। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट फर्स्ट फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द बिगेस्ट और वन ऑफ द top most traders in the country and in the world, that is Aditya Birla Group. I think Neeraj, you are the 3rd largest in the world, right? We are 3rd largest. So right. Can you give us some pearls of your wisdom, what you have learned in your decades long career? Can you tell us, these new traders who have come to the room and they don't think that they are trader, and if they are entering the trade, what are the things that they have to keep in mind from the pricing and risk point of view, that they don't lose money? मार्केट कुछ भी जाए, तेजी हो या मंदी हो, लेकिन उनका नुकसान नहीं होना चाहिए. Can you share your experience about that? For this, the simple answer is you have to take a calculative risk before going for any desperate deal or something. Like today, there are 3 types of risk at origin. One is, the foremost is your policy risk, which is driven by the government. Second is forex risk, which is driven by the geopolitical issues, which is happening every day and night. Today something, tomorrow something. Third is, we all are thinking, and we are, more inclined toward making abnormal profit. We should always avoid that tricks. We should stop chasing for a last dollar, do a realistic trade, which, just going to pay off your contract after execution. So I believe for any new trader who they are planning to export or something, they should first have the clarity on, their state policy, because this is a purely political subject. Paddy is, I can say this is a political subject for many states in India. So they have to care about that, what changes they are going to bring. Like this recent incident in Indian rice trade, which is known to everyone. Everyone have, more or less trade, but they all went wrong, I can say this upfront. The prices, they were speculating, but something went wrong. Maybe the policy was not in tune with the expectation. In all these fiasco, what happened, some people had opportunity to hedge the cargo, but they waited for prices to soften. And those who has booked the cargo, they, came out from the fiasco at a lower loss, I can say. The loss they had minimized, that is also a kind of making money. If you made a mistake, and if you know where to cut loss, that is, I can say, that is also a kind of gain in your books. So I would say we should stop thinking on desperate sales. Rather, you go calculative, think about your government policy. Yes, forex is not in your hand, so whenever you are doing export, you book your forex immediately, although everybody knows that rupee is falling 4 to 5% yearly, but that doesn't belongs to your contract. It might go back also, even in a, just one call from, that the US can take any action, and then it may go vice versa. So it has to be pre-planned. So the call is that we should avoid taking call in desperation. That is my, say for this. Yeah. So basically what you are saying, that the risk should be calculated, right? So we are exposed, but we are not totally
totally exposed, in the sense that I take out my jacket, I take out my cap, I take out my ties, I take out my jacket or my coat. So I go out in the cold, but still I have some clothes to protect myself. So that means we are exposed to the risk, but we are not really so much exposed that it's a do and die situation for us. That means it takes us to indexing, right? So Abhishek, how is it that I take the calculated risk? I will give you my mic. How do I take the calculated risk? That means I am exposed, but I am not fully exposed. That means I am taking the advantage of indexing. लेकिन कोई बोलेंगे इंडिया में तो राइस की इंडेक्सिंग नहीं है, लेकिन इधर S&P बैठे हैं, वो बोलेंगे कि हमारी इंडेक्सिंग है. आप बैठे हैं, आप बोलेंगे हमारी भी इंडेक्सिंग है, बिग मिंट की भी इंडेक्सिंग आ गई है. लेकिन वो कैसे करें कि वो मैं मान लीजिए कि जीरा फुल राइस में हूँ, मान लीजिए कि मैं कोई काला नमक राइस में हूँ या काला जीरा राइस में हूँ, उसकी तो इंडेक्सिंग नहीं है, लेकिन वो इंडेक्सिंग बाकी राइस की इंडेक्सिंग के साथ साथ चल सकती है. वो उसी के साथ ऊपर जाएगी, उसी के साथ नीचे जाएगी. 100 रुपये प्लस, 50 रुपये प्लस, 25 रुपये प्लस का प्रीमियम हो सकता है. तो आप हमको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ट्रेडर्स नए आए हैं, उनको उनकी भाषा में समझाइए दैट हाउ डू दे राइट द इंडेक्स and they are taking advantage of this so that the risk is calculated and they are not fully exposed. Thank you and good evening everyone. I think it is a very interesting question कि हम इंडेक्स को कैसे यूज़ करके अपने ओवरऑल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को डी रिस्क कर सकते हैं, प्लस हाउ वी कैन ओवरऑल गेट मोर बेनिफिट फ्रॉम companies like us which are creating a holistic index for commodity markets. अगर मैं राइस की बात करूं तो राइस का इंडिया में काफ़ी सारे ऑलमोस्ट 17-18 स्टेट्स हैं जिसमें प्रोडक्शन होता है. हर एक स्टेट की वेराइटीज़ अलग हैं, जो आपके क्वालिटी पैरामीटर्स हैं वो काफ़ी हद तक अलग हैं. कुछ स्टेट्स बासमती बनाते हैं, कुछ नॉन बासमती बनाते हैं. तो इन ऑल आपके पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ ग्रेड्स हैं, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ लोकेशन है, बहुत ज़्यादा क्वालिटी वेरिएशंस है, जिसकी वजह से आपके लोकल प्राइजेस प्लस आप जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं वो यूनिक हो सकता है या काफ़ी डिफरेंशिएटेड हो सकता है. इसमें दूसरा एक जो मुद्दा है, जो प्राइस एक सैंक्रोसेंट जो एक नंबर या जो एक लेवल हम जिस पे बोलते हैं मार्केट ट्रेड कर रहा है, जो एक प्राइस है वो भी एक यूनिक रेफरेंस नंबर है. मेरे और आपके बीच में अगर ट्रेड हुआ तो हमारा जो ट्रेड प्राइस है वो एक यूनिक प्राइस हुआ. बाकी मार्केट में भी ट्रेडिंग एट अ डिफरेंट प्राइस एट अ डिफरेंट ग्रेड और क्वालिटी स्पेसिफिकेशन. सो इस तरह से मार्केट में कॉम्प्लेक्सिटी और इस तरह से मार्केट में जो वेरिएबिलिटी है प्राइसेस की वो बहुत ज़्यादा है. बट व्हेन यू कट अक्रॉस ऑल दिस वेरियस काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी मार्केट में, और एक हम इंडेक्स की बात करते हैं कि राइस का अगर मैं बोलूँ कि एक लेट्स अज्यूम कि IIR64 5% ब्रोकन FOB प्राइस X डॉलर है. सो आप उस प्राइस को एज अ बेंचमार्क लेके अपने ट्रेड को काफ़ी हद तक बेंचमार्क कर सकते हो कि आप जो ट्रेड कर रहे हो वेदर इट इज़ अंडर पार और ओवर पार टू दिस पर्टिकुलर प्राइस. सेकेंडली ये जो इंडेक्सिंग है ये आपको इस तरह से मदद कर सकती है क्योंकि इंडेक्स जो है वो एक बहुत कैलकुलेटेड प्रोसेस से डिराइव होता है. सो आप इंडेक्स के बेसिस पे नॉट ओनली आप अपने ट्रेडिंग डिसीजन को ले सकते हो, प्लस दूसरा आप उसमें अपने जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप अपने किसी बायर या सेलर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप वो कॉन्ट्रैक्ट को आपकी क्वालिटी और लोकेशन स्पेसिफिक के बेसिस पे एट अ सर्टन प्रीमियम और डिस्काउंट यू कैन डू योर ओन प्राइसिंग बेस्ड ऑन दिस इंडेक्सिंग. बिकॉज ये जो इंडेक्सिंग है ये एक बहुत रोबस्ट प्रोसेस से गुजर के एक एस्टेब्लिश होती है और इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल जैसे पैरामीटर्स है, जैसे IIRS को और बाकी जो पैरामीटर्स है विच आर helping us to evolve as well as scrutinize this particular process of indexing. I think trade can take benefit of those and do trade at much more lower risk. और उसमें जैसा आपको खुद प्राइस डिस्कवर करने के बजाय यू हैव गॉट अ साइंटिफिक वे वेयर यू हैव गॉट ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड प्रोसेस थ्रू विच सर्टन प्राइस बेंचमार्क्स आपको मार्केट में अवेलेबल है. सो आई थिंक उसी तरह से ट्रेड फैटर्निटी अपना खुद का रिस्क कम करके अपने जो ट्रेड है उसमें ज़्यादा रिस्क कम कर सकती है. तो मैं दोनों कॉम्पिटिटर्स को एक के बाद एक नहीं बुलाना चाहता हैं, क्योंकि
आप कहोगे कि हम भी IIRS को अलाइंड हैं, हम भी उतने ही क्रेडिबल हैं, हम तो ज़्यादा क्रेडिबल हैं, हम तो कई सालों से हैं, कई दशकों से हैं, राइट? 100 साल तो हो गए होंगे, 100 से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो यहाँ फिर जो है ना झगड़ा हो जाएगा। पहले मैं मैडम को बुलाता हूँ। विनीता जी, सबसे पहले तो देखिए, आप सब जानते हैं अपीडा की बदौलत और अपीडा में उनके चेयरमैन अभिषेक जी की बदौलत, उनके सेक्रेटरी सुधांशु जी की बदौलत, और मैडम भी क्योंकि ग्रेन्स को देखती हैं, तो आपका भी बहुत योगदान है। इंडिया पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। एक बात तो तालियां बनती है। तो मैम, अपीडा ने ये सब कुछ तो पा लिया, अब टॉप पे आपने इंडिया को पहुंचा दिया, अब इससे आगे क्या? अब वो सब जितने भी कॉम्पिटिटर कंट्रीज हैं वो कह रहे हैं हम पहले बेचा करते थे, अभी तो इंडिया हमको पछाड़ रहा है मार्केट में, हैं? चाहे वो वियतनाम है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, वो कहते हैं अभी क्या करोगे, बच्चे की जान लोगे, अभी हम कहाँ बेचे, जहाँ देखो इंडिया ही आगे है। बासमती में भी जो है पाकिस्तान से आगे इंडिया है, तो सब जगह पे इंडिया आगे है। तो अब इसके बाद आपने ब्रांड इंडिया बना दिया, तो अब इसके बाद अपीडा क्या करने वाला है? ये तो बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, बल्कि मैं जिक्र करूंगी, अभी मैं आदित्य से ही नीरज से डिस्कस कर रही थी कि हम 2020 में कहाँ पर थे। आई थिंक एट दैट टाइम नीरज टोल्ड मी कि सर मैडम हमने 17.78 मिलियन मेट्रिक टन का राइस किया, तो दैट मीन्स स्टिल हमें बहुत सारे एफर्ट्स करने फर्स्ट टू अचीव दैट 17, एंड वी हैव टारगेट, आई थिंक माई ट्रेड इंडस्ट्री हैज़ टारगेटेड फॉर मोर देन 21 मिलियन मेट्रिक टन। तो मंजिल अभी दूर है, अभी मंजिल हमने पाई नहीं है। ठीक है, खुशी हम मना सकते हैं कि भाई यस वी आर द लीडिंग एक्सपोर्टर, वी आर द लीडिंग प्रोड्यूसर, but still there is a very big scope, because I don't want that India to be only a supplier of the few varieties, whereas we have number of GI varieties and which has the potential, and we can map those varieties as per the requirement of the international demand. Because normally in the morning I was telling that जब भी हम बात करते थे तो हम कहते थे कि इंडिया एज ए इंडिका वेराइटी, वी डोंट हैव एनी जापानिका और ऐसी एनी स्टिकी राइस। दैट मीन्स वी हैव अ स्कोप फॉर to find out the more new varieties which are suitable for the palates of the international cuisines. For example, like Japan, it's a very potential market, but लेकिन वहाँ पर अभी तक हम सिर्फ बासमती राइस कर रहे थे, and few varieties of the southern region. क्यों नहीं कर पा रहे थे? कि बिकॉज हमने ये सोचा था कि वी डोंट हैव एनी स्टिकी वेराइटीज़, वेयर एज इन द मॉर्निंग मिस्टर सौरभ बडोनी हैड मेड अ प्रेजेंटेशन where we have identified 14 varieties which we know that has a sticky character. Out of 14 varieties, then we had international chefs and asked them to prepare the dishes for the Japanese market. So that when they have prepared the dishes, they have identified 7 varieties out of 14, that these are the only varieties suitable for sushi and onigiri and other, the cuisines. So then we took a delegation to Japan and we have displayed these 7 varieties. We have taken the Indian chef as well as we had the Japanese chef, and we have asked them to prepare the Japanese cuisines. So I'm really very happy to share that few varieties were, they like for using with the Japanese curry, and 3 varieties have been identified for their sushi and onigiri. So that means still, like the market like Japan, still we have not even started exporting the premium varieties or the special varieties to the special markets like Japan and the other countries. So that means अभी तो बहुत है, मंजिल अभी दूर है. We need to do lot of efforts. तो यहाँ पे थमना नहीं है. We need to go further. We need to identify. We should do the R&D. We should identify the market, the variety which are suitable for those markets, not depending on the conventional what we are doing, IIRS and other broken rice and all these things, but still वो तो करना ही है, but we need to fetch the premium price for our premium rice. तो अभी तो बहुत मेहनत करनी है. Thank you. एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूँगा विनीता जी. देखिए, I went to Jakarta just last month and there was a sustainable rice summit, the World Summit. और वहाँ पर IRI ने एक वैरायटी के बारे में बताया
कि देखिए इसमें प्रोटीन कितने गुना ज़्यादा है, इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है, डायबिटिक्स क्या, जो लोग प्रोटीन कंज्यूम करना चाहते हैं अब ये नई वैरायटी लेंगे। लेकिन हमारा काला नमक, उसमें भी यही सब कुछ है, कितने गुना ज़्यादा प्रोटीन है, 5% की जगह 10, 12, 15% प्रोटीन है, डबल से भी ज़्यादा प्रोटीन है, और उसके साथ साथ उसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। तो हम इसकी मार्केटिंग, इसकी प्रोडक्शन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है. लेट मी जस्ट टेल यू, शेयर वन थिंग with all the audience and the panelists. Again, as a part of our promotional activities, we have awarded 2 projects to IIRI, International Rice Research Institute, Varanasi, to identify the potential variety which has the, the unique characteristics as well as the low GI, where they have identified, they have worked on Kala Namak and the other variety which we are going to share with all the trade people today here itself. And through that study, we have identified. Now we are making, the strategy to promote. Like I have given the example of this Japan. Same way we are targeting for Indonesia and Malaysia as well, so that we can target those market. And especially for the Kala Namak, we are looking towards Singapore and Malaysia. And in the month of April, we are planning to take a delegation to Singapore, and where we are planning to have same kind of road show which we have organized in Japan, in Singapore, so that we will be able to promote our Kala Namak rice. Not only Kala Namak rice, the other unique varieties as well. So I am happy to share that today we are going to dedicate these studies to the trade, and our Honorable Chairman Apida will hand over all these identified outcomes on the findings of this study to the trade, so that they'll be able to take the benefit out of it. They'll be able to zero down and do some work making a strategy to promote rice like Kala Namak rice. मैम, एक और सस्टेनेबिलिटी रिस्क से रिलेटेड है, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी रिस्क भी एक बहुत बड़ा रिस्क है. जैसे कि अभी हमने देखा 2027 से यूरोप कह रहा है कि इफ यू आर यूजिंग सो मच ऑफ केमिकल्स वी विल नॉट बाय फ्रॉम यू, विल जस्ट not allow your produce to come. So while on one side the government is fighting the negotiation on the negotiation table to make those things relaxed, but at the same time in India we should also get our house ready so that we are able to not only produce way which is low in chemicals, low in pesticides, organic, sustainable, SRP, fair trade, any standard or proprietary standard which are basically more sustainable, because sustainability is a big risk for us. नहीं संजय जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो वी नीड टू adhere the requirement of the importing countries, whether it's stringent or relaxed or whatever it is, we need to adhere those stringent, but we need to keep our house also in order. So we have, our organic team is also here, like for promotion of organic produce, because the major share of the organic rice in our organic basket. So we are organizing number of training programs so that we'll be able to keep our house in order. We will be able to sensitize the farmers. We keep on organizing number of training programs for the basmati rice, which is a premium variety, which is the only unique varieties of India, occupies that, the position. So we keep on organizing in association with, because, APIDA can't do everything of its own. So we are trying to rope in all the stakeholders, all the state governments and the research institutes, so that we'll be able to address those issues and to set our house. And we are also your partner, ma'am. FAO also has a program of which I am a part, JEF7, which is promotion of sustainable food systems through transforming rice wheat system in Odisha, Chhattisgarh, Punjab and Haryana. No, definitely. And I think this will, we will get the results and we'll be able to gain the more confidence of the importing countries, so that we'll be able to sell the quality and consistent supply of the good quality rice. Yes, and we are doing work with the help of government as well as Pradhan in Balrampur and Jashpur. So Namrita, now, thank you ma'am. So now you can relax. So our last speaker, Namrita from SNP. So Namrita, you are the last speaker, but you have all the time. You can take 1 hour, 2 hour, whatever. Nobody will stop you. Okay? So now, please tell us that indexing समझ में नहीं आता.
सोया में आता है, किसी से भी पूछ लो, शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड, सीबॉट सोया, सब लोग उसी पे ट्रेड करते हैं, सिंपल कमोडिटी है। यार राइस की इतनी वेराइटीज हैं, उनको लगता है कि हम इंडेक्सिंग को कैसे यूज करेंगे। सो अभिषेक हैज डन ए गुड जॉब इन एक्सप्लेनिंग, लेकिन आपको भी तो चांस मिलना चाहिए, राइट? सो यू प्लीज एक्सप्लेन दैम इन ए वेरी सिंपल लैंग्वेज कि कैसे पैसा बना सकते हैं और कैसे पैसा खोने से बच सकते हैं by using the indexing. Thank you, Sanjay ji, for asking this question. You have asked me, I mean, it's a great question. And it's a very little, like, Platts, I just want to introduce. We have been assessing a lot of rice prices. Live rice index was bought by, acquired by Platts only. Apart from, I'll tell what kind of rice prices that we assess on daily basis. We do assess prices which are most traded, varieties which are most traded, and not just for India, but also for a lot of other origins like India, Thai, Myanmar, Cambodia, and as well as Vietnam, and also basmati rice prices for Pakistan and India as well. So these, what we have seen is that these price index are produced on daily basis. These are spot prices, and these are produced every day. So Platts being a very, Platts brings price transparency in the market. Being an independent international agency, our job is to make sure that everybody is able to actually see what are the spot tradable levels of the today. So what we produce are not offers or bids, these are tradable levels. These are below offers and above bids. And where we think market can trade. Obviously there are various tradable levels. Maybe somebody is going short, maybe somebody is taking a long position. They'll say, okay, maybe I'll trade at 359, but Platts is producing 358. That is completely okay. There can be various tradable levels, but we do assess prices. We do take prices from various market sources, whether it's importer, buyers, sellers, traders, and we assess those prices on daily basis. So that's how we come up. We use a certain methodology. It is a methodology that Platts has been using for other commodities like oil. So dated Brent, these are our benchmarks, right? Iron ore, coking coal. So we exactly for rice, we are using similar methodology. So that means we're providing similar kind of price transparency. Now coming to indexation and how to use, I'll give an example. For example, we assess Brazil chicken legs, right? It is bought from Savannah. Somebody in India who's a chicken producer, now instead of relying on just prices that they're getting from suppliers, they can look at Platts prices and see what is the most affordable option, right? So one is this, for example, in terms of rice, what is the most affordable? As a trader, is Thai rice cheaper than India right now? Is India cheaper than Thai right now? So I'll give an example also. When India, again, like India's production rose in 2024, 2025, and also this year, we have bumper crop and really huge supplies, right? So in May 2025, India parboiled 5% was 3-year low. Right? This is completely because of new crop arrivals, harvest pressure, and also the inventory that we already have. In February 2025, India parboiled 5% and Thai parboiled 100% had their spread narrowed to around $17. So this is usual spread is around $50 to $60, right? So you can see there is an origin which is bringing its price down because of India's supply, and that is Thailand. And Thailand is now getting cheaper, and we saw around that time that buyers started preferring Thai rice because it's a premium variety and it brings them more gains. We were speaking to buyers in Nigeria, and they were like, we get more returns when we sell Thai rice in Nigeria, right? So, but at that time, when Thai is coming down, India automatically has to come down to stay competitive, basically because of quality issues as well. Although India will always be the major supplier of parboiled rice, it will always dominate in the African market. So these are various price movements that can be captured, and since we are producing prices on everyday basis, you can be assured that next month, when is the time of your loading, we are bringing that price out. So if your loading is 45 days ahead, our price will
will account for all the policy changes, all the certain demand fluctuations. That day price will account for that. So we are seeing in other ags, like in our other price assessments like corn and wheat, market has started using our prices as an index. And how they're using, I think we can have a discussion separately. Platts is not, we are very, like we can't really tell the market how they absorb our prices, right? We cannot really tell you what to do and not to do. However, I mean, it's a very interesting thing that I want to also tell you, there is no competition, like we're not like competing here with Bigmint also, because as Platts, we promote the use of index. We say that whatever you use, please, you know, if, for example, if you're doing 50,000 metric ton shipment for 45 days ahead, you can hedge that 50,000 and do certain amount based on your position, and so do certain amount based on an index. So this way you are diversifying your volumes and hedging that price risk. Yeah. Then thank you, Namrita. देखो हरियाणा से आई है, हमारी छोरियाँ छोरे से कम ना होती, हैं? So any last sentence from your side, or anybody wants to take it? Okay, otherwise we'll close this. Yeah, okay, please. Just one addition to what my colleague said from S&P. I think index जो है Indian context में अभी उतना establish हुआ नहीं है. लोगों को अभी इसके बारे में उतनी जानकारी नहीं है. Globally अगर हम देखें तो trade, mostly जो trade होते हैं between large traders जो export कर रहे हैं या जो import कर रहे हैं, they normally reference their price to some index. इंडिया में अभी ये context जो है ये अभी बहुत ही new है, और एक तो लोगों को इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है. ग्रेजुअली जैसे जैसे मार्केट इवॉल्व होगा, मार्केट मैच्योर होगा, धीरे धीरे भी लोग इस चीज़ के बारे में समझेंगे और उसकी अहमियत को ज़्यादा में भी इम्पोर्टेंस देना चालू करेंगे. दूसरा एक और जो पॉइंट मेरे कलीग ने बताया कि जैसे अलग अलग मार्केट का प्राइस डिफरेंस जो होता है, एक हम जिसको धारा बोलते हैं कि एक मार्केट और दूसरे मार्केट के प्राइस की एक धारा में इतना फ़र्क है. जब आप इंडेक्स के बेसिस पे उसको ट्रेड करते हो तो ये धारा यानी जो प्राइस डिफरेंस है जब आप चेंज होते हुए देखते हो तो इसमें आप बेसिस, जिसको हम बेसिस ट्रेड बोलते हैं कि एक मार्केट खरीद के दूसरे मार्केट जो चीपर मार्केट है वहाँ से आप परचेज करके हायर मार्केट में बेचें, तो इस टाइप की जो स्प्रेड स्ट्रेटजीज हैं वो भी आप बड़े इजीली एस्टेब्लिश करके उसमें बहुत मिनिमम रिस्क के साथ प्ले कर सकते हैं. क्योंकि अल्टीमेटली जो मार्केट के गैप्स है, यानी जैसे अगर सपोज इंडिया इंडोनेशिया का जो प्राइस डिफरेंस है जितना होना चाहिए, अगर उससे एबनॉर्मली हाई या लो है तो आप उस ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को एनकैश कर सकते हो जब आप एक इंडेक्स को फॉलो कर रहे हो. तो आई थिंक दैट इज़ द वे. जब मार्केट धीरे धीरे मैच्योर होगा, लोग एक इंडेक्स के बारे में ज़्यादा अपने ट्रेड को बेंचमार्क करना चालू करेंगे, तो उससे लोगों को वो बेनिफिट्स मिलने चालू हो जाएंगे. So anything else you want to say, Neeraj? Louis Dreyfus is number 1, Olam is number 2. आप तो नंबर 3 पे हैं, आदित्य बिरला. तो do something and fight your competition using the price and risk management. I'd come on that point, what Namrita and Abhishek has told. See, unlike other commodity, rice is a purely physical commodity. So here we have to talk to numbers of brokers. I mean, it keeps on changing every hour, I can say. It's based on the news-driven market, I can say. Unlike other, what you were talking about, CBOT and all. So people trade sugar and other things. CBOT car plus premium and then blah, 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 they do that. But in rice, it's a purely physical market and you have to have the grip on your local market. Today, parboiled price in FOB Kakinada, if I'll say, is different from FOB Kandla. FOB Vizag is different from FOB Mumbai. Same product, having different pricing idea. So this is, I mean, if you people are trying to bring it on indexes, and I think it will definitely help, but we have to also understand in all these things, the margins are very, very thin. So there is no chance of 1% and 1.5% variation. People are doing a $1, $2, $3 trade, where the variation is 1% and more. And still those who stayed in the trade, they made money in the long run. Of course, yeah. That could be. Thank you so much. So, ma'am, with your permission, we have exhausted the time. Can we close it? Yes. Okay. Thank you. You were a great audience. You really listened to the speakers very attentively.
एंड आई मीन हैट्स ऑफ टू यू। इस टाइम पर आप लोग इतने ध्यान से सुन रहे हैं, स्टार्ट तो आप खड़े थे सब, अब सब बैठे हुए हैं। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच सर। और बहुत ही शानदार ये पैनल डिस्कशन हुआ है, जो कि लगातार जो अलग अलग पैनल डिस्कशंस हो रहे हैं उसमें बहुत सी बात और पॉइंटर्स यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं, और सारा पैनल डिस्कशन अपने पहले वाले पैनल डिस्कशन से और बेहतर होता जा रहा है। यही इस कार्यक्रम की और इस आज के प्रोग्राम की खूबसूरती है। तो हम चाहेंगे एक बार ज़ोरदार तालियां हों इस पूरे प्रोग्राम के लिए। और चलिए अब हम फेलिसिटेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। सीए अमित अग्रवाल जी को हम इनवाइट करते हैं कि आप प्लीज़ मंच पर आएँ और हमारे पैनलिस्ट को, गेस्ट को आप फेलिसिटेट करें। अनिल अग्रवाल जी, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी प्लीज़ मंच पर आएँ और एक एक करके हमारे जो सभी पैनलिस्ट हैं, मॉडरेटर हैं, आप उनको फेलिसिटेट करेंगे। श्रीमती विनीता सुधांशु जी, जनरल मैनेजर अपीडा, को आप फेलिसिटेट करें। और जी, इनके बाद डॉक्टर अभिषेक गोविलकर जी, हेड एग्री बिजनेस बिगमेंट, को अनिल अग्रवाल जी फेलिसिटेट यहां पर कर रहे हैं। अमित जी से फिर से रिक्वेस्ट है, मिस्टर नीरज कुमार जी, सीनियर ट्रेडर राइस, आदित्य बिरला ग्लोबल ट्रेडिंग, को आप फेलिसिटेट करेंगे। और मिस नम्रता कथैत जी, एसोसिएट प्राइस रिपोर्टर S&P ग्लोबल प्लांट्स, को फेलिसिटेट करने के लिए विनीता मैम से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ उनको फेलिसिटेट करें। और उमेश जैन जी से रिक्वेस्ट है कि आप मिस्टर संजय सेठी जी, नेशनल एक्सपर्ट प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट एंड MTR FAO ऑफ द UN, को आप फेलिसिटेट करेंगे। इस पूरे पैनल डिस्कशन को जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ में मॉडरेट किया है, आप उन्हें फेलिसिटेट करेंगे। मिस्टर संजय सेठी जी, नेशनल एक्सपर्ट। और अब से कुछ ही देर में अपीटा के चेयरमैन हमारे बीच में यहाँ पर आने वाले हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत ये क्षण है जब सारे एक्सपर्टीज़ और मेहमान लगातार इस कार्यक्रम में जुड़ते चले जा रहे हैं, और आप सभी की उपस्थिति से ये कार्यक्रम और भी वृहद और शानदार यहाँ पर हो रहा है। एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए हम आप सभी से दरख्वास्त करते हैं कि एक ग्रुप फोटोग्राफ यहाँ पर हो जाए मेमेंटो शॉल के साथ, ताकि ये पल हमेशा के लिए जहन पर कैद रहे। और इस ग्रुप फोटोग्राफ के बाद हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो हम लगातार आप सभी से साझा कर रहे हैं कि इस IIRS के प्रोग्राम में न सिर्फ प्रदेश से, देश भर से और देश के बाहर से भी, दूसरे देशों से भी सभी मेहमान यहां पर पहुंच रहे हैं। डरबन साउथ अफ्रीका से हमारे बीच अब्दुल्ला अली जी पहुंचे हुए हैं। हम उन्हें फेलिसिटेट करने के लिए मुकेश जैन जी और उमेश जैन जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उन्हें फेलिसिटेट यहाँ पर करेंगे। यही इस कार्यक्रम की खूबसूरती है और इसीलिए ये नाम भी दिया गया है इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट 2026, जिसका ये सेकंड एडिशन है। जब पिछले साल इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी, आगाज़ जब हुआ था, फर्स्ट एडिशन की जब हम बात कर रहे हैं, तब भी कुछ ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आई थी। और अब ये और भी खुशी का मौका है कि इस कार्यक्रम ने, इस पूरे समिट ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए इस प्रोग्राम को और भी शानदार पिछले साल की तुलना में अब यहाँ पर बना दिया है। छत्तीसगढ़ स्टेट से, इंडिया से और इंडिया के बाहर अदर कंट्रीज से भी हमारे बीच डिग्निटरीज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यही इस कार्यक्रम की खूबसूरती है, सुंदरता है, और हमारी ये खुशकिस्मती भी है कि सभी डिग्निटरीज, सभी एक्सपर्ट्स एक ही छत के नीचे, एक ही जगह पर यहाँ पर मौजूद हैं, और उन सभी को जानने का, सुनने का मौका यहाँ पर मिल रहा है। थिंक राइस, थिंक इंडिया, टेकिंग इंडियाज राइस स्टोरी टू द वर्ल्ड, इसी मोटिव के साथ में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और इसी का शानदार आगाज़ आज इस दिन से हो चुका है। आज दिन भर अलग अलग सेशंस यहाँ पर हो रहे हैं, और कल भी दिन भर अलग अलग सेशंस यहाँ पर होंगे। आज की बात करें तो पैनल डिस्कशंस हो रहे हैं, स्पीकर्स यहाँ पर आ रहे हैं, सभी को हम सुन रहे हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले पैनल डिस्कशन की ओर।
हमारा अगला पैनल डिस्कशन होने वाला है जिसका सब्जेक्ट है राइस इंडस्ट्री एसोसिएशन पर्सपेक्टिव्स। इसको लेकर अब ये पूरी बातचीत होगी। इस पूरे पैनल डिस्कशन में जो बतौर पैनलिस्ट हमारे साथ में जो जुड़ रहे हैं, जो कि स्टेज शेयर करेंगे, वो हैं मिस्टर हेमंत सेठ जी, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल एंड हेड फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर, वाटर एंड क्रॉप प्रोटेक्शन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिकी। Mr. Ashok Sethi ji, Director Trade Promotion Council of India, TPCI. Ms. Shweta Songen Sahu ji, Deputy Director, CII. Mr. Jay Kumar ji, representing Bengal Rice Association. और इस पैनल डिस्कशन को जो मॉडरेट करने जा रहे हैं वो हैं मिस्टर मयूर जैन जी, मैनेजिंग डायरेक्टर, श्री गुरुदेव एग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो हम आप सभी को अब स्टेज पर आमंत्रित करते हैं और इस हमारे आज के अगले पैनल डिस्कशन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और इस पैनल डिस्कशन के बाद में हम आगे बढ़ेंगे ऑर्गेनिक राइस एक्सपोर्ट्स यानी कि चिंतन शिविर की ओर में, और इसमें भी बहुत सारी अलग अलग हैपनिंग्स और सेशंस यहाँ पर होने हैं। स्पीकर्स रहेंगे, मॉडरेटर्स रहेंगे, पैनल डिस्कशंस भी होगा, उन सभी को हम सुनेंगे, जानेंगे। बहरहाल उनसे पहले हम अपने आज के इस पैनल डिस्कशन की ओर में आगे बढ़ रहे हैं। सेकेंड लास्ट हमारा ये पैनल डिस्कशन है राइस इंडस्ट्री एसोसिएशन पर्सपेक्टिव्स को लेकर ये बातचीत यहाँ पर हो रही है। की चैलेंजेस एंड प्रायोरिटीज अक्रॉस द राइस वैल्यू चेन, एसोसिएशन रोल्स एंड पॉलिसी सपोर्ट, ट्रेड फेलिसिटेशन एंड मार्केट ग्रोथ को लेकर अब बातचीत यहाँ पर होगी। तो चलिए अब बिना देरी के अब हम इस पैनल डिस्कशन को अब ओवर करते हैं हमारे पैनलिस्ट की ओर और हमारे गेस्ट की ओर। सो नाउ ओवर टू यू ऑल सर। Hello. Good evening, everyone. Everyone on the dais, good evening. This particular session is specifically for moderate the every important situation in the rice industry, what we are seeing as a global surge in the supplies, shortage in the demands and surge in the supplies. As a value chain for logistics also, over production of the crops in the every cultivations area. All the dignitaries present over here, I'll raise the questions one by one. Hemant sir, I would like to ask one question to you, sir. How can a public-private partnership be strengthened to translate policy intent into tangible income gains for farmers in the rice value chain, sir? So thank you first of all inviting me to this esteemed panel and to the second India International Rice Summit 2026. I thank the organizers. FICCI strongly advocates for market-linked public-private partnership as a key policy instrument. Through initiatives such as public-private partnership for agriculture value chain development, which is PPPVACD, FICCI supports the design and implementation of various projects which integrates production, post-harvest infrastructure, processing, and market access. So having said that, we basically, there is a need for strengthening this public-private partnership in terms of providing policy, conducive policy, faster approvals, and state-led, state-level coordination. Now that basically helps in, conducting in terms of achieving the help of these initiative, productivity and sustainability goals, leading to basically increasing, basically measuring the farmers' income of small and marginal farmers. And at the same time, it also helps in terms of, bringing in, crowding the
responsible investment from private sector. Very well explained, sir. Thanks for your feedback and advice, sir. I'll move to Mr. Ashok Shetty, sir, our TPCI director. I'd like to ask one question to you, sir. How does TPCI coordinate trade facilitates for 24 million ton of rice exports to 21 new markets? And what collective actions counter Vietnam competitors aim 76.2 million ton global supply, sir? Sorry for that, sir. I'll ask you the questions revision-wise, sir. What is Trade Promotion Council of India and its primary focus? We understand that you have supported Basmati rice segment in past 8 years in the export market, sir. Hello. First of all, on behalf of the Trade Promotion Council of India, would like to thank Shri Mukesh Jain ji, President of the Rice Exporters Association of Chhattisgarh, for inviting us for this beautiful summit. Trade Promotion Council of India is a very young and dynamic organization. It was established in 2012. Our mandate is primarily to promote Indian food and beverage products to the international market. Now, to do this exercise, we had a large forum to cover. This was possible only with the support of the Department of Commerce, Government of India, MOFPI, Ministry of External Affairs, and MSME. Having said this, what are we looking at when we look at promoting our food and beverage products, in which rice is a huge basket? Well, let me tell you that our experience has been primarily with basmati rice. And non-basmati rice has not been our forte yet. But we really welcome on this forum that non-basmati rice players come on board with us and take advantage of this beautiful forum we have formed in the form of trade promotion. Right now we have about 3,500 active members, and most of the major players of basmati rice are our members. It's very interesting to note that the total exports of rice of India, 70% accounts for non-basmati and 30% for basmati. However, if we look at the Middle East, it is very interesting to know that out of the total exports of basmati rice, 70% goes to the Middle East. So that means we have a pocket which is very rich in rice consumption, which is the Middle East. And I do believe that though we have an experience of just handling basmati, but we are confident that with the strength we have, we can definitely promote non-basmati as well. Now, having said this, we are now at the top. I can see, I have heard so many of our valued panelists talking about we are at the top. Trust me, as a trade promotion person, I can tell you this is a very sensitive position. This position must be captured and retained. And this is the challenge. To be at the top is very lonely. So, what the policy we've adopted is, either you go to the water or the water comes to you, because we must drink it. And this is the necessity of the market today. So having said this, let's go to do a little SWOT analysis of where we are. As Trade Promotion Council of India, since we collaborate with all the leading departments of the country, what we have done is, as a policy, when we go to a country, we first go and talk to the Chamber of Commerce. When we talk to the Chamber of Commerce, and when we have interacted with the support of the Ministry of External Affairs and local business houses, we get a basket of the actual buyers of rice. Now, having done that, we have a target audience to cater to. So we don't go into the wilderness. So that is one of our strengths, is this, and backed by research. This is where I do believe that S&P Global Energy, whom I've been speaking to,
I would like that we have a meeting with them and see how we can collaborate and add value to the non-basmati market, reach out. Now, let's talk about what we do thereafter. What we do thereafter is that we mount BSMs, buyer sellers meets. Last year we did about 35 buyer seller meets in about 30 countries, very successful. In the buyer seller meets we also have rice players and they are so very happy. You know, in the early 2000s I remember that there were just a few buyers in the international market being met and catered to by few exporters who could afford to go to these countries. Today, because of our interaction, I'm proud to say that we have a huge basket of both actual good players of rice, emerging rice players, people who want to see the market come along with us in this BSMs and take advantage of the market. It is a two-way gain. Having said this, we also have a very, very interesting platform which has become a success story as Asia's premium food and beverage show. It's called Indus Food. Indus Food today has a platform wherein we have about over 2,500 Indian food and beverage exporters, you name them, they are there, interacting on a very specific B2B platform with over 5,000 buyers from over 100 countries. As I am sitting here today, between the 8th to 10th, we are having the 9th edition of Indus Food in Greater Noida, Delhi. A huge success story. We want that the non-basmati players may kindly come on board with us, become our members, and take advantage of these huge opportunities. You know, you will not only get in touch with what the present market status is all about, but also of the emerging markets where we do a lot of research to penetrate into. Would definitely like to talk about another very important part, as you mentioned, how to promote the sales. Now, what is the genesis of finding out where the opportunities are? We see that there is a growth of population. When you come to certain countries, they are producing a certain amount, but they are not able to fill that gap. We should fill that gap. Third is, today, with the geopolitical situation the way it is, many countries are going for food security. And in food security, basmati and non-basmati primarily will play a major, major role. This is where we should step in. And this is where we can support and get you in. We can also organize your meetings with government buying bodies in various countries. For example, Grain Board of Iraq doesn't buy Indian rice. Why? They have a demand of about 100,000 tons a year. I'm just giving you an example. But no one's really tapping it. Let's do it together. And non-basmati is the future. Why? Because of affordability reasons. You know, there are many countries, especially I've seen in the Middle East where I travel a lot, where you have below the poverty line, which is being given free food every month, packages. Why not our basmati? Why should it be competitors' basmati? So here are very great opportunities. This is where Trade Promotion Council of India comes and plays its role to facilitate you penetrating and getting a foothold into emerging markets and opportunities. Then the observation which we have when we are promoting basmati rice primarily, and I do believe that it can happen in non-basmati as well, is credit facility. We always advocate, don't go for credit facility. But somehow or the other, the market is in such a state, especially in basmati, where competitors within the country are extending credits of up to 180 days. And this is a huge area of concern. So I do believe that your segment, non-basmati, does not do this and will not do this. And I will definitely request that make policies and collectively come to conclusions as an association. No, we can do pricing. We will cut throat with each other, but don't give credit. This can land you into
huge losses. And we have seen it in the basmati segment. Would like to therefore end here saying that we are there for you and we are always there for you. Thank you very much. There's nothing better than doing business, and more business. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your valuable timing and valuable feedback what you have given for our industry. Like from the morning sessions, it was all searching the avenues for the new areas where we can explore the quantity of the sales, where we can through our non-basmati area. With the help of your council and the experience what you are carrying for the all basmati segments, we feel like we can have something pre-prepared on the basis of the basmati experience you have. So we can explore a better options with the help of these councils. And I request all my team people, my association peoples and all the industry people in this here to get connected with this council and get yourself helped out of it, sir. Thank you so much for your guidance, sir. And I'll move to Mr. Jayakumar, sir. He is representing the Bengal Rice Miller Association. I'd like to ask you one thing, sir. We see Bengal as one of the largest producer for the rice in central India or overall India. How you see with such a big production, with such a low demand in the market, how you see yourself to settle down the crops and mitigate the productions in your state, sir? Good evening to everybody. First of all, I sincerely thanks to Mukesh Jain Saab, who has invited me for this wonderful program. And I also congratulate him for making this program successful with a vision and excellency. As you have said, rightly said, West Bengal is one of the states in India which produces the highest non-basmati paddy and rice. And the rice which we produce, the small grain, popularly known as Swarna, and the long grain, which is known as IIR36 or IIR64. These two paddies are very much famous and they are ready for export throughout the world. The rice goes to the African countries, it goes to the Southeast Asian countries, it goes to the Bangladesh, Sri Lanka and everywhere. So the market is ready. The exporters are most welcome to come to Bardhaman and West Bengal and procure their rice. The market can grow further. Perhaps the deep sea port which is missing in Bengal. Although we are having two ports, Haldia and Khidirpur, they are good enough. But we are pressing hard with the government. If there is a probability that a deep sea port is constructed, the market will enrich. The price of the rice will come down further due to the logistic cost. We are waiting for such deep sea port. Again, we are pressing hard with the government and the concerned departments. The yield of the paddy to be increased. Although the yield is quite high in respect to the country, but still there are gaps. If we can maintain the yields as in competition with even Bangladesh and China, the cost of the rice will come down further. We are waiting for these changes. Thank you so much for your advice, sir. I'll close this discussion. Today's discussion shows that the future of Indian rice exports lies in the collaboration, consistency and credibility. If association, exporters and institutions move together, India will not just lead in the volume, it will lead in trust. So I request all of the people who are sitting here, all stakeholders, exporters, millers, fumigations, all the logistic partners also, that we should draw some points from each and every discussions, and every point what the senior peoples are sharing right now will add some cherry points too in this current phase. Everyone is starving with booking the profitability. I see all of the suggestions given by sitting in this particular dais will have helped in particular decision making also. Thank you all for this discussion, sir. Thank you, sir. थैंक यू सो मच सर। और अब हम फेलिसिटेशन की ओर आगे बढ़ते हैं और मुकेश जैन जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ का स्टेज पर आए। और मिस्टर हेमंत सेठ जी, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल एंड हेड फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर, वाटर एंड क्रॉप प्रोटेक्शन फेडरेशन ऑफ इंडिया, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिकी, को आप फेलिसिटेट करेंगे।
छत्तीसगढ़ की जो खूबसूरती है, जिसकी वजह से जिस कला के लिए जानी जाती है छत्तीसगढ़, कोसा उनमें से एक है। उनसे हम आज के अपने यहाँ पर पहुँचे हुए सभी मेहमानों को फेलिसिटेट कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं और साथ ही साथ में आयरन से बनी ये खूबसूरत कलाकृति को भी हम भेंट यहाँ पर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। अनिल अग्रवाल जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ मंच पर आएँ और मिस्टर अशोक सेठी जी, डायरेक्टर ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया TPCI को आप फेलिसिटेट करेंगे। CA अमित अग्रवाल जी, आपको भी हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आप प्लीज़ मंच पर आएँ और मिस्टर जय कुमार जी को आप फेलिसिटेट करेंगे। CA अमित अग्रवाल जी, मिस्टर जय कुमार जी को आप फेलिसिटेट करेंगे। राइस इंडस्ट्री एसोसिएशन पर्सपेक्टिव्स को लेकर ये पैनल डिस्कशन अभी यहाँ पर चल रहा था, जिसमें अलग अलग पैनलिस्ट हमारे साथ में यहाँ जुड़े हैं और उन सभी को हमने यहाँ सुना है और बहुत सी ऐसी ज़रूरी बातें और पॉइंटर्स इस पूरे पैनल डिस्कशन के थ्रू निकल कर सामने आए हैं, जो कि लगातार आज सुबह से ही जितने भी सेशंस हो रहे हैं उसकी यही खूबसूरती और ख़ासियत है। सर, आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप इस पूरे पैनल डिस्कशन को, जिन्होंने बहुत ही बखूबी मॉडरेट किया है, मिस्टर मयूर जैन जी, मैनेजिंग डायरेक्टर श्री गुरुदेव एग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, को भी आप फेलिसिटेट करेंगे। थैंक यू सो मच सर। और एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए हम आप सभी से दरख्वास्त करते हैं कि एक ग्रुप फोटोग्राफ, ताकि इस खूबसूरत और शानदार पल को हमेशा के लिए कैद कर लिया जाए तस्वीरों के माध्यम से, ताकि जब भी इस तस्वीर को देखा जाए तो ये कार्यक्रम, ये जहन, ये पल और भी ख़ास हो जाए और ये यादें ताज़ा हो जाए। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत शुक्रिया। IIRS इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट 2026 का ये शानदार आयोजन, जिसका आगाज़ आज से हो चुका है, 2 दिनों तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा, जिसमें अलग अलग पैनल डिस्कशंस हो रहे हैं और स्पीकर्स हमारे बीच में आ रहे हैं, डिग्निटरीज़ यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उन सभी को जानने का, सुनने का मौका यहाँ पर हम सभी को इस प्रोग्राम के थ्रू में मिल रहा है। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं चिंतन शिविर की ओर, ऑर्गेनिक राइस एक्सपोर्ट्स, जिसका विषय, जिसका सब्जेक्ट होने वाला है स्ट्रेथनिंग इंडियाज ऑर्गेनिक राइस एक्सपोर्ट्स, क्वालिटी, कंप्लायंस एंड कॉम्पिटिटिवनेस। इसको लेकर अब ये पूरी चर्चा होगी और अब हम ज़रूरी स्टेज मैनेजमेंट यहाँ पर कर रहे हैं। तब तक हम सभी हम आपसे इस प्रोग्राम के लिए आपसे ये जानकारी साझा करते हैं। और एक ज़रूरी जानकारी ये भी है कि अपीडा के चेयरमैन जो हैं वो भी यहाँ पर आने वाले हैं, वो भी हमारे साथ में इस कार्यक्रम में शरीक होंगे। और देखिए, यही इस कार्यक्रम की खूबसूरती है कि एक और न सिर्फ छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ के साथ साथ में छत्तीसगढ़ के बाहर, ऑल ओवर इंडिया से और इंडिया के भी बाहर कंट्री से भी डिग्निटरीज़ यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यही इस कार्यक्रम को और भी ख़ास बना रही है। इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट 2026 का ये 2nd एडिशन है। जब भी कोई कार्यक्रम होता है और वो अपने पहले वाले से और ज़्यादा बेहतर होता है, तो उसकी खासियत और उसकी सफलता का पैमाना इसी से तय किया जा सकता है। और ये जो तस्वीर आज निकल कर सामने आ रही है, ये जो कार्यक्रम जिसका आगाज़ आज हुआ है, हम और आप सभी जिसके साक्षी यहाँ पर बन रहे हैं, यानी कि आज के इस पूरे प्रोग्राम को अगर देखें तो ये पूरा प्रोग्राम हम बिल्कुल बेशक इसे कह सकते हैं कि ये पूरा कार्यक्रम अपने पहले वाले एडिशन से और ज़्यादा बेहतर और सारगर्भित यहाँ पर नज़र आ रहा है। लगातार हमारे साथ में मेहमान जुड़े हुए हैं और ग्लोबली हमारे साथ में डिग्निटरीज़ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिनको जानने का, सुनने का मौका हमें 2 दिनों तक ये मिल रहा है। आज जब इस पूरे प्रोग्राम की शुरुआत हुई, आगाज़ हुआ, तो माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री OP चौधरी जी के करकमलों से आज इस पूरे प्रोग्राम का आगाज़ हुआ है और शुभारंभ उन्होंने आज के इस प्रोग्राम का किया है। इनॉग्रल सेशन उनके थ्रू आज यहाँ पर हुआ, उनको भी सुनने का मौका यहाँ पर मिला है और इसी के बाद से एक एक करके लगातार हमारे साथ में स्पीकर्स जुड़ते चले जा रहे हैं। देखिए, आज पहले दिन की अगर बात करें तो थिंक राइस, थिंक इंडिया,
टेकिंग इंडियाज राइस स्टोरी टू द वर्ल्ड, इस मोटिव के साथ में ये पूरी 2 दिनों तक का ये पूरा कार्यक्रम है। और आज पहले दिन की अगर बात करें तो बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको उठाया गया है, ऐसे बहुत से पॉइंटर्स हैं जिसको लेकर बातचीत यहाँ पर की गई है, बहुत से स्पीकर्स को सुनने का मौका हमें मिला है। पॉइंटर्स पे अगर गौर करें तो ग्लोबल राइस ट्रेड एम्बेसी के थ्रू हमने उनके पॉइंटर्स जाने हैं। हमारे साथ में फॉरेनर डिग्निटरीज भी यहाँ पर जुड़े हुए थे, उन्हीं से शुरुआत भी हुई है, उनको भी जानने का सुनने का मौका मिला है। इंडियाज़ गोल इन द ग्लोबल राइस इकोनॉमी को लेकर भी बातचीत हुई है अगले पैनल डिस्कशन में। तो इस तरह से एक एक करके बहुत से पैनल डिस्कशंस आज दिन भर में हुए हैं। इन्हीं पैनल डिस्कशंस के अलग अलग सब्जेक्ट्स थे, जिसमें एक और सब्जेक्ट ये भी था कि डिमांड, सप्लाई एंड चेंजिंग ग्लोबल ट्रेड ट्रेंड्स, quality standards, testing, buyer compliance, pricing and risk management, rice industry association perspective, ऐसे ये अलग अलग पॉइंटर्स थे, ऐसे ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे जिसको लेकर आज बहुत से एक्सपर्ट्स को सुनने का मौका इसी प्रोग्राम और इसी स्टेज के थ्रू यहाँ पर मिला है। और उन्होंने बहुत से ऐसे पॉइंटर्स भी यहाँ पर रखे हैं जिनको जानने का और सुनने का मौका आज यहाँ पर मिला है। यही इस कार्यक्रम की खूबसूरती है। छत्तीसगढ़ प्रदेश जहां पर हम और आप यहां पर मौजूद हैं, और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में यहां पर हम मौजूद हैं, और बहुत ही सुंदर ये आयोजन 2 दिनों तक हो रहा है। राइस बोल ऑफ इंडिया, यानी कि धान का कटोरा, जिसके नाम से छत्तीसगढ़ को जाना जाता है, जिस नाम से छत्तीसगढ़ ने अपनी पहचान बनाई है, और इसी नाम का परचम छत्तीसगढ़ ने ग्लोबली यहाँ पर लहराया है। इसी चीज़ को लेकर, इसी राइस को लेकर, पैडी को लेकर, और कैसे इसकी मार्केटिंग होती है, कैसे इसकी ब्रांडिंग होती है, इसका मैनेजमेंट क्या है, इसका रिस्क फैक्टर क्या है, कैसे इसे ग्लोबली और वास्प किया जा सकता है, कैसे इसको एनहांस किया जा सकता है, कैसे इसकी ब्रांडिंग हो सकती है, सभी को लेकर यहाँ पर ये बातचीत हो रही है। बहुत ये खुशी का मौका है और हमारे लिए गौरव का क्षण भी है जब इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए आप सभी एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है और आप सभी की सहभागिता भी इस प्रोग्राम में दर्शाती है। अलग अलग पॉइंटर्स यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं, और जैसे कि हमने कुछ देर पहले भी बताया कि यही इसकी खासियत भी है कि हर पैनल डिस्कशन अपने पहले वाले पैनल डिस्कशन से और भी बेहतर रहा है, और लगातार यही अभी तक चलता आ भी रहा है। कल की अगर बात करें तो कल भी दिन भर में अलग अलग पॉइंटर्स, सब्जेक्ट वाइज डिस्कशंस यहाँ पर होने हैं, पैनल डिस्कशन यहाँ पर होना है। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि बातचीत के हिस्से में आ चुकी है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी आनी बाकी है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी जिस पर चर्चा होनी अभी बाकी है। अपीडा के चेयरमैन हमारे बीच में पहुँचने ही वाले हैं, और ये भी हमारी खुशकिस्मती है। और अपीडा के चेयरमैन यहाँ पर आ चुके हैं। हम चाहेंगे एक बार जोरदार तालियां हो उनके स्वागत के लिए। अपीडा के चेयरमैन हमारे बीच में यहाँ पर पहुँच चुके हैं। IIRS अभिषेक देव जी, चेयरमैन अपीडा, आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट का ये शानदार आयोजन यहाँ पर हो रहा है, और लगातार सुंदर तस्वीरें इसी कार्यक्रम के माध्यम से निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें अलग अलग डिग्निटरीज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अलग अलग एम्बेसी से लोग पहुँचे हुए हैं, वर्ल्ड वाइड गेस्ट हमारे बीच में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और उन्हें जानने का, सुनने का मौका इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट 2026 के सेकेंड एडिशन में हमें लगातार सुनने का मौका मिल रहा है। टेकिंग इंडियाज राइस स्टोरी टू द वर्ल्ड, इसी मोटिव के साथ में 2 दिनों का ये शानदार आयोजन यहाँ पर चल रहा है, और इसी पर लगातार हम आगे बढ़ते भी चले जा रहे हैं। इस पूरे प्रोग्राम को जिनका पूरा सहयोग मिला है, जिनकी वजह से ये पूरा कार्यक्रम चलता आ रहा है, और निरंतर जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है, 2 दिनों तक यह पूरा कार्यक्रम चलेगा, जिसमें इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट 2026 का सेकेंड एडिशन, organized by TREA CG, the Rice Exporters Association of Chhattisgarh, supported by Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Agriculture, Processed Food Products, Export Development Authority, APIDA, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, FICCI, Confederation of Indian Industry, CII, Trade Promotion Council of India, TPCI, All India Rice Exporters Association, AIREA,
और इनके साथ साथ में गोल्ड स्पॉन्सर, सिल्वर स्पॉन्सर और ब्रॉन्ज स्पॉन्सर के रूप में भी बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं और लोग हैं जिन्होंने सभी ने अपनी सहभागिता यहाँ पर दी है और अपना सहयोग दिया है, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम एक अकेले से नहीं होता है, सभी का साथ मिलता है और यही वजह रहती कि सभी के साथ इस पूरे कार्यक्रम को और भी वृहद बनाया जाता है। और इस पूरे कार्यक्रम की खूबसूरती और सुंदरता भी इसी बात का प्रमाण है कि इतनी सारे लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम में 2 दिनों तक चलने वाले इस पूरे प्रोग्राम में अपनी सहभागिता दी है। तो चिंतन शिविर के लिए अब ज़रूरी तैयारी यहाँ पर चल रही है, जिसका विषय रहने वाला है स्ट्रेंथनिंग इंडियाज़ ऑर्गेनिक राइस एक्सपोर्ट्स, क्वालिटी, कंप्लायंस एंड कॉम्पिटिटिवनेस को लेकर अब ये पूरी चर्चा यहाँ पर हो रही, ज़रूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर हो रही हैं, स्टेज मैनेजमेंट थोड़ा सा यहाँ पर चल रहा है और इसी के बाद से हम आगे बढ़ेंगे। आज के इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट के पहले दिन की जितनी भी जो चीज़ें हुई हैं, अलग अलग जो सेशंस हुए हैं, पैनल डिस्कशंस हुए हैं, स्पीकर्स को सुनने का मौका यहाँ पर मिला है, इन्हीं के बाद में अब इस चिंतन शिविर के साथ हम इस पूरे आज के इस प्रोग्राम को रैप अप करेंगे, जिसमें चिंतन शिविर में भी अलग अलग सेशंस होने वाले हैं, प्रेजेंटेशंस होंगे, स्पीकर्स को सुनेंगे, पैनल डिस्कशन भी यहाँ पर होगा, जिसे एक नाम दिया गया है चिंतन शिविर। और इसी के इर्द गिर्द यानी कि ऑर्गेनिक राइस एक्सपोर्ट्स, स्ट्रेंथनिंग इंडियाज ऑर्गेनिक राइस एक्सपोर्ट्स, क्वालिटी, कंप्लायंस एंड कॉम्पिटिटिवनेस, इसी को लेकर अब ये चर्चा होगी। तो बस अब से कुछ ही देर का इंतज़ार है, छोटा सा एक हम पॉज ले रहे हैं इस पूरे प्रोग्राम के लिए, ताकि ये जो हमारा अगला सेशन है चिंतन शिविर, इसको हम काफ़ी अच्छे से सुन पाए, समझ पाए और जो डिग्निटरीज आए हुए हैं, जो एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, उन्हें और अच्छे से सुन पाए। इसी के लिए ज़रूरी व्यवस्थाएं और तैयारियां यहाँ पर हो रही है। तो बस अब से कुछ ही देर का इंतज़ार है और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले और इम्पॉर्टेंट सेशन की ओर, चिंतन शिविर ऑर्गेनिक राइस एक्सपोर्ट्स। थैंक यू। हेलो हेलो माइक चेक हेलो 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 माइक चेक हेलो
Hello. 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 Hello, mic check. Hello. Hello. Hello, mic check. Hello. 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 Hello, mic check. Hello. 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 Hello, mic check. Hello. Hello. चालू है।
Hello, check. इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट 2026 का ये सेकेंड एडिशन है। नए साल में हम और आप सभी प्रवेश कर चुके हैं, नया साल का आगाज़ हो चुका है और इस नए साल में इतना अच्छा और इतना सुंदर इनिशिएटिव यहाँ पर लिया जा रहा है जिसमें टेकिंग इंडियाज़ राइस स्टोरी टू द वर्ल्ड ऐसे इनिशिएशन के साथ में इस पूरे प्रोग्राम को मोटिव रखते हुए इसको आगाज़ किया गया है, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। 2 दिनों तक ये पूरा कार्यक्रम दिन भर चलने वाला है। आज लगभग पहले दिन के पहले प्रोग्राम के एंडिंग सेशन की ओर में हम आ चुके हैं। आज दिन भर में बहुत सारे डिस्कशंस हुए हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी बातें हैं जो कि निकल कर सामने आई हैं। थिंक राइस थिंक इंडिया इस टैगलाइन के साथ में इस पूरे प्रोग्राम को रखा गया है और इसी को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं, बातचीत यहाँ पर हो रही है। अलग अलग पैनल डिस्कशंस हुए हैं और साथ ही साथ में बहुत से ऐसे पॉइंटर्स हैं जो कि निकल कर सामने आए हैं। फॉरेन डिग्निटरीज़ भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अलग अलग एम्बेसी के लोग भी हैं और साथ ही साथ में सभी
न सिर्फ छत्तीसगढ़ प्रदेश से, इंडिया के बाहर से भी सभी मेहमान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सभी का मोटिव सिर्फ एक है, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना, इसमें अपने बात रखना और अपने पॉइंटर्स को देना, ताकि इसे ग्लोबली और कैसे रखा जा सकता है, कैसे इनिशिएट लिया जा सकता है, इन सभी को लेकर चर्चाएं यहाँ पर आज दिन भर से हो रही हैं और कल भी ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पर होना है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया ना करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं चिंतन शिविर की ओर। चिंतन शिविर ऑर्गेनिक राइस एक्सपोर्ट्स को लेकर अब ये बातचीत होनी है, जिसका सब्जेक्ट होने वाला है स्ट्रेंथनिंग इंडियाज ऑर्गेनिक राइस एक्सपोर्ट्स, क्वालिटी, कंप्लायंस एंड कॉम्पिटिटिवनेस। इसको लेकर अब ये बातचीत होगी, जिसमें हमें बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारे साथ में अलग अलग मेहमान यहाँ पर जुड़ेंगे और उनके भी पॉइंटर्स और उन्हें भी सुनने का, जानने का मौका इस सेशन के थ्रू, इस चिंतन शिविर के थ्रू हमें मिलेगा। तो सबसे पहले हम मंच पर आमंत्रित करते हैं और चलिए अब हम बिना देरी के मंच पर आमंत्रित करते हैं IAS अभिषेक देव जी, चेयरमैन अपीडा। आप प्लीज मंच पर आए। साथ ही साथ में संजिता गुप्ता जी, IFS एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, छत्तीसगढ़ स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन, विनीता सुधांशु जी, जनरल मैनेजर अपीडा, और सरस्वती बोस जी, जनरल मैनेजर अपीडा। आप सभी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं कि आप प्लीज आए। और अब हम अपने आज के प्रोग्राम की ओर में, अब अगले सेशन की ओर में आगे बढ़ रहे हैं। चिंतन शिविर ऑर्गेनिक राइस एक्सपोर्ट्स, स्ट्रेंथनिंग इंडियाज ऑर्गेनिक राइस एक्सपोर्ट्स, क्वालिटी, कंप्लायंस एंड कॉम्पिटिटिवनेस। IAS अभिषेक देव जी, मिसेस संजिता गुप्ता जी, IFS एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, छत्तीसगढ़ स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन, विनीता सुधांशु जी, जनरल मैनेजर अपीडा, डॉक्टर सरस्वती बोस जी, जनरल मैनेजर अपीडा, और सभी गेस्ट अब स्टेज पर हमारे आ चुके हैं। और हम मुकेश जैन जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आएँ और IAS अभिषेक देव जी, चेयरमैन अपीडा, को आप फेलिसिटेट करेंगे बुके के साथ। आशु अग्रवाल जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ मंच पर आएँ और मिसेस संजिता गुप्ता जी, IFS एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, छत्तीसगढ़ स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन, को आप फेलिसिटेट करेंगे। रोहित शर्मा जी को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ आएँ और विनीता सुधांशु जी, जनरल मैनेजर अपीडा, को आप फेलिसिटेट करेंगे। और मयूर जैन जी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ आएँ और डॉक्टर सरस्वती बोस जी, जनरल मैनेजर अपीडा, को आप फेलिसिटेट करें। मयूर जैन जी, डॉक्टर सरस्वती बोस जी, जनरल मैनेजर अपीडा, को आप फेलिसिटेट करेंगे। थैंक यू सो मच। तो चलिए सभी एक्सपर्टीज़ और सभी गेस्ट हमारे बीच अब यहाँ पर आ चुके हैं और अब हम बिना वक्त ज़ाया किए अपने सेशन की ओर में अब हम आगे बढ़ रहे हैं। चिंतन शिविर ऑर्गेनिक राइस एक्सपोर्ट, स्ट्रेंथनिंग इंडियाज ऑर्गेनिक राइस एक्सपोर्ट्स, क्वालिटी, कंप्लायंस एंड कॉम्पिटिटिवनेस। इनमें वेलकम और ओपनिंग रिमार्क्स के लिए, ओवरव्यू के लिए अब हम रिक्वेस्ट करते हैं विनीता सुधांशु जी, जनरल मैनेजर अपीडा, को कि आप आएँ और अपना ओपनिंग रिमार्क दें। विनीता सुधांशु जी। Hello. Good evening, everyone. I think first of all, let's give a round of applause to our audience who have patiently waiting since morning and listening so carefully and taking all the inputs and giving their inputs as well for making this program successful. Once again, thank you very much. And Honorable Chairman APIDA, Shri Abhishek Dev, Ms. Sujita Gupta, Managing Director,
Chhattisgarh State Minor Forest Produce Federation, my colleague Shashwati Bose, esteemed representatives from regulatory bodies, financial institutions, industry and trade, ladies and gentlemen. A very warm good evening to all of you. It gives me a great pleasure to welcome to this Chintan Shivir on organic rice exports being held as a part of India International Rice Summit 2026 here in Raipur at the heart of one of the India's most important rice producing region. In fact, since morning we are claiming that Chhattisgarh is the 5th largest producer of rice in India. The Chintan Shivir has been conceived as a focused, solution-oriented dialogue, a platform where the deliberation on key challenges, opportunities in scaling organic rice exports. The session will bring together policymakers, certification bodies, exporters, cooperatives, and international market experts to discuss issues related to certification credibility, traceability, farmer integration, value addition, and market access with a focus on identifying actionable strategies to strengthen India's global positioning in the organic market. India, we know that since morning we are talking that India occupies a central position in the global rice economy with a global rice export value at around $41 billion in the current year of 2024, and the top 5 exporters account for nearly 3/4 of this trade, and India leads the world with the 29% share. So this shows that how the strong position India has made in the international market, and rice continues to be a cornerstone of India's agriculture exports, and we are claiming that yes, India is the largest, first #1 exporter in the world, accounting for nearly 1/4 of the India's total agriculture exports. Both Basmati and non-Basmati segments have demonstrated sustained growth, enabling India to effectively serve premium as well as volume-driven market across Asia, Africa, and the Middle East. So within this border trade narrative, organic agriculture represents a rapidly growing and strategic segment, and India ranks second globally in terms of organic agriculture land and first in number of organic producers, with over 2.2 million farmers engaged in organic farming. And India's export a wide range of organic products, including cereals, millets, processed food, tea, spices, pulses, medicinal plants, coffee, oilseeds, and oil cake. With cereals and millets, the processed food together contributing nearly half of total organic export value. So the key destinations include the USA, the premium market, the European Union, another premium market, Canada, Great Britain, Switzerland, and Australia. So organic cereals and millets exports reached to $161 million in the year 24-25, with the organic rice alone contributing $118 million, clearly establishing it as the dominant product within the India organic export basket, and notably organic non-Basmati has emerged as a high growth segment and recorded exceptional growth we have seen in this sector, and this reflects rising global demand for affordable, sustainably produced organic staple beyond the premium Basmati varieties. With India, rice now reaches market across North America, Europe, Africa, and Asia. So this expansion underscores growing international confidence in India's organic certification, traceability system, and compliance. The way we have set up this system in place, and we are gaining the confidence of the international market and international country, the buyers. So they are now demanding for the more products, the more organic products from India. And value addition is also increasingly shaping the next phase of growth in organic rice exports. An export of rice-based value-added products such as rice flour, poha, puffed rice, and ready-to-eat items reaches nearly to $5 million in the year
24-25. So these figures are indicating that the scope which we have. That's why we thought, why not to, use this platform of International Rice Summit and organize the Chintan Shivir, where all the policymakers, all the stakeholders in the supply chain, they'll be able to interact and will be able to get the feedback and to make a roadmap to increase the share of the Indian organic rice in the international market. So I'll not take much word here. I will conclude my address, and once again I would like to welcome all the dignitaries, all the participants, and I hope that today's deliberation will pave the way to make more strategy to increase the share of Indian organic rice in the international market. Thank you very much. थैंक यू सो मच मैम। और अब हम रिक्वेस्ट करते हैं अभिषेक देव जी, चेयरमैन अपीडा, कि आप आएँ और एड्रेस करें इस पूरे प्रोग्राम को। IAS अभिषेक देव जी, चेयरमैन अपीडा। सबसे पहले मैं हमारे इस कार्यक्रम के जो मेन आयोजक हैं मुकेश जैन जी, ट्रिया छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष, उनको बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुल कार्यक्रम में आज इसका आयोजन करा और उन्होंने हमारे इस चिंतन शिविर को भी अपने कार्यक्रम के बीच में रखा, तो आपको उसका भी धन्यवाद करता हूं। तो ऑर्गेनिक एक बहुत अच्छा थीम है और एक तरह से एक वैल्यू एडिशन है। हम लोग जैसे अगर देखा जाए तो अभी इसी साल हम लोग देश के विश्व के सबसे बड़े चावल के उत्पादक हम लोग बन गए हैं। अभी कुछ ही दिन पहले माननीय कृषि मंत्री जी ने ये घोषणा करी थी कि जो हमारा चावल का प्रोडक्शन अब विश्व में सबसे ज़्यादा हो गया है और हमने चीन को भी इसमें पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा जैसा कि सब जानते ही हैं कि हमारे कई यहाँ पर एक्सपोर्टर भाई हैं, बहन हैं, कि एक्सपोर्ट के नाम में, चावल के एक्सपोर्ट के नाम में तो हम लोग सबसे बड़े पहले भी थे ही। तो करीब हमारी 30% की मार्केट एक्सपोर्ट्स की, चाहे वैल्यू हो चाहे क्वांटिटी हो, दोनों में हमारे पास काफ़ी बड़ी मात्रा में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। ऑर्गेनिक, जैसे कि मैंने बोला कि एक तरह से एक वैल्यू एडिशन है, क्योंकि इसमें जो भी आपको जो उसका हमें मिलता है एक्स्ट्रा अमाउंट, करीब 20 से 30% तो मिनिमम अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो तो उसका आपको ज़्यादा उसका वैल्यू मिलती है। तो अगर आंकड़े देखे जाएं, जैसे विनीता मैडम ने बताया कि चावल का, ऑर्गेनिक राइस का एक्सपोर्ट अच्छा हुआ था पिछली बार और करीब 150 मिलियन का एक्सपोर्ट हुआ था, जो कि सबसे बड़ी कैटेगरी पिछले साल बन गई थी। लेकिन अगर इस साल देखा जाए तो हमारा जो ऑर्गेनिक चावल का जो एक्सपोर्ट है, इतना अच्छा उसका प्रदर्शन नहीं है और थोड़ा उसमें डिक्लाइन आया है। तो हमें दोनों तरफ से देखना चाहिए कि ऑर्गेनिक चावल बासमती और ऑर्गेनिक चावल नॉन बासमती, दोनों में काफ़ी एक्सपोर्ट हमें आगे बढ़ाने की काफ़ी उसके अंदर संभावना है। जैसे हम लोग विश्व में कन्वेंशनल चावल के लीडर हैं, उसी तरह हमें जो ऑर्गेनिक राइस है, इसमें भी हमें टॉप का एक्सपोर्टर बनना चाहिए। वियतनाम, US ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि अभी ऑर्गेनिक चावल में काफ़ी आगे हैं, तो अब हमें उनसे आगे निकलना चाहिए। और इसीलिए हमने आज एक चिंतन शिविर का एक टॉपिक भी रखा कि कैसे हमारा जो ऑर्गेनिक राइस है, इसमें कैसे एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए। तो मुझे आपको बताते हुए खुशी होगी कि जो ऑर्गेनिक की थीम में बात करी जाए तो विश्व का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक का ट्रेड फेयर है हमारा बायोफैक, उसमें इस बार हम लोग पार्टनर कंट्री हैं और उसके अंदर हमने अब तक का सबसे ज़्यादा एग्जीबिशन स्पेस एरिया हमने लिया है। और इस बार हमारा टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो स्टेक होल्डर हैं ऑर्गेनिक सेक्टर के, इसमें पार्टिसिपेट करें।
और जो हमारे स्पेशली ऑर्गेनिक राइस के जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, मिलर्स हैं, जो भी ऑर्गेनिक सर्टिफाइड हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट करें, वहाँ पर एक्सपोजर देखें कि कितना वहाँ पर कितनी अच्छी वहाँ पर मांग है हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की, और उसको मांग को पूरा करा जाए। तो एक जैसे कन्वेंशनल जो हमारा बासमती राइस ऑर्गेनिक तो जा ही रहा है, एक्सपोर्ट जा रहा है, यूएस जा रहा है, ईयू जा रहा है, कई देशों में जा रहा है, बट जो नॉन बासमती भी है ऑर्गेनिक, उसमें भी बहुत संभावना है। नॉन बासमती राइस के अब करीब 30 के करीब जीआई वैरायटीज़ हैं। जैसे यहाँ की छत्तीसगढ़ की बात करी जाए तो नगरी दुबराज है, और कई ऐसे प्रोडक्शन एरियाज़ हैं जहाँ पर डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक हैं बट अभी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन नहीं हुआ है। तो उसमें हम लोग पूरा उसमें बैठ के काम कर सकते हैं। मैम भी आई हैं, रंजीता मैम, तो मैं उनसे उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो आज हमारे साथ शामिल हो रही हैं, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा योगदान है कि कैसे हम लोग ऑर्गेनिक का प्रोडक्शन बढ़ाएं, कैसे उसका सर्टिफिकेशन जो अपीडा के माध्यम से जो एक्रेडिटेड सर्टिफिकेशन बॉडीज़ होती हैं उनके साथ काम करके काफ़ी हम लोग ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन बढ़ा सकते हैं, एरिया में भी बढ़ा सकते हैं और नंबर ऑफ़ प्रोड्यूसर्स भी बढ़ा सकते हैं। तो काफ़ी संभावनाएं हैं। सारे स्टेक होल्डर्स, स्टेट गवर्नमेंट्स, हमारे जितने भी फार्मर्स हैं, ग्रोअर ग्रुप्स हैं, सब लोग इसमें काम कर सकते हैं। अभी मेरे ख्याल से भी एक प्रेजेंटेशन भी होगी। हमारा जो जो हमने कई संशोधन भी लाए हैं हम अपने ऑर्गेनिक के रेगुलेशन में, उसमें कई हमने नए फीचर्स लाए हैं जिससे आपका जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है वो आसान हो जाए, और उसके अंदर कई हमने ऐसे भी फीचर्स लाए हैं कि शीघ्र उसका जो कन्वर्जन है प्रोडक्ट का वो भी हो सके, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऐसे कई खूबियाँ हैं, कई एरियाज़ हैं जहाँ पर जो हमने नया प्रोविज़न लाए हैं वहाँ उसका वो लोग लाभ ले सकते हैं। तो मैं आज फिर से जो भी हमारे ऑर्गेनाइज़र्स हैं, मुकेश जी स्पेशली, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, और जो भी मेरे सारे डिस्टिंग्विश गेस्ट आज शामिल हो रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए, आप सबका धन्यवाद करता हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आगे हमारा जो ऑर्गेनिक राइस है और भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं छत्तीसगढ़ के और जो भी इस एरिया के, आगे और भी अच्छा इसमें मतलब वैल्यू हमें मिलेगी, और जो भी हमारे किसान हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, जो भी ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का एक्चुअल में उसका वो लोग आमदनी उनको ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच सर। और अब हम कॉन्टेक्स्ट सेटिंग के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए डॉक्टर सरस्वती बोस जी, जनरल मैनेजर अपीडा से रिक्वेस्ट करते हैं। ऑर्गेनिक नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन NPOP एंड कंप्लायंस फॉर वाइल्ड कलेक्शन। As my colleague said, it's a late evening, so अभी आप लोगों की एनर्जी कम होगी, तो मैं क्विकली एक ओवरव्यू दूंगी ऑन द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन NPOP। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन NPOP, राष्ट्रीय कृषि उत्पादन कार्यक्रम, ये हमारी कंट्री का रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है फॉर एक्सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया। जैविक उत्पाद को अगर आप निर्यात करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको NPOP सर्टिफाइड होना आवश्यक है, और ये रेगुलेशन जो है 2001 में आई थी। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इम्प्लीमेंट करा था इन 2001, और ये नोटिफाइड है अंडर द FTDR एक्ट। So as per this regulation, any product exported from the country has to be certified under NPOP। 2025 में इसका 8th एडिशन जो है वो जनवरी में लॉन्च हुआ था, और आफ्टर अ ट्रांजिशन पीरियड ऑफ 6 months it is now in force from July 4th July 2025।
In the domestic market, NPOP is also notified under the FSSAI Food Safety and Standards Organic Regulations 2017 as one of the options. The other is the participatory guarantee system which is implemented by Ministry of Agriculture. लेकिन imports के लिए either the product has to be certified as per NPOP या तो it should be covered under a mutual recognition agreement. NPOP जो रेगुलेशन है उसमें स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के लिए आपको किस तरह के स्टैंडर्ड्स किस तरह से फॉलो करने हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एक्रेडिटेशन जो सर्टिफिकेशन करेंगे, जो प्रमाणन करेंगे, वो प्रमाणन इकाइयों के लिए किस तरह से उनको एक्रेडिटेशन दिया जाता है, क्योंकि हर कोई सर्टिफाई नहीं कर सकता। जिसको मान्यता प्राप्त होती है वही सर्टिफिकेशन बॉडी सर्टिफिकेशन कर सकता है अंडर NPOP। वो एक्रेडिटेशन प्रोसीजर एक्सप्लेन्ड है और सर्टिफिकेशन बॉडीज़ कैसे इंस्पेक्शन करके सर्टिफाई करते हैं ऑपरेटर्स को, वो इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन प्रोसेस भी बताया गया है। इसके अलावा ग्रोअर ग्रुप सर्टिफिकेशन जो कि लघु किसानों के लिए, क्योंकि सर्टिफिकेशन की एक चार्जेस आती हैं, इसलिए लघु किसानों के लिए वो एक ग्रुप बना के, समूह बना के अपना एक कलेक्टिवली सर्टिफाई हो सकते हैं। इसका एक प्रावधान किया गया है। उसमें 25 से 500 फार्मर्स का समूह बनता है, तो उससे क्या है कि सर्टिफिकेशन कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि वो एक समूह के तौर पर एक एंटिटी के हिसाब से चीज़ों को बेचते हैं और इससे उनको जो मुनाफा मिलता है वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और हमारा जो इंडिया ऑर्गेनिक लोगो है वो हमारी पहचान है इंडिया के ऑर्गेनिक सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स की अंडर NPOP। जो लोगो आप प्रेजेंटेशन के राइट साइड ऊपर देख सकते हैं। जो हमारी NPOP है ये मान्यता प्राप्त है विश्व के माने हुए देशों, जो आपके विकसित देश हैं, यूरोपियन यूनियन, स्विट्ज़रलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, ये हमारे अनप्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स जो हैं, जो क्रॉप प्रोडक्शन लेवल पे हमें रिकग्निशन मिली है उनसे। इसके अलावा म्यूचुअल रिकग्निशन है हमारा ताइवान के साथ, और लास्ट ईयर 24 सितंबर में इम्प्लीमेंट हुआ है म्यूचुअल रिकग्निशन अरेंजमेंट विद ऑस्ट्रेलिया। म्यूचुअल रिकग्निशन अरेंजमेंट से जो है आपको दोबारा से उस कंट्री की सर्टिफिकेशन में सर्टिफाई होने की ज़रूरत नहीं है, हमारी अपनी सर्टिफिकेशन में ही हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इससे ट्रेड को जो है बहुत ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाता है। हमारा एक इंटरिम MRA जो है वो भी न्यूजीलैंड के साथ हमारा फाइनलाइज हो गया है, और एक फुल फ्लेजेड नेगोशिएशंस फॉर अ फुल फ्लेजेड MRA भी इज़ इन प्रोसेस। सर्टिफिकेशन मैकेनिज़्म जो लोग सर्टिफाइड हैं वो जानते हैं। एक थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन सिस्टम है हमारा NPOP, तो उसमें जो है इट इज़ अ प्रोसेस सर्टिफिकेशन, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन नहीं है। तो इसलिए प्रोडक्ट को टेस्ट करके कोई ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। इसमें प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, ट्रेडिंग जो सारे प्रोसेसेस हैं वो सर्टिफाई होते हैं बाया एक्रेडिटेड सर्टिफिकेशन बॉडी, और जो सर्टिफिकेशन बॉडीज़ होती है उनको नेशनल एक्रेडिटेशन बॉडी है अंडर NPOP जो उनको एक्रेडिटेशन देती है। और NPOP का जो सेक्रेटरीट है सचिवालय ये अपेडा है, तो अपेडा जो है सारा एक्रेडिटेशन प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट करता है और NPOP को भी। As on date there are 34 active certification bodies, उसमें 14 certification bodies पब्लिक सेक्टर में है। एक ऑनलाइन ट्रेसेबिलिटी सिस्टम है हमारा ट्रेसनेट, और पूरा जो सारे सर्टिफिकेट्स निकलते हैं और जो सारा सर्टिफिकेशन प्रोसेस है वो ट्रेसनेट के ज़रिए ही होता है। इसमें जो सर्टिफिकेट्स निकलते हैं उसमें यूनिक QR कोड है जिसको स्कैन करके जेन्युइननेस पता कर सकते हैं। इससे कंज्यूमर ट्रस्ट बिल्ड होता है कि लोग को आश्वासन मिलता है कि हाँ जो सर्टिफिकेट्स के साथ जो प्रोडक्ट वो ले रहे हैं वो जेन्युइन है। NPOP 14 जो 2014 में लॉन्च हुई थी उसको वो चल रही थी, और उसके बाद 10 साल का एक अवधि गुजर गई थी, तो हमने उसको रिवीजन प्रोसेस स्टार्ट किया, और प्रोसेस पब्लिक कंसल्टेशंस के बाद जो प्रोसेस के बाद हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफिकेशन के साथ now we have implemented it the 8th edition in 2025. Without going in much details, NPOP 8th edition में हमने बहुत सारे फार्मर फ्रेंडली फीचर्स लाए हैं। उसमें हमने प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई किया है, ग्रोअर ग्रुप्स के लिए एक लीगल स्टेटस को मैंडेटरी किया है, सो दैट दे विल हैव मोर से इन देयर प्रोसेसेस।
देन ट्रांसपेरेंसी के लिए वी हैव मेड इट मैंडेटरी कि जो सारे ग्रोअर ग्रुप्स हैं उनके फार्मर मेंबर्स के भी डिटेल्स जो है वो पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। ओवरसाइट मैकेनिज़म्स को स्ट्रेंथन किया है, सैंक्शंस को और स्ट्रॉन्ग बनाया गया है ताकि वो एक डेटरेंट हो और लोग जो रेगुलेशंस के वायलेशंस ना करें, और एक यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो जो है उसको लॉन्च किया गया है। इसके अलावा जैसे कि चेयरमैन सर ने बताया कि हमने एक प्रावधान दिया है कि जो फार्मर्स पीजीएस में सर्टिफाइड है मोर देन 3 years एंड मोर, वो फार्मर्स को डेरोगेशन मिल जाएगी इन द कन्वर्जन पीरियड। तो वो डायरेक्टली अगर 3 साल की अवधि वो पूरी कर चुके हैं अंदर पीजीएस सर्टिफिकेशन में, कोई कंप्लेन नहीं है, तो दे कैन डायरेक्टली गेट ऑर्गेनिक स्टेटस। सिमिलरली अगर कोई हिली एरियाज़ में है तो हिमालयन स्टेट्स के हिली रीजन्स जो नेचुरल है, अगर 3 साल से ज़्यादा, तो उनको भी डायरेक्टली ऑर्गेनिक स्टेटस मिल सकता है। लेकिन उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो फुलफ़िल करने की ज़रूरत है, जैसे कि जियो लोकेशन है, जियो टैगिंग, टेस्टिंग ऑफ द लैंड, उनके कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस को सर्टिफिकेशन बॉडी चेक करेगा, उसके बाद ये डेरोगेशन दी जाएगी बाय अ कमेटी। एनपीओपी लोगो जो है बिफोर 2014 में जो था उसमें डोमेस्टिक मार्केट में 2 लोगोज़ लगाने की ज़रूरत थी, लेकिन अब ये दोनों लोगोज़ मर्ज हो गई हैं और एक्सपोर्ट्स के लिए इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं और डोमेस्टिक मार्केट में बहुत शीघ्र ही इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट्स जो है हमारा 665 मिलियन था लास्ट ईयर, एंड सारे प्रोडक्ट कैटेगरीज जो है वो एक्सपोर्ट होते हैं। इंडिया जो है सेकंड है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर लैंड में और फर्स्ट है इन द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, एंड हमारा एक्सपोर्ट्स भी had grown and 35%, almost 34.5% के वैल्यू रेट्स पे इंक्रीज़ हुआ है लास्ट ईयर, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव ट्रेंड। छत्तीसगढ़ में जो एरिया है वो 6,822 एरिया था, फार्म एरिया ऑर्गेनिक प्लस इन कन्वर्जन, जो सर्टिफाइड था 24-25 में, एंड बहुत सारे प्रोडक्ट्स जैसे नॉन बासमती राइस है, मिंट है, अश्वगंधा, एमरेंथ, ये सारे सर्टिफिकेशंस में कवर्ड हैं। टोटल ऑपरेटर्स 47 हैं, तो देर इज़ अ गुड स्कोप जो बढ़ाने के लिए। छत्तीसगढ़ में 9 सर्टिफिकेशन बॉडीज़ काम कर रही हैं, जिसमें 2 स्टेट सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं, छत्तीसगढ़ सर्टिफिकेशन सोसाइटी एंड छत्तीसगढ़ स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी। छत्तीसगढ़ में जो मेन एरिया है वाइल्ड कलेक्शन में सेकंड है इंडिया में छत्तीसगढ़ अंडर सर्टिफाइड वाइल्ड एरिया। सो वाइल्ड कलेक्शन में ये होता है कि जो वाइल्ड फॉरेस्ट एरिया होते हैं वहाँ से प्रोडक्ट्स को कलेक्ट किया जाता है और विदाउट डिस्टर्बिंग द बायोडाइवर्सिटी। वाइल्ड हार्वेस्ट एरिया इन छत्तीसगढ़ में, उसमें प्रोडक्ट्स में अश्वगंधा रूट्स, आंवला, हरितिका, ये सब चीज़ें वाइल्ड कलेक्शन में कवर हुई हैं। 11 वाइल्ड ऑपरेटर्स हैं छत्तीसगढ़ से जो आज की तारीख में एनपीओपी में सर्टिफाइड हैं। वाइल्ड कलेक्शन की भी रिक्वायरमेंट्स जो है एनपीओपी में स्पेसिफाइड हैं कि उसमें फॉरेस्ट का एक मैप होता है जहाँ से कलेक्शन एरिया निर्धारित होती हैं और कि कितनी क्वांटिटी, कौन से प्रोडक्ट्स की कितनी क्वांटिटी वो ले सकते हैं जो सस्टेनेबिलिटी को डिस्टर्ब ना करे। तो वो सारी चीज़ें सर्टिफिकेशन बॉडी चेक करते हैं और वो फॉरेस्ट नेचुरल होने चाहिए, उसमें किसी भी किस्म का कोई ट्रीटमेंट या वो नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट फॉर 3 years एंड मोर। और अगर फॉरेस्ट एरिया में कोई कल्टिवेशन हो रहा है तो वाइल्ड कलेक्शन में नहीं जाता है, वो फिर क्रॉप प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स की प्रैक्टिसेस ही फॉलो करनी पड़ती हैं। सो वे फॉरवर्ड हमारा है कि हम लोग अभी निरंतर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स ये सारे करा रहे हैं, तो सो दैट एनपीओपी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम जानकारी उपलब्ध करा सकें।
वीडियोस बना रहे हैं फार्मर्स के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द NPOP रिक्वायरमेंट्स। यूट्यूब चैनल्स में भी हमारी वीडियोस हैं NPOP के रिक्वायरमेंट्स के बारे में। बड़े इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स में बड़े पैमाने पे हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अपने ऑर्गेनिक एक्सपोर्टर्स पहले जाते थे, अब एक्सपोर्टर्स FPO सबको लेके हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और एक USA में होता है नेचुरल प्रोडक्ट्स एक्सपो वेस्ट। इसके अलावा हम और भी अपने टेक्निकल एंगेजमेंट्स जो है इंपोर्टिंग कंट्रीज़ के साथ हमने बढ़ाई है, जैसे कि EU के साथ हम अपना रिन्यू करने के लिए एनहांस्ड एग्रीमेंट के लिए नेगोशिएशंस कर रहे हैं। सेम विद न्यूजीलैंड एंड इवन हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। और हमें पूर्ण उम्मीद है कि इन सब प्रयासों से हम अपने देश की ऑर्गेनिक जो उत्पाद है उसको वर्ल्ड में एक अच्छे स्थान पर जगह पर पहुंचा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। और यही इस कार्यक्रम की खूबसूरती है। देखिए कि हर स्पीकर को जब हम यहाँ पर सुन रहे हैं, हर प्रेजेंटेशन जब हम देख रहे हैं और हर पैनल डिस्कशंस जब यहाँ पर हो रहे हैं, तो अलग अलग चीज़ें, बातें, पॉइंटर्स सब कुछ निकल कर सामने आ रही है। इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट का ये आयोजन यहाँ पर हो रहा है, जिसका ये 2nd एडिशन है। थिंक राइस थिंक इंडिया का ये प्रोग्राम और टेकिंग इंडियाज़ राइस स्टोरी टू द वर्ल्ड, इसी मोटिव के साथ में, इसी पर्सपेक्टिव के साथ में हम लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और सभी एक्सपर्टीज़ को भी सुनने का, जानने का मौका यहाँ पर मिल रहा है। और चलिए अब हम मिसेस संजिता गुप्ता जी, IFS एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर CG स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन से अब हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मैम अपना प्रेजेंटेशन दें। मिसेस संजिता गुप्ता जी, IFS। Good evening, everyone. Respected dignitaries on stage, Abhishek Dev ji, Vinita ji, I was connected in the very last moment, so with a different flavor other than rice, I will be talking on minor forest produce and how we are connecting the tribals to forest department and the livelihood increase. So I will speedily go through it. This is the potential of MFP in the forest department. We have medicinal plants, we have lot of forest-based forest produce, and we have studied this, and we have 13.2 lakh cooperative members. We are a cooperative, we are Chhattisgarh Forest Produce Cooperative Federation. So we have 13.02 lakh cooperative members who are working with us on forest produce. And this is the maximum number of people who are working with are women. The women who are living around the forest dwellers in the villages. So we have connected 70,000 women members and women SHGs to our for the minor forest who are working with the minor forest produce, their primary processing, their collection, their secondary processing. So minor forest produce federation, we have the best product is honey. Honey is, we have organic honey, organically certified honey from in our state, and a lot of food products also we are making, then Ayush products, medicinal plant products. Then we have our labs, and we are using NABL labs also for testing the material. It is organic certified, and quality products are there, and all the products are certified. We are taking the help of our technical partners, our IITs and IIRS, CFET, Ludhiana and IMR. So these are the products. We are making 156 products for which are all, not all are organic certified, but these are collected from forest only. So
we are in the process of organic certification of all of them. We are almost, we have certified, organic certified 16 raw herbs. We have central processing unit also, which is a very big unit, and we have a lot of infrastructure where we can do our organic certification, we can make our organic certification products. Then honey is the major product which we, which we have done organic certification, and this product we are doing non-sustainable harvesting. हम इस पे नॉन सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग से इस प्रोडक्ट को, हनी को हम जंगलों से इकट्ठा करते हैं, और ये पूरी जो जितना भी शहद है ये हमारे जंगलों का शहद है, और हम इसका ट्रेनिंग करवाते हैं, और हमारे जो लोकल लोग हैं सब वो जाके जंगलों में इसको कलेक्ट करते हैं, और पूरा छत्ता हम नहीं काटते हैं, आधा छत्ता काटते हैं, उस शहद निकालते हैं ताकि मक्खी भी न मरे और नॉन डिस्ट्रक्टिव हार्वेस्टिंग हो। तो ये हमारे बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं जो हम बनाते हैं। देन हमारा जो मेनली हम ट्राइबल्स के साथ काम करते हैं, जंगलों में रहने वाले लोगों के साथ काम करते हैं, तो ये उनको मुख्य धारा में लाने का और उनके लाइवलीहुड बढ़ाने का ये बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारा फेडरेशन। और हमारे हम लोगों का कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, उनको ट्रेनिंग कराते हैं, उनको मशीनरीज दे के उनसे जो प्रोडक्शन होता है उनका प्रॉफिट उनको देते हैं। तो ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन इस पर काम कर रहा है विमेन एसएचजीज के साथ। इसके अलावा हम एनवायरनमेंट सस्टेनेबल और कई सारे हमारे चीज़ें हैं जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें खास करके हनी है, और भी जो आयुष को हम प्रोडक्ट्स बना के देते हैं मेडिसिनल प्लांट्स के, तो वो सब भी क्योंकि सीधा जंगलों से निकलता है तो उसका जल्दी ही हम ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन करा के उनके एक्सपोर्ट का भी आगे कार्य कर सकते हैं। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ अभिषेक जी की, जो उन्होंने आज मेरे को बहुत सारे हम लोगों को गाइडेंस दिए, जिससे आगे हम इन ट्राइबल्स के लिए और भी बहुत अच्छा काम कर सकेंगे। हमारे पास कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी है, जो हमारा मेन सेक्टर है, जहाँ पर हम ऑर्गेनिक सर्टिफाई करके हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। टैमरिंड एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है जो बस्तर एरिया, जो सबसे पिछड़ा इलाका कहा जाता है, वो वहाँ पर होता है, और वहाँ मोस्टली जितने ट्राइबल्स हैं वो इसका कलेक्शन करते हैं। तो टैमरिंड इमली का हम जीआई टैग के लिए भी अभी काम कर रहे हैं सीफेड लुधियाना के साथ। इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। फिर ये हमारा चिरौंजी है, ये भी ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है, ये हमारा ये भी बहुत अच्छे बहुत हाई रेट में मिलता है। इसके अलावा मेडिसिनल प्लांट्स का बहुत अच्छा पोटेंशियल है हमारे पास, और जिसमें काफ़ी काम हम आगे भी कर पाएंगे। एंड वी आर स्प्रेडिंग स्माइल्स इन ट्राइबल कम्युनिटीज़। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। और एक एक करके हमने अपने सभी स्पीकर्स और गेस्ट को यहाँ पर सुना है, और अब बारी है फेलिसिटेशन की। तो सबसे पहले अभिषेक देव जी, चेयरमैन अपीडा, को फेलिसिटेट करने के लिए हम नितिन गुप्ता जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि नितिन गुप्ता जी मंच पर आएं। नितिन गुप्ता जी, आप फेलिसिटेट करेंगे अभिषेक देव जी, चेयरमैन अपीडा। और साथ ही संजिता गुप्ता मैम, जो कि हमारे साथ में बनी हुई हैं, और उनकी डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक छोटा सा भेंट जो कि अभिषेक सर को यहाँ पर दिया जा रहा है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर छत्तीसगढ़ स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फेडरेशन, मिसेस संजिता गुप्ता जी, IFS। CG हर्बल का ये प्रोडक्ट है जो कि उन्हें भेंट स्वरूप यहाँ पर दिया जा रहा है। IAS अभिषेक देव जी, चेयरमैन अपीडा को, और साथ ही साथ में नितिन गुप्ता जी की ओर से फेलिसिटेट हम कर चुके हैं। थैंक यू सो मच।
और साथ ही साथ अब सीजी हर्बल का ये प्रोडक्ट हनी के जार्स सभी को यहाँ पर दिए जा रहे हैं। ऑर्गेनिक की जब बात आती है, क्योंकि आजकल का ज़माना मिलावटी है और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि ऑर्गेनिक और प्योर नहीं मिल पाती है, तो जब बात प्योरिटी की आती है, ऑर्गेनिक की आती है, तो उसमें सीजी हर्बल का नाम सबसे पहले कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ स्टेट में और सभी जगह पर आता है और वर्ल्ड वाइड ये ब्रांड, ये प्रोडक्ट अपनी पहचान बनाता जा रहा है। थैंक यू सो मच। मिसेस संचिता गुप्ता जी IIFS को फेलिसिटेट करने के लिए नीरज कुमार जी को हम इन्वाइट करते हैं। नीरज कुमार जी, प्लीज़ कम अप ऑन द स्टेज। आप आएँ और मिसेस संचिता गुप्ता जी को आप फेलिसिटेट करेंगे। नीरज कुमार जी फ्रॉम आदित्य बिरला ग्रुप, आप फेलिसिटेट करेंगे IIFS मिसेस संचिता गुप्ता जी। मिसेस विनीता सुधांशु जी को फेलिसिटेट करने के लिए अमोल मेश्राम जी को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ मंच पर आएँ। अमोल मेश्राम जी, रिलायंस ग्रुप से अमोल मेश्राम जी को हम इनवाइट कर रहे हैं कि आप आएँ और मिसेस विनीता सुधांशु जी, जनरल मैनेजर अपीडा, को आप फेलिसिटेट करेंगे। थैंक यू सो मच सर। अमोल मेश्राम जी से रिक्वेस्ट कि आप विनीता सुधांशु जी को आप फेलिसिटेट करेंगे, जनरल मैनेजर अपीडा। जतिन महाजन जी को हम रिक्वेस्ट करते हैं। अडानी ग्रुप से जतिन महाजन जी हमारे बीच पहुंचे हुए हैं। आपसे दरख्वास्त कि आप आएँ और डॉक्टर सरस्वती बोस जी को आप फेलिसिटेट करेंगे। अडानी ग्रुप से जतिन महाजन जी, डॉक्टर सरस्वती बोस जी को आप फेलिसिटेट करेंगे। सभी गेस्ट को आज देखिए, इसी कार्यक्रम की खूबसूरती है कि जिस जगह पर, जिस प्रदेश में हम और आप सभी यहाँ पर मौजूद हैं और राइस समिट जैसा ये बड़ा और वृहद शानदार ये आयोजन हो रहा है, जिस चीज़ के लिए छत्तीसगढ़ जाना जाता है, धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं, और ऐसे में हम अपने सभी गेस्ट को छत्तीसगढ़ की जिससे पहचान है, यानी कि कोसा जिसके नाम से छत्तीसगढ़ जाना जाता है, और साथ ही साथ में मेमेंटो के तौर पर जो छत्तीसगढ़ की प्रमुख कला है, जिसकी खासियत छत्तीसगढ़ है, उसे भी हम फेलिसिटेट कर रहे हैं और सभी गेस्ट को हम उपहार स्वरूप यहाँ पर भेंट कर रहे हैं। सौरभ उडानी जी ईडी से हम आपको इनवाइट करते हैं स्टेज पर कि प्लीज कम अप ऑन द स्टेज। एक बुक को हम रिवील यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए, सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, और आप यहाँ पर आए और आपने सभी ने एक एक करके अपना प्रेजेंटेशन दिया है। थैंक यू सो मच। और अब हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले पैनल डिस्कशन की ओर, और सरस्वती मैम आपसे दरख्वास्त है कि आप प्लीज़ बने रहें हमारे साथ में, क्योंकि ये जो अगला पैनल डिस्कशन होना है उसमें बतौर पैनलिस्ट आप भी यहाँ पर शामिल होंगे। एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि तब तक एक ग्रुप फोटोग्राफ यहाँ पर सभी गेस्ट के साथ। ये सुंदर पल और ये क्षण हमेशा के लिए तस्वीरों पर कैद हो जाए, इसी के लिए हम एक ग्रुप फोटोग्राफ यहाँ पर कर रहे हैं, ताकि जब भी ये तस्वीर देखी जाए तो ये पल, ये कार्यक्रम यादों के रूप में हमेशा ताज़ा हो जाए। तो इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट का ये सुंदर आयोजन, सेकेंड एडिशन इसका हो रहा है और पहले दिन का आज आगाज़ हो चुका है। बड़े बड़े एक्सपर्टीज़, डिग्निटरीज को जानने का, सुनने का मौका यहाँ पर मिल रहा है, और हम सभी की एक खुशकिस्मती है कि सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सभी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स लोग यहाँ पर आए हुए हैं और उन्हें हम सुन रहे हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले पैनल डिस्कशन की ओर में। पैनल डिस्कशन जिसमें की इनेबल्स फॉर नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट्स, थीमेटिक फोकस एरियाज, एक्सपोर्टर्स, लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट्स, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड पॉलिसी सपोर्ट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, ये इसका सब्जेक्ट होने वाला है इस अगले पैनल डिस्कशन का, और इसी के इर्द गिर्द ये पूरी बातचीत होगी, जिसमें बतौर पैनलिस्ट इस पूरे पैनल डिस्कशन का जो हिस्सा बनने जा रहे हैं, सबसे पहले डॉक्टर सरस्वती बोस जी, जनरल मैनेजर अपेडा, और इनके बाद में मिस्टर अनुपम कौशिक जी, मैनेजिंग डायरेक्टर NCEL, मिस्टर अनुकूल जोशी जी, CEO नेचर पर्ल्स प्राइवेट लिमिटेड,
Mr. Anil Jadhav ji, Regional Director, ECO CERT India Private Limited, Ms. Swati Tomar ji, AGM International Sales Nature Bio Foods। और इस पैनल डिस्कशन को जो मॉडरेट करेंगे वो हैं मिस्टर रामकृष्णन एम, प्राइमस पार्टनर। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी कृपया स्टेज पर आएं। अगले पैनल डिस्कशन की ओर में अब हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक इस पूरे पैनल डिस्कशन का यहाँ पर हो रहा है, जिसमें की इनेबल्स फॉर नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट्स, थीमेटिक फोकस एरियाज, एक्सपोर्टर्स, लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट्स, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड पॉलिसी सपोर्ट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को लेकर ये पूरी बातचीत सभी एक्सपर्ट्स के बीच में, सभी पैनलिस्ट के बीच में यहाँ पर होगी। इस पैनल डिस्कशन को जो मॉडरेट करेंगे आप हैं मिस्टर रामकृष्णन एम, और बतौर पैनलिस्ट जो इस पूरे पैनल डिस्कशन का हिस्सा बनेंगे, अपनी पॉइंटर्स रखेंगे, अपनी बातें जो रखेंगे, आप सभी पैनलिस्ट के तौर पर शामिल होंगे। मिस्टर अनुपम कौशिक जी, मैनेजिंग डायरेक्टर NCEL, डॉक्टर सरस्वती बोस जी, जनरल मैनेजर अपीडा, मिस्टर अनुकूल जोशी जी, CEO नेचर पर्ल्स प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर अनिल जाधव जी, रीजनल डायरेक्टर ECO CERT इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मिस स्वाति तोमर जी, AGM इंटरनेशनल सेल्स नेचर बायो फूड्स। तो सभी गेस्ट और पैनलिस्ट यहाँ पर आ चुके हैं। सो नाउ over to you all. Godless. Ram. Hello. Yeah. Should we start? Good evening, ladies and gentlemen. I appreciate the patience of the audience. जैसे कुछ लोगों ने last conversation में भी बोला था, इतने देर से लोग बैठे हुए हैं. Given that it is kind of late evening, I'll take a little bit of a privilege and talk about beer in the evening. Quick raise of hands. How many of you have had rice beer, please? Rice-based beer. Okay, well, I see only one hand. या किसी ने okay, 2, 3, 4, very few. तो I think as a rice ecosystem, member, all of you should try rice-based beer. It's wonderful. तो simple analogy जो कई बार बात किया जाता है कि you have a mug of beer, उसमें किसी ने थोड़ा सा beer डाला है. देखने का नज़रिया है कि बियर मग भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है या आधा खाली है. एंड जितना अभी हमने बात किया है, वेरी क्लियरली इट इज़ ओनली पार्शली फुल व्हेन इट you look at organic rice and the amount of progress we have made. So the purpose of this conversation is how do you fill up, कैसे भरा जाए उसको. So that's the overall context setting, so to say. So maybe Anukul, we'll start with you. I know many organizations have been involved in working with farmers in strengthening the overall ecosystem. So from your experience, what will make it more effective for the sustainable growing of organic rice and kind of making the ecosystem better? Thanks Ram for the question, and I would want to take this opportunity to thank the organizers to get me on the panel. Great opportunity to be here and share my views. I think the organic rice segment, जो data हमने देखा आज और जो सर बता रहे थे, एपिडा चेयरपर्सन श्री अभिषेक देव जी जो बता रहे थे कि ये वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस नहीं है, ये कहीं ना कहीं ये वैल्यू ड्रिवन होना चाहिए और कहीं ना कहीं कंज्यूमर ड्रिवन होना चाहिए. कंज्यूमर आज क्या हमें बता रहा है, क्या मांग रहा है हमसे, आप कहीं ना कहीं देखेंगे कन्वीनियंस मांग रहा है, सस्टेनेबिलिटी मांग रहा है, चीज़ें अलग ढंग से मांग रहा है जो आगे बढ़ गई हैं. ऑर्गेनिक खुद में एक वैल्यू एडिशन है और उसके ऊपर अब और वैल्यू एडिशन मांग रहा है इन टर्म्स ऑफ
हम क्या दे सकते हैं, जैसे कि पहले होता था रीजनरेटिव ऑर्गेनिक का बड़ा ही एक सर्टिफिकेशन है जो अच्छा है अगर आपके पास है, बट अब मस्ट हो गया है। नेटरलैंड है, फेयर ट्रेड है, ये सब अब मस्ट होने लगे हैं, तो कंज्यूमर हमसे और मांग कर रहा है। तो इसमें जो स्ट्रैटेजी अपीडा ने लगाई है आज तक ऑर्गेनिक राइस को लाने के लिए, वो प्रशंसनीय है, काफ़ी आगे तक लेकर आए हैं। बट जो नेक्स्ट फेज़ है ग्रोथ का, जब हम कहते हैं कि हमें किसानों लेवल पे, किसान के लेवल पे काम करना है और क्लस्टर बेस्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाना है, वो सही रास्ता है। बट उस राह में चलने के लिए हमें बासमती में हमने वो वैल्यू ड्राइव किया है। आज हम पाकिस्तान से ऊपर बेच सकते हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करते हैं। तो ट्रेडिशनल बासमती आज एक इंडिया की बहुत बड़ी फ्लैगशिप प्रोडक्ट बन गया है वर्ल्ड ओवर। बट इसके अलावा ऐसी कौन सी जेनेटिक्स है, ऐसा कौन सा वैरायटी है जो इंडिया सही मायने में आगे ले जा पा गया अदर देन बासमती? तो नॉन बासमती सेगमेंट में खूब अपॉर्चुनिटी है। क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग में हमें कहीं ना कहीं एक विचार ये लाना पड़ेगा कि हम एक क्लस्टर को किसान के नंबर से और एकड़ से ना नापें, क्या ग्रो कर सकते हैं, किस मात्रा में ग्रो कर सकते हैं, वो कंज्यूमर को कैसे वैल्यू ऐड कर सकता है। हमने आज सुबह से बहुत सारी चीज़ें सुनी, न्यूट्रिशनल कैपेसिटी बढ़ सकती है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो सकता है। ये सारी चीज़ें अगर प्रमोट करनी है तो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने में इनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। काला नमक की आज बहुत बात हुई, जीरा शंकर की बहुत बात हुई, ये बहुत सारे वैरायटीज़ की आज बात हुई, पर इनके पैमाना जो जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक स्केलेबिलिटी, वो कमर्शियल वायबिलिटी बहुत छोटी है, क्योंकि उस पैमाने में नहीं ग्रो हो रहा कि हम उसको इकोनॉमिकली वायबल बना पाएँ। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है अदर देन क्लस्टर जेनेटिक्स का। हम साइंटिस्ट से बात करते हैं, कमर्शियल वायबिलिटी नहीं आती है। साइंटिस्ट बहुत सारी रिसर्च करते हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ की आज बात हुई है, इसकी कमर्शियल वायबिलिटी हमें लाना बहुत ज़रूरी है। हर क्लस्टर में हर वैरायटी नहीं हो पाती, इसलिए जीआई टैग्स हैं। हर जगह का एक जीआई टैग है, चक्काओ का नॉर्थ ईस्ट का टैग होगा, यहाँ पे कोई और राइस का होगा, काला नमक का यूपी का, बहराइच का टैग होगा। तो जीआई टैग्स है इसलिए एसोसिएटेड है क्योंकि कुछ जेनेटिक्स किसी ही मात्रा में वो ग्रो कर पाते हैं और उसी एरिया में, उसी क्लस्टर में ग्रो पाता है। अब उस क्लस्टर को इतना बड़े पैमाने में करें और उसका एक वैल्यू प्रोपोजिशन दुनिया को दिखाएं कि हम ये चीज़ आगे बढ़ा सकते हैं। और लास्ट चीज़ जो मुझे लगता है जो हमें करना चाहिए वो है इंटीग्रेटेड प्रैक्टिसेस पे। कहीं ना कहीं क्वालिटी जो है वो हम वर्ल्ड का क्वालिटी पैरामीटर्स मैच नहीं कर पा रहे हैं जो बाकी कंट्रीज कर पा रही हैं। उसको मैच करने के लिए हमें कहीं ना कहीं प्रैक्टिसेस पे सुधार लाना पड़ेगा, स्पेशली पोस्ट हार्वेस्ट पे। जब हमारा मॉइस्चर ज़्यादा हो जाए तो आपको ऑक्लाटॉक्सिन, एफ्लाटॉक्सिन के इश्यूज आने लगते हैं। मॉइस्चर कम हो जाए तो ब्रिटल हो जाता है, ब्रोकन हो जाता है, यील्ड्स कम हो जाती हैं, प्राइसेस आगे बढ़ जाते हैं। कहीं ना कहीं इस सबको फोकस का अगर आप देखेंगे सोर्स किसान और फार्मिंग पे है। अगर हम उसको स्ट्रेंथन करें, सही प्रैक्टिसेस करें, लो नाइट्रोजन के प्रोडक्ट्स या वैरायटीज़ लाएं और उनको प्रमोट कर पाएं, आई थिंक वहाँ पर हमें अब नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ देखना चाहिए। वंडरफुल। आई थिंक पीओपी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस टिपिकली प्री हार्वेस्ट में ज़्यादा बात किया जाता है। यू मेड अ वेरी वैलिड पॉइंट अबाउट हाउ सर्टन क्रिटिकल इंटरवेंशंस आर नीडेड पोस्ट हार्वेस्ट एज वेल. Anil, we just spoke about production and value addition and quality. Assuming these things are done, then comes certification, right? So because you're running a certification process, you're running a certification business, how do you see that contributing to the farmers in growth in exports? Hello. So just to make it simpler and easy to understand for everyone, I just want to make one point. Number one, as a certification body, we have the highest responsibility because I consider CBs have two responsibilities primarily, and the first one is we are the gatekeepers of compliance, and second, we are practical custodians of the standards. Why I'm saying practical? Because legally and as per law, the custodians are either authorities in the countries or the standard owners. In case of NPOP, which is India's standard for exports, it's APEDA. But we are the custodians of the standards. So how it works? If the gatekeepers, which are CBs, the compliance gatekeepers, we do not have proper checks and balances,
the goods and products which goes to consumer, they are at risk. And if we don't do our job properly, we lose the custody of the standard. And that's how I can sum up this whole scenario. And when I come to the role of CBs, we are responsible for the credibility. And how the credibility comes, we do annual audits, unannounced audits. We do check samples from the field and the process. We do lab testing. We maintain the records of all the processes. And we also maintain traceability by asking documents, evidences, while we issue the transaction certificates for companies to move product from point A to point B. When we do that, we also do rigorous compliance as far as lab test reports are concerned, the travel document, transport documentation, all these are checked. And just like Dr. Saraswati Bose said, India was the first country to develop total traceability online, which most countries doesn't have. European Union has just started it. So that traceability, which is online, is the best tool available to see everything which grows from the farm till it goes to the consumer. And this actually helps to see a consumer or a brand where from the product is coming, and the CBs maintain all the data of the traceability. Certification bodies are also responsible for market of the products, market access. So for example, if CBs have NPP certification for the companies, they can export to different countries. And also you can export to Japan, Brazil, Mexico, if you have accreditation for those schemes. So accreditation bodies and the schemes you own as a CB, that actually helps the exporters to ship their produce across the world. So this is second advantage. Third advantage or the important role of CBs is when the produce and the companies are doing organic farming, we do checks and test the produce and the compliance. So when the produce reach destination countries, there are no rejections. Because when rejection happens, that comes back as a black spot first to the company, and probably if the volume of complaints are increasing, that becomes a black spot for the country itself. So that is again a very important role CB has to play. Third thing is, as we all know, organic food is the only commodity which is regulated globally. So everything which goes outside of India, that needs to be compliant with the consuming country's requirement. And that's where CBs also play a very important role in educating the companies involved, the farmers involved. So as a CBs, we also educate them what are the requirements in the countries they are exporting. So, and the fourth point, which again is a very important point, in India we have group farming because of the land holding is very small, which is we call ICS or group farming. This enables small farmers to be participating in the organic farming and reduce the cost of certification. So the good job CBs do, you actually encourage lot of small marginal farmers into chain of the supply chain, and that becomes a very good motivation. And because there is a bunch of farmers which come to do organic agriculture, the consolidation, marketing, everything's become easier. So I think the CB's role as a whole is extremely important as the image of the country, of the product, and overall compliance. Thank you. Thank you. Thank you for that elaborate answer. Swati, you look at international markets. Let's say we got the production right, let's say we got the certification right, and now you're talking to the international buyers. And especially in the global markets, one is the paper-based certification, but more importantly, there is this question of trust. Can I really rely on what is coming my way, so to say? So how do you see that panning out, and how do you build trust with the buyers for all these kind of products? Thank you, Ram. Thank you, everyone, for this opportunity. Very obliged. Ram, you know, the question that you have asked me, it's actually very, very close to my heart, because when we face the customers, trust is something that bases this trust only they buy from us. But yes, let me put a question back to all of you. How many of you will buy a product
just basis a document and certification. Not to offend you, I'm just finishing my line. But yes, we trust more when we see it from our own eyes. जब हम देखें कि ये कौन उगा रहा है, कहाँ उग रहा है. तो आज अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया exports around 50 to 60,000 metric tons of organic rice. When we compare this to conventional rice, it sounds very, very less. But when we talk about challenges, they are very high. Expectations are extremely high. Every time, sometime Europe will come up with a new regulation, sometime US will come with a new regulation. And yes, we are able to fulfill those requirements. We all, Indians, we should be very, very, very proud of that. India is very well established with the standards, but traceability goes beyond the certification, beyond documentation. When we talk about the trust, what we do at Nature Biofoods is we bring in our customers, we bring in our buyers, and we take them to our farms. They meet the farmers, and believe me, जब वो farmers से मिलते हैं ना, तो ये customer और buyer और seller वाली बात होती ही नहीं है. They enjoy interacting with farmer. They enjoy our culture. And this brings in more trust when they see their farming practices, which all of us, we are helping the farmers to learn the training. They promote it. They go to an extent that they help, by funding the trainings and by funding their requirements, their needs, their necessities. That is what trust is. So yes, certification, documentation, it's very, very important. But when we talk about trust, आँखों से देख के दिल में उतर जाता है. Lovely, lovely. Anupam, the last time we met, you made a very interesting comment that your focus is not to get more subsidies into the cooperatives, but to make them more effective, more performance oriented, and to kind of increase the effectiveness of exports. We are in Chhattisgarh and we've been hearing about, the strength of the local market, the production and the organic specific GI varieties and so on and so forth. So given the strengths of Chhattisgarh, what opportunities do you see for the export of the cooperative movement over here? Chhattisgarh has a very profound legacy of, I would say, tribal culture, which is cooperative in its foundation. So I think one need not teach the farmers of Chhattisgarh about the cooperative foundation and the spirit of sharing the efforts to maximize the outcome, because it has been primarily the tribal belt of central India. And it has been kind of blessed with the kind of microclimate and the practices because of which it has been able to retain its pristine characteristics despite many other agricultural land has lost it. So I think it will be much easier to have a value chain coming out of Chhattisgarh, the principles of offering organic value chain, organic products from Chhattisgarh in various commodities, because it has, I would say, a negative handicap. It's a positive in that sense that they're ahead of many other regions, that their soils are still pristine, and the effort that would be needed to make it certified, produce certified project would be much lesser in comparison to any other landmass, if we talk about other central Indian or the northern Indian states. Now coming to the cooperative thing, I think the organic value chain, as Mr. Umar has just mentioned, that it is the relationship between the producer and the consumer which makes it valuable for the consumer, because he is aware that somebody has actually taken extra care in delivering a product
which is devoid of any of those modern science wonders, modern science wonders in the negative sense. So I think the entire value chain has to be imagined and to be created in Chhattisgarh on the lines of Amul. This is it's an oft repeated argument in our discussions on cooperative, that today we look at Amul, which is one of the most successful cooperative example in this part of the world, which has a 90,000 crore rupees of top line coming from close to around 36 lakh dairy farmers of Gujarat. And the beauty of that 90,000 crore is that 85% plus value of that 90,000 crore top line goes back to the farmer. So that's the trust which the dairy farmer puts back into his or her enterprise in producing good quality milk and pulling it day in and day out. So as it reaches the consumer in the same manner and intent with which the producer has done it. So I think the Chhattisgarh stands at an advantageous position in comparison to some of the other neighboring states, and it has the legacy of certain very valuable products which is easy to find market both locally as well as globally. And my sense is that if the relationship through a cooperative structure reaching out to the global consumer is transparent, where the value sharing for the producer is transparently explained and understood by both the value chain component members, consumer as well as the producer, I think Chhattisgarh can become a test case or a success case for a state turning organic in large part, not to the limited organic land as it stands today. I think more and more land can get converted with much lesser effort. Wow, I think we need a big round of applause. This was almost like an inauguration speech in terms of, turning the state into an organic field. Wonderful. All the very best to Chhattisgarh on that front. Dr. Bose, thanks for the detailed presentation which you made, and you made a reference to a relatively new or recent signing of MRA with Australia. One of the issues which a lot of growers as well as exporters have is compliance, both from a process point of view as well as from a cost point of view, just keeps getting more and more difficult every day with the regulations and geopolitics being what it is. But how do you think these kind of MRA and other agreements will make it easier for the ecosystem? That's a very valid question. For organic trade across the globe, we need to meet certain compliances, because organic comes under the technical regulations that each country have their own technical regulations for organic certification. So when we export to a particular market, for example, Europe, then we have to comply with their regulation of organic regulations. Similarly, in US and other countries. So some countries, they don't have their own regulations, so they do accept the internationally, globally accepted regulations. Now, if India has its own regulation, NPOP, National Program for Organic Production. So an operator has to comply to the national regulation, of course, and then you have to, when you are exporting to another country, you have to comply to that country's regulation as well. So if you have a mutual recognition agreement or a recognition agreement with them, then your regulation is accepted. For example, we have a equivalency with European Union for unprocessed plant products. So under NPOP certification, any unprocessed plant product is accepted in EU, and you don't have to take another certification under EU regime. So this reduces the cost. It reduces the compliance requirements, because the certification time and other things, inspections, because a lot of time goes
in double inspections and the cost and waiting time and so many things are there. So we have been consistently making efforts to enter into such kind of agreements. Taiwan, like we had, it was implemented in 2024. With that, and because it is the first mutual recognition agreement that we had, earlier the NPOP notified in 2001 was for exports only. We did not have a domestic regulation. So that is why it was a unilateral recognition which we have with the EU since 2006. But in 2017, when FSSAI has implemented NPOP for domestic as well. So now we are in a better position to negotiate, because in our agreement it's always give and take. Like when we are exporting, they are accepting our regulation. We also tell them that our market is open for their products. So this has been a great advantage, and Taiwan was one of the agreements which we first negotiation, which is a mutual recognition agreement. And it will also help in value addition, because there are many flavors and any products which are there in these countries, in Taiwan, in Australia, which can be imported, and even New Zealand, and then value added product can be prepared for re-export. So it will definitely, besides reducing cost and compliance requirements, definitely will lead to value addition and expand the export basket. Thank you so much. ये चिंतन शिविर है, ज्ञानबाजी वाला सेशन नहीं है. And it's important to get inputs from the audience. So I think now I would open up for questions from the audience. Anything you want to raise for anybody here, or from any questions from the audience? Yep. Can someone please pass a mic there? Sir, I would request you to introduce yourself and then please state your question. Yes. Myself, CA Amit Agrawal. I am the treasurer of TREACG, and we are honored to have you all esteemed guests here. My question is very simple, that for the last 24 years, we are planning to boost the export of or production of organic rice or organic products. So what steps have been taken to curb the use of extensive pesticides which are banned across the world but are permitted in India? So any essential step has been taken in that direction? Please elaborate. Bose ma'am, do you want to take that? Actually, doesn't come under our purview as such, but it comes under the purview of Ministry of Agriculture. But yes, जो परमिटेड हैं वो CIB-RC से रजिस्टर्ड होते हैं, जो नहीं होते हैं आप उसमें लेबल क्लेम्स जिसके लिए होते हैं ना, you can raise a complaint if some product is being unauthorized use of pesticides. But yes, we have taken also initiative for doing sensitization program on good agricultural practices. So वो initiative हम PIDA ने भी लिया है, plus along with the state governments, because apart from organic, this is more of a conventional question, not for exactly organic, because organic में तो pesticides and chemicals are not allowed, and this is specifically checked. So if somebody is following organic practices, then they have to religiously follow it and not use any pesticides and chemicals. But for the conventional products, you have to also, that is also MRL levels are there. So there are export rejections when you exceed those MRL levels, and that is why there are a lot of sensitization programs for good agricultural practices, so that there is a judicious use of chemicals and pesticides, and that programs takes place through various state governments, and even we are also doing these programs in association with the state governments and also the exporters, because they are doing a buyback arrangements, and we have traceability systems made for major exported products like grapes. We have a grape net and all. So in these major exported products, we register the farmers and we ensure that they get all the proper hand holdings and the trainings and capacity buildings, so that ये जो usage है वो कम हो, और बाकी जो unauthorized use है, yes, with the awareness and sensitization, they will
would be better in a position not to use these chemicals. So far as organic is concerned, organic practices do not permit the use of any sort of a synthetic substances. So uske liye bhi we are doing capacity building trainings and also coming up with tutorials so that people understand what is organic principles and follow it. Thank you. And I think with that, we come to the end of this session. We're running out of time. Thank you so much for all the valuable inputs, everybody on the panel. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ये पूरी बातचीत और ये पैनल डिस्कशन रहा है जिसमें लगातार जो हम बात करते आ रहे हैं कि इस पैनल डिस्कशन में भी बहुत सी ऐसी ज़रूरी बातें और पॉइंटर्स निकल कर सामने आए हैं। चलिए, सो वंस अगेन थैंक यू सो मच टू ऑल। और अब हम फेलिसिटेशन की ओर में आगे बढ़ रहे हैं और हम रिक्वेस्ट करेंगे अब्दुल्ला आईडीसी जी से कि आप प्लीज़ कम अप ऑन द स्टेज। अब्दुल्ला आईडीसी, कि आप आए और हमारे पैनलिस्ट को आप फेलिसिटेट करेंगे। अब्दुल्ला जी, आर यू हियर? ओके, संदीप खंडेलवाल जी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। संदीप खंडेलवाल जी, आप प्लीज़ मंच पर आएँ और ये जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पैनल डिस्कशन अभी यहाँ पर हुआ है, आप हमारे पैनलिस्ट को, हमारे गेस्ट को आप फेलिसिटेट करेंगे। आप फेलिसिटेट करेंगे मिस्टर अनुपम कौशिक जी, मैनेजिंग डायरेक्टर NCEL। संदीप खंडेलवाल जी, विशाल खंडेलवाल जी को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज़ मंच पर आएँ। मिस्टर अनुपम कौशिक जी, मैनेजिंग डायरेक्टर NCEL को फेलिसिटेट करते हुए संदीप खंडेलवाल जी। और फिर से आपसे रिक्वेस्ट है डॉक्टर सरस्वती बोस जी, जनरल मैनेजर अपीडा, को भी आप फेलिसिटेट करें। संदीप खंडेलवाल जी, आपसे फिर से रिक्वेस्ट कि आप सरस्वती बोस जी को फेलिसिटेट आप करेंगे। डॉक्टर सरस्वती बोस जी, जनरल मैनेजर अपीडा। विशाल खंडेलवाल जी से आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे मिस्टर अनुकूल जोशी जी, CEO नेचर पल्स प्राइवेट लिमिटेड, को आप फेलिसिटेट करें। विशाल खंडेलवाल जी। टुकाई मुखर्जी जी को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ स्टेज पर आए। टुकाई मुखर्जी जी। आप फेलिसिटेट करेंगे मिस्टर अनिल जाधव जी, रीजनल डायरेक्टर ECO CERT इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मिस्टर अनिल जाधव जी को आप फेलिसिटेट करेंगे। टुकाई मुखर्जी जी। आप फेलिसिटेट करेंगे मिस्टर अनिल जाधव जी को। शशांक अग्रवाल जी, ओम एग्रो। शशांक अग्रवाल जी, आर यू हियर? शशांक अग्रवाल जी। विशाल खंडेलवाल जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मिस स्वाति तोमर जी, AGM इंटरनेशनल सेल्स नेचर बायो फूड्स, को आप फेलिसिटेट करेंगे। अमित अग्रवाल जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस पूरे पैनल डिस्कशन को, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से कंडक्ट किया है, बहुत से महत्वपूर्ण सवाल भी रखे हैं, बहुत से ऐसे पॉइंटर्स भी निकल कर सामने आए हैं, तो आप मॉडरेटर इस पैनल डिस्कशन के मिस्टर रामकृष्णन M को आप फेलिसिटेट करेंगे। CA अमित अग्रवाल जी। थैंक यू सो मच। और एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस ग्रुप फोटोग्राफ के लिए हम सभी गेस्ट और पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करते हैं इस पल को हमेशा के लिए एक तस्वीर के रूप में कैद कर लिया जाए।
इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट IIRS 2026 का ये सुंदर आयोजन जिसका आगाज़ आज सुबह से हो चुका है और 2 दिनों तक बहुत से ऐसे डिग्निटरीज़ हैं, मेहमान हैं, एक्सपर्ट्स हैं जो कि हमारे साथ में जुड़ते चले जा रहे हैं और उन सभी को एक साथ यहाँ पर एक ही छत के नीचे हमें उन्हें जानने का, सुनने का मौका यहाँ पर मिल रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट का ये सुंदर आयोजन जो कि आज सुबह से ही अलग अलग एक्सपर्टीज़ और डिग्निटरीज़ यहाँ पर जुड़ते चले जा रहे हैं और जिसकी बात हम लगातार आप सभी से ये साझा कर रहे हैं कि इस समिट की खूबसूरती ये है कि आप सभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, न सिर्फ छत्तीसगढ़ प्रदेश से, छत्तीसगढ़ के बाहर ऑल ओवर इंडिया से और इंडिया के बाहर अलग अलग कंट्री से भी लोग डिग्निटरीज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सभी को सुनने का मौका आज इस पूरे 2 दिनों के इस पूरे प्रोग्राम में सुनने का और जानने का मौका मिल रहा है। थिंक राइस थिंक इंडिया की बात लगातार सुबह से हो रही है। छत्तीसगढ़ जिसको राइस ऑफ बोल के नाम से जाना जाता है, उसी छत्तीसगढ़ में हम और आप सभी यहाँ पर मौजूद हैं और ऐसे में एक ऐसा स्टेट जिसने अपनी एक अलग ही पहचान बना रखी है, राइस बोल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और इसी प्रदेश में इसी जगह पर राइस को लेकर इतनी बात हो रही है। राइस से जुड़े एक्सपोर्टर्स यहाँ पर आए हुए हैं, डिग्निटरीज आए हुए हैं और सभी एक्सपर्ट्स को जानने का, सुनने का मौका मिल रहा है और हमें नहीं लगता कि इससे ज़्यादा खूबसूरत मौका और ये पल हो सकता है। हर चीज़ जब पहले से और ज़्यादा बेहतर होती है तो उसका सफलता का परिणाम इसी प्रकार से अंदाज़ा जा सकता है। उसकी तस्वीर जो आज निकल कर सामने आ रही है, आज और कल 2 दिनों तक ये पूरा प्रोग्राम चलने जा रहा है। आज पहले दिन के इस प्रोग्राम के हम अपने अंतिम कड़ी की ओर में अब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सेकेंड लास्ट पैनल डिस्कशन यहाँ पर हुआ था और एक अब लास्ट आज के इस डिस्कशन का, आज के इस इवेंट का लास्ट सेशन की ओर में अब हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं जिसमें ईरी की तरफ से प्रेजेंटेशन होना है और 2 रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो कि अवार्ड किए गए हैं अपीडा की ओर से, इसको लेकर भी यहाँ पर बातचीत भी होगी और रिवील भी यहाँ पर किया जाएगा, लॉन्चिंग यहाँ पर किया जाएगा। तो ऐसे ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट ये सेशन यहाँ पर होना है और इस इम्पॉर्टेंट सेशन के साथ में हम आज के इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट को रैप अप करेंगे और फिर कल हम आप सभी से फिर से एक बार मुखातिब होंगे जिसमें बहुत से और भी अलग अलग पैनल डिस्कशंस होंगे, पॉइंटर्स निकल कर सामने आएंगे, बहुत से स्पीकर्स होंगे जो कि हमारे साथ में कल भी जुड़ेंगे, जिन्हें जानने का और सुनने का मौका हमें कल भी मिलेगा। तो 2 दिनों तक लगातार IIRS इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट का ये आयोजन यहाँ पर चल रहा है जिसमें थिंक राइस थिंक इंडिया, टेकिंग इंडियाज राइस स्टोरी टू द वर्ल्ड, इसी मोटिव के साथ, इसी पर्सपेक्टिव के साथ में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और ये आयोजन, ये प्रोग्राम बहुत ही शानदार तरीके से लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। हमारी खुशकिस्मती है कि आप सभी एक्सपर्ट्स हमारे बीच में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बहुत ही सुंदर तस्वीर इस इवेंट के माध्यम से ये निकल कर सामने आ रही है जिसमें हर एक पैनल डिस्कशन जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि हर पैनल डिस्कशन अपने आखिरी यानी कि पहले वाले पैनल डिस्कशन से और भी बेहतर निकल कर सामने आ रहा है। नई बात हर डिस्कशन में निकल कर सामने आ रही है, नई चीज़ें, नई सीख हर एक स्पीकर के बात से, उनके पॉइंटर से निकल कर सामने आ रही है। तो निश्चित ही बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पूरा पैनल डिस्कशन हुआ है। आज का ये पूरा दिन रहा है जिसमें एक्सपर्ट्स आए हैं, उन्हें हमें जानने का, सुनने का मौका मिला है। और कल की अगर बात करें तो कल भी दिन भर में बहुत से ऐसे सेशंस और एक्टिविटीज़ यहाँ पर कल होने वाली है और उसमें भी अलग अलग पैनल डिस्कशंस होंगे जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स तय किए गए हैं। आज के अगर सब्जेक्ट की बात करें तो आज भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अलग अलग विषय जो है वो निकल कर सामने आए जिसमें ग्लोबल राइस ट्रेड, एम्बेसी की तरफ से क्या कुछ उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो हमें सुनने का मौका यहाँ पर मिला है। उसके बाद में एक एक करके हमने अलग अलग पैनल डिस्कशंस किए जिसका सब्जेक्ट था इंडियाज़ गोल इन द ग्लोबल राइस इकोनॉमी, डिमांड, सप्लाई एंड चेंजिंग ग्लोबल ट्रेड ट्रेंड्स, quality standards, testing, buyer compliance,
pricing and risk management, rice industry association perspective. तो ये सारे सब्जेक्ट्स थे जिसको लेकर जिस पर बेस्ड पैनल डिस्कशंस यहाँ पर हुआ है। सुबह से अलग अलग सेशंस लगातार हो रहे हैं और अब हम अपने आखिरी सेशन की ओर यहाँ पर हैं। एक लास्ट सेशन जिसे चिंतन शिविर का नाम दिया गया, जिसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी है और इस चिंतन शिविर को भी अगले अलग अलग सेशंस में इसे ब्रेक किया गया था, जिसके अब हम आखिरी फाइनल सेशन की ओर में हम अब आगे बढ़ रहे हैं और इस सेशन के साथ में आज के इस दिन को हम रैप अप करेंगे। आज के इस पहले दिन के इवेंट को हम रैप अप करेंगे। कल हम फिर से हाजिर होंगे आप सभी के बीच में, जिसमें फिर से हम एक्सपर्ट्स को सुनेंगे, जानेंगे और बहुत से ऐसे पॉइंटर्स है जो कि निकल कर सामने आएंगे। ओके, सो अब जो ज़रूरी मैनेजमेंट था, स्टेज सेटिंग थी, वो सारा कुछ प्रोसेस अब पूरा हो चुका है और अब हम स्टेज पर बुलाते हैं सबसे पहले चेयरमैन अपीडा IAS श्री अभिषेक देव जी, प्लीज कम अप ऑन द स्टेज। मिसेस विनीता सुधांशु जी, जनरल मैनेजर अपीडा। डॉक्टर सौरभ बदोनी जी, साइंटिस्ट एंड लीड ग्रेन क्वालिटी एंड न्यूट्रिशन। Dr. Hamida Etagi ji, Scientist, Product Development and Sensory, International Rice Research Institute, ED. आप सभी से दरख्वास्त है कि कृपया मंच पर आएं। श्री अभिषेक देव जी IAS, चेयरमैन अपीडा। मिसेस विनीता सुधांशु जी, जनरल मैनेजर अपीडा। डॉक्टर सौरभ बदोनी जी, साइंटिस्ट एंड लीड ग्रेन क्वालिटी एंड न्यूट्रिशन। Dr. Hamida Etagi ji, Scientist, Product Development and Sensory, International Rice Research Institute, ED. तो सभी गेस्ट अब स्टेज पर आ चुके हैं और अब बिना देरी के सबसे पहले हम विनीता मैम से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ मैम आएँ और इस सेशन को एड्रेस करें। विनीता मैम। Once again, good evening everyone. Distinguished delegates, esteemed colleagues, friends, good evening. It is a privilege to address this gathering today on behalf of APEDA. I extend a warm welcome to all participants to this session today, and I really express my sincere appreciation for all the active engagements. Your presence underscores the collective commitment of policymakers, researchers, industry leaders and development partners to shaping a competitive and future-ready agriculture and processed food ecosystem for India and the global market. While Basmati has successfully established itself as a premium export commodity, the non-Basmati rice segment, despite its strong quality attributes and nutritional advantages, remains relatively underpositioned in international market. From a policy perspective, this presents a clear opportunity. So APEDA has placed a strong emphasis on evidence-based policy making and institution collaboration. I would like to highlight our partnership with the International Rice Research Institute, South Asia Regional Center, Varanasi, which has been a key research partner since 2021 and acting as a research and the knowledge partner for various events co-organized by APEDA, and through this collaboration, two strategic projects have been implemented focusing on comprehensive grain quality and nutritional profiling of non-Basmati rice using advanced laboratory infrastructure, as well as the development of value-added product of rice and rice-based products. And these initiatives are aligned with APEDA's mission to strengthen export competitiveness through science, standardization and innovation. As I have mentioned earlier also that we should not look towards as a commodity, rice as a commodity. So effort should be made to, to diversify into the value-added product.
And past, I think, for over 3 years, the IIRI is working on these projects, and they have come out with the results, and where the 13 GI tag varieties from 7 states with an additional 5 varieties currently under the GI registration process have been identified under these projects, and systematic multi-year field and lab testing has undertaken to assess consistent grain quality parameters and nutritional characteristics over the last 3 years, and the efforts have led in pinpointing promising rice varieties and their unique and the superior quality and the nutritional value in propositions. So based on these, the research work, we were able to, that I have already shared with all the gatherings, that we were able to address and introduce the new varieties in our sticky varieties in the Japanese market. And with this, we have also awarded one more project on value-added products of rice, rice-based value-added products to IIRI, so that people can diversify and look towards the scope for the value-added products of, the potential GI varieties. And in addition to this, we are today I'm really very happy to share that we are going to hand over these projects. We are sharing these projects with the trade, so that with the help of IIRI, I think we'll be able to strengthen and do the hand holding of the exporters who are interested for these identified rice varieties or the value-added products developed by IIRI. So with these words, I would like to thank IIRI as well for this, the work undertaken by them, and the core results which have come out from these studies. So with these words, I would conclude my welcome remarks here only. Thank you very much. थैंक यू सो मच मैम। और अब हम अभिषेक सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ प्रोग्राम को, अब इस सेशन को एड्रेस करें। अभिषेक देव जी, चेयरमैन अपीटा। विनीता मैडम ने भी काफ़ी इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया। तो ब्रॉडली जो हमारे जो IIRI के साथ हमारा जो कोलैबोरेशन है, ये 2 प्रोजेक्ट्स पर था। एक तो था कॉम्प्रिहेंसिव ग्रेन एंड न्यूट्रिशनल क्वालिटी प्रोफाइलिंग ऑफ नॉन बासमती राइस, और दूसरा था डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स फॉर राइस एंड राइस बेस्ड सिस्टम्स। तो ऑफ कोर्स सौरभ जी और जो IIRI की टीम काफ़ी अनुभव यही है इस प्रोजेक्ट से कि ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। इसमें हमने जो हमारे GI वैरायटीज़ हैं, करीब 30 से ज़्यादा GI वैरायटीज़ इंडिया में हैं, उसका इन्होंने एक अच्छा अध्ययन करा। कई कल्टीवार्स का इन्होंने पूरा टेस्ट करा और ये देखा कि उनमें से कौन से वैरायटीज़ हैं जिनका बहुत अच्छा उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चाहे हेल्थ के बेनिफिट्स हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, जिंक की कंटेंट ज़्यादा है, या न्यूट्रिशनल प्रोफाइल बहुत अच्छी है। ऐसा इन्होंने पूरी अपनी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करी और उन्होंने हमारे जो बहुत ही हाई पोटेंशियल GI वैरायटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करा। काफ़ी अच्छा हमारा अभी कोलैबोरेशन, जैसे मैडम ने बताया कि जापान में हम कर पाए। जो इन्होंने हमारी जितनी भी GI वैरायटीज़ को स्टडी करा है, फिर हमें इनकी स्टडी से काफ़ी बेनिफिट मिला। ये बता पाए कि जापान की मार्केट में कौन सी ऐसी वैरायटीज़ हैं जो कि जिनका हाई पोटेंशियल है, और इनकी बताई हुई वैरायटीज़ हमने वहाँ पर लाइव टेस्टिंग सेशन हमने जापान में कराया और बहुत ही अच्छा हमें रिज़ल्ट मिला कि वहाँ पर हमारी 3-4 वैरायटीज़ एक्चुअल में, एक तो होता है कि डेस्कटॉप एनालिसिस, दूसरा होता है कि एक्चुअल में वहाँ पर लोगों ने जब उसको टेस्ट करा, हमारी इन वैरायटीज़ से जब जापानीज़ डिशेस बनाई, तो दे वर वेरी हैप्पी विद दैट। तो अभी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि जो आगे नेक्स्ट स्टेप है, जो हमारा कई वैरायटीज़, जैसे मणिपुर का जो राइस है वहाँ पर काफ़ी सक्सेसफुल हुआ, जम्मू कश्मीर का राइस वैरायटी काफ़ी सक्सेसफुल हुई। तो हम लोग काम कर रहे हैं कि एक वहाँ पर
फ्लैग ऑफ भी कर रहे हैं हम अपनी मणिपुर की वैरायटी, जो कि काफ़ी मुझे उम्मीद है कि कुछ दिनों में हम लोग उसको कर पाएंगे। एक MOU तो हो गया है। इसी तरह जो दूसरा प्रोजेक्ट है जो कि और काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो है कि डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू एड प्रोडक्ट्स फ्रॉम राइस। तो जैसे हमें पता ही है कि हम लोग सबसे बड़े निर्यातक हैं चावल के और 30% हमारा वर्ल्ड में शेयर है। बट एक बल्क राइस से हमें स्पेशली नॉन बासमती में जो इशू है कि ज़्यादातर हम बल्क एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। जो नेक्स्ट स्टेप है जिसमें जो भी हमारे पूरे स्टेक होल्डर्स हैं राइस से जुड़े हुए, उनका इनकम बढ़ाने का एक बहुत अच्छा अगर है कि हम लोग राइस से वैल्यू एड प्रोडक्ट्स डेवलप करें। तो इरी ने काफ़ी अच्छे हमारे वैल्यू एड प्रोडक्ट्स डेवलप करे हैं। अपने काफ़ी डिटेल्ड इन्होंने हमारी अलग अलग वैरायटीज़ यूज़ करी, उनके इन्होंने कई अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाए और फाइनली जो उसका रिज़ल्ट है वो आज आपको बताएंगे। तो जैसे कि राइस बेस्ड वैल्यू एड प्रोडक्ट्स के होल ग्रेन ग्लूटेन फ्री राइस कुकीज़, सीरियल ब्रेकफास्ट म्यूज़ली, रोस्टेड ब्राउन राइस सेमोलिना और न्यूट्रिशनली एनरिच प्रोडक्ट्स लाइक पिगमेंटेड पॉप्ड राइस, राइस फ्लेक, तो ये इन्होंने डेवलप करे हैं। और आज ये दोनों रिपोर्ट्स और जो ये प्रोडक्ट्स हैं, आज इसकी पूरी टेक्नोलॉजी, उसकी पूरी डिटेल्स आज हम लोग इसको पब्लिक में समर्पित कर पाएंगे, ताकि जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी इनके डेवलप्ड प्रोडक्ट्स हैं, जो उसकी रेसिपीज़ हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग मेथड है जो ये बता रहे हैं, उसको अब ये टेकअप कर सकते हैं और इन प्रोडक्ट्स को अब ये मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो मैं पूरी इरी की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से इन प्रोडक्ट्स का अध्ययन करा, इनको डेवलप करा और हमें बहुत ही अच्छे सकारात्मक हमें रिज़ल्ट्स मिले हैं। और ये एक शुरुआत है, आगे हम लोग और भी प्रोडक्ट्स हम लोग सोच सकते हैं कि डेवलप करें। कई और भी आइटम्स हैं जो कि इंटरनेशनली हम देखते हैं उनकी काफ़ी अच्छी मांग है और हमारे पास राइस वैरायटीज़ की कमी नहीं है, हम लोग उसको कर सकते हैं। इनफैक्ट इनका एक प्रोजेक्ट भी था कि हमारी कुछ ऐसी इंडिका वैरायटीज़ हैं जिनका जपोनिका की तरह ट्रेट्स हैं, तो उन्होंने वो आइडेंटिफाई करी हैं, उनको भी हम यहाँ पर कल्टीवेट कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं। हम लोग स्टेक होल्डर्स के साथ काम करके हम लोग इरी के साथ बैठ सकते हैं कि आगे और कैसे और भी अच्छे प्रोडक्ट्स करें और भी अच्छे प्रोजेक्ट्स करें। तो ये एक एक्चुअल में एक रियल कोलैबोरेशन है बिटवीन एकेडमिया और इंडस्ट्री। नहीं तो नॉर्मली कहा जाता है कि जो एकेडमिया वाली चीज़ एकेडमिया में और किताबों में ही रह जाती है, उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे जाते। बट आज ये एक्चुअल में एक मिसाल है कि जो एक प्रॉपर रिसर्च से प्रोडक्ट्स डेवलप हो रहे हैं और आज उसको इंडस्ट्री को सौंपा जा रहा है आगे इस्तेमाल करने के लिए, आगे डेवलप करने के लिए। तो अंत में मैं फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ इरी की टीम को, हमारे अपीडा की सीरियल डिवीज़न को, जिन्होंने इसको पूरा आगे लेकर गए, और स्पेशली अंत में मुकेश जी को कि आपने IIRS का हमें ये प्लेटफॉर्म दिया कि जहाँ पर जो हमारे इरी के जो प्रोजेक्ट हैं इसको आज हम लोग पब्लिक को समर्पित करने जा रहे हैं। तो धन्यवाद एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच सर। और अब डॉक्टर सौरभ बदोनी जी, साइंटिस्ट, लीड ग्रेन क्वालिटी एंड न्यूट्रिशन, आपसे रिक्वेस्ट कि आप इस सेशन को अब एड्रेस करेंगे। डॉक्टर सौरभ बदोनी जी। थैंक यू फॉर अगेन इनवाइटिंग अस, और ऐसा मौका देने के लिए, ऐसा अवसर देने के लिए कि हम अपना जो डिस्कशन है वो आगे बढ़ा रहे हैं। और थैंक यू मैडम नीता मैडम एंड अभिषेक सर फॉर दैट सपोर्ट जो हमें मिला है पिछले सालों में जब हमें प्रोजेक्ट ऑपरेट कर रहे थे, और आपके सपोर्ट के साथ ही हम लोग आगे बढ़े और जो अचीवमेंट्स अभी आप जो बताई, जो कि बहुत बखूबी आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए, उसको हम कर पाए। तो ये जो प्रोजेक्ट है उसको हम लोग जिस तरह से ऑपरेट किए थे, जैसे ऑलरेडी बता चुके हैं मैडम आंसर इस बार इस पूरे की क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी की, बट ब्रीफली हम लोग इसको क्विकली बताना चाहेंगे। और ऑलरेडी कुछ चीज़ें प्रेजेंट हो चुकी हैं तो उसको हम लोग और ब्रीफ करेंगे ताकि जो लास्ट सेशन है वो
हैप्पीली एंडिंग उसको हम कर सकें यहाँ पे। तो इफ़ आई कैन ओके, सो दैट क्विकली हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि हम फर्स्ट वाला प्रोजेक्ट जो था वो कॉम्प्रहेंसिव ग्रेन क्वालिटी प्रोफाइलिंग का था, जिसमें कि हम सभी ने जो मेन फोकस किया, सो मेन फोकस वाज टू आइडेंटिफाई एंड characterize the non-basmati varieties. So currently there are around 4,000 to 5,000 rice varieties present in India as per the records. उसमें से हम लोगों को ये फोकस करना था कि किसको हम फोकस करें। तो उसमें से what we have done substantially to identify that as per the India wide region which was to select। और इसमें हमारे पास चैलेंजेस जो थे वो ये भी थे कि न केवल हमें वैरायटीज़ का नाम से सेलेक्ट करना था, बट कई बार सेम वैरायटी के कई सारे एक्सेशंस थे। वो एक नाम से, जैसे सपोज़ हम लोग बात करें काला ज़ीरा या काला नमक, वो एक नाम से जाना जाती है, लेकिन फार्मर्स के पास वो अलग अलग वैरायटीज़ थी और उनके ट्रेड्स भी अलग अलग थे। किसी में अरोमा बहुत अच्छी थी, किसी में नहीं थी, बल्कि सेम नाम था। चैलेंजेस ये था हम किसको प्रॉमिसिंग कहें। कुछ वैरायटीज़ रिलीज़ भी हुई हैं, बट वो आसान नहीं है कि वो किस बेसिस पे हम उसको आइडेंटिफाई करें। तो इसलिए हम लोगों ने उसको आइडेंटिफाई किया, कपल ऑफ ईयर्स तक उसको चेक किया फील्ड में और लैब्स में, और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के बाद ही देन वी कुड हैव एक्चुअली पिन पॉइंटेड दोज वैरायटीज़। सो क्विकली आई विल जस्ट टेक इट फॉरवर्ड। नेक्स्ट प्लीज। So I think just to highlight, I think I won't go into the details because we know that non-basmati, what is the need कि बासमती जो ऑलरेडी आज प्रीमियम कमोडिटी है और कम वॉल्यूम के साथ में अच्छा प्रीमियम देती है, बल्कि जो नॉन बासमती है वो अच्छा वॉल्यूम में एक्सपोर्ट होती है, लेकिन फिर भी द प्रीमियम इज़ नॉट दैट मच। सो देयर इज़ अ नीड, देयर इज़ अ इमीडिएट नीड टू डू समथिंग ऑन दैट, और जो वैल्यू प्रपोजिशन है उसको बढ़ाने के लिए। सो देयर शुड बी समथिंग टू बी डन ऑन वैल्यू एडेड वैराइटीज़, ऑन वैल्यू एडेड प्रपोजिशन। नेक्स्ट प्लीज़। सो अभी जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि किस तरह से हम लोगों ने स्टार्ट किया, और 300 वैराइटीज़ को हमने इसमें टारगेट किया नॉन बासमती। इसमें वैराइटीज़ भी हैं और साथ में जो एक्सेशंस हैं, एक वैरायटी के कई सारे नाम, उनको भी हम लोगों ने इसमें कंसिडर किया, प्यूरिफाई किया, क्योंकि कई सारे मिक्सचर जो फार्मर टू फार्मर जब चीज़ें जो वैराइटीज़ ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि ये इसका एक इनफॉर्मल सीड सिस्टम है, फॉर्मल सीड सिस्टम नहीं है जहाँ पे कि ऑलरेडी सीड वैराइटीज़ किसी नाम से बिक रही हों, नाम से सेल होती हों। सो हमको फोकस करना था उनके जो हाई प्योर बेस्ड ऑन द क्वालिटी बेंचमार्क्स। तो क्वालिटी बेंचमार्क्स के बेसिस पे जब क्वालिटी बेंचमार्क्स के बेसिस पे हमने देखा इसमें व्हाट एग्जैक्टली इट कवर्स इज शॉर्ट गेन एरोमेटिक्स। इट ऑल्सो कवर्ड द पिगमेंटेड राइस फ्रॉम different states of India, and also popular especially rices, and it also covered the GI tagged, so 25 GI tagged, more than 25 GI tagged and non-GI tagged varieties. We also looked into that, irrespective of some of the varieties are yet to be GI tagged, so how to position them well in the for the GI tagging, and also for the positioning for the export and other linkages with the APIDA. So that's where we did. So this is just to show you वो वैराइटीज़ जो हमने प्रोफाइलिंग किया वो रिगरस था, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के बाद में फिर हमने जिसका जो डेटा है वो ऑलरेडी हमने रिलीज़ किया है अभी, जो कि ब्रोशर के फॉर्म में है, अभी वो भी रिलीज़ होगा। तो जस्ट टू शो यू द डिटेल्स कि उसको A to Z हमने उसको एनालिसिस किया, और दिस इज जस्ट टू रिप्रेजेंट। तो इसमें जो इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हमारे सामने आए कि जो आउटपुट था उसमें अराउंड 24 हाईली एरोमेटिक वैराइटीज़ हमें मिली इसमें, कि जो कि बहुत एरोमेटिक हैं, एंड देन समटाइम इरिस्पेक्टिव ऑफ फ्रॉम विच स्टेट दे बिलोंग टू। क्योंकि कई बार ये ज़रूरी है कि इफ़ वी आर टारगेटिंग द एक्सपोर्ट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी नीड टू सी द वैल्यू, एंड देन वी नीड टू टैग इट टू द डिफरेंट स्टेट्स फ्रॉम विच इट बिलोंग्स टू। सो इसमें 20 हमें लो GI वैराइटीज़ मिली, 15 पिगमेंटेड जो कि हाई एंटीऑक्सीडेंट थी, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इसमें से जो काला ज़ीरा जो वैरायटी है वो भी हमें वो अच्छी अरोमा की मिली, जो कि ऑलरेडी हम लोग अभी उसको जगन्नाथ जो ऑलरेडी यूपी और में काला नमक और काला ज़ीरा उत्तर उड़ीसा में, उसको हम लोग लिंक कर रहे हैं अभी। दैट इज़ वाज एक्चुअली लिंक्ड विद द डिफरेंट द प्रसादम ऑफ द उड़ीसा जगन्नाथपुरी टेम्पल। सो दैट्स व्हाट एक्चुअली इट वाज लिंक्ड। और द फोकस ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज कि अभी जो हम लोग ये यील्ड किया है, इट विल ऑल्सो कंटिन्यू, क्योंकि अभी जो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल दैट देयर आर अराउंड 3-5,000 varieties. We are continuing to identify the right varieties, but this is just
to the initiate we have done this exercise. And currently important क्या होगा कि जो अभी varieties हमने identify की हैं, we need to strengthen the rice value chain. So currently we started working on it with Kala Namak, with Adam Chini. There are certain varieties where we started already, और value chain strengthen करने के लिए we are just linking it with different other projects. और अभी इसके साथ साथ में जो और स्टेट्स हैं उनके स्टेक होल्डर से भी हम लिंक कर रहे हैं, जिसमें कि उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा की जो वैरायटीज़ हैं, ताकि हम उनकी जो स्टेट की इकोसिस्टम है उसको स्टेबल कर सकें, उसको सपोर्ट कर सकें. बट what's important here is that the policy support from the states. So that's something we are expecting from respective states. So policy support and some project mode, so that we can operate with more confidence to strengthen the rice value chain of different states. जैसे अभी सर ने बताया कि जो already we have done some exercise, कि जिसमें हम लोगों ने around sticky varieties उनको identify किया, और फिर जो suitable थी जापान के लिए और साउथ ईस्ट एशिया के लिए उनको filter करके we identified 7 varieties, and with the help of APIDA and the chef association we narrowed down 7 के आसपास वैरायटी हमें नैरो डाउन की, जो कि जापान में जब हम लोग उनके सामने वेट डिमोन्स्ट्रेशन और सेंसरी टेस्टिंग किया, तो देन दे आउट ऑफ द 7 3 वाज वेरी मच लाइक्ड बाय द कंज्यूमर्स ओवर देयर एंड ट्रेडर्स. सो दैट्स वाज एनकरेजिंग फॉर अस. साथ में ही जो अभी हम लोगों का जो आउटपुट है, जो आई ऑलरेडी मेंशन, दोज आर इट्स इम्पॉर्टेंट ऑल्सो कि कैसे हम उसको पैकेजिंग करें. तो दस वी ऑल्सो क्रिएटेड सम मॉडल्स. सो करेंटली ये मॉडल अभी हम आप देख सकते हैं स्टॉल पे, जिसमें कि हम पैकेजिंग और विद द हेल्प ऑफ अपीडा हाउ those model packaging models are created just to link it with the effectively with the market and on different startups and as FPOs, so that again most of the things again they feel connected, and we just bridge actually the gap which is there to link it with the different industries. उसके साथ में ये समराइज़ करता हूँ कि ऑलरेडी जो डेटाबेस है उसके साथ हमने डेटाबेस भी उसमें बनाया, जो कि इम्पॉर्टेंट था, न केवल क्योंकि ऑलरेडी कई सारी वैरायटीज़ हैं और हम लोग इसको इनरिच करते जा रहे हैं. तो ये जो अभी ओपन है ये इंटरनली अभी रिसर्चर्स के लिए ओपन है, बट ग्रेजुअली दिस विल बी ओपन टू द स्टेक होल्डर्स सो दैट दे कैन गेट इन्फॉर्मेशन ऑफ दोज वैरायटीज़ एंड ग्रेजुअली सोर्सेज ऑफ दोज सीड्स, विच विल टेक टाइम, बट वो भी होगा तो जिससे कि फार्मर्स को, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को वो सपोर्ट मिल पाएगा डेटाबेस की हेल्प से. दैट करंटली वी ऑलरेडी डन द फ्रंट the front line and also the back end work. We are currently working on it. साथ में जो HSN code वाला effort था, जो based on all the efforts, then with the help of APIDA, this HSN code was signed at least for the GI tagged varieties. So that was also encouraging to promote these GI tagged varieties for the export especially. And then what is important actually, so the point is how it was done, the quality. So for the innovation, for the intervention, how to address the gap, as Abhishek sir already mentioned, madam also mentioned, that these are currently the value proposition. We need to increase, we need to improve those, and also the consistent quality, how it is important to the different markets, export markets. And also earlier presentation by Tanya, she mentioned that people are, even US and UK, those developing in developed economies are paying even tariffs and higher premium for consistent quality. So it's very important to make sure the quality is consistent, and how it can be made by with the help of pure genetics, pure seed, and right intervention by the scientific institution like IIRS and others, so that they can confirm that the quality they are exporting to would not be changed over the time due to the mixing and others. तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, पॉलिसी इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है, साथ में जो strengthen rice value chain. So that's currently we are working with the help of APIDA and other stakeholders, so that हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ में, ताकि हम लोग जो राइस वैल्यू चेन है उसको स्ट्रेंथन कर सकें. और वैल्यू एडिशन पे अभी मेरे बात कलीग हैं वो बताएंगे कि हाउ वी आर डाइवर्सिफाइंग वैल्यू एडिशन एंड देन कैपेसिटी बिल्डिंग. सो दैट करंटली द इकोसिस्टम वी आर ट्राइंग टू मेक, and then we will be currently working on some proposals, so that again with APIDA and with other stakeholders, so that इसको हम लोग और strengthen कर सकें. और अभी जो efforts होंगे ईडी की तरफ से हो रहे हैं, उसमें हम लोग जो कर रहे हैं that is actually the quality testing, nutrition testing over the time,
एंड देन जैसे अभी लास्ट डिस्कशन में हमने सुना POPs, how to define the POPs, value added products, that currently is very important, best management practices. So currently वो भी हम लोग उस पर काम करेंगे so that it can make a seamless ecosystem over there. तो अभी इससे पहले we have some stakeholders meeting and then some of the technical session, and then currently just that's what I'm trying to highlight. And as highlighted, some of the Japonica rice varieties are also identified with good stickiness, the higher the stickiness and softness, together with the their tolerance to the high temperature. तो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि Japonica varieties को low temperature चाहिए होता है. So that currently we develop, and then based on the stakeholders' interest, those can be positioned. So इस तरह से हम लोग link कर रहे हैं, और already I highlighted during my presentation. So I will just conclude this part, and then most important is to link it with the market, right market. And after that, identifying the right market across the world, even in the Southeast Asia, Europe, US, then it's important to work on the backward linkages for the farmers, so that we can work on that backward linkages, forward linkages, and then it can be effectively done with to actually get farmer the premium of his produce and also the other rice value chain stakeholders. So I will just conclude with this slide. I will ask my colleague just to come up, Hamida, just to come up and then discuss about the rice value addition. Thank you very much from my side. थैंक यू सो मच सर. और अब हम आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर हमीदा इतागी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आएँ और इस सेशन को अब आप एड्रेस करें. प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड सेंसरी, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट. A very good evening to everyone. I say that it's too late for all of you, and I appreciate your presence here. Thank you. Today I am going to present on value-added products from rice and rice-based system, which is another project funded by the APIDA. Here mainly we focused on value addition of byproducts of rice milling, especially the brokens and the rice bran, and also some of the traditional land races, which already now Dr. Saurabh has mentioned about the nutritional profiling. Wherein you can see here some of the value-added products our chairman Apida mentioned about the pigmented pop rice and pigmented land rice flakes. These are whole grain rice-based products mainly prepared from traditional land races which are organically grown, and it is free from pesticides and also safe from heavy metals, and it can be consumed as a whole grain. Nowadays, due to so many health issues, people are moving towards whole grain, but as such if we consume whole grain, it is quite difficult for digestion. When we go for such kind of processed products, we can consume a whole grain with all its nutritional health benefits, and it can be again tertiary value added to other snack products by seasoning with spices or some sweeteners. So moving to one of our novel product which we developed at our IIRS is whole grain kala namak cookies. These are prepared from brown rice, especially people do not prefer brown rice because it has a chewy texture, it takes long cooking time. When we add value to brown rice like this type of products, it can be consumed by all age groups, and the inherent properties of brown rice, especially the dietary fiber content, micronutrients and vitamin, all these can be consumed through these kind of snack kind of products, and we can make kids also to attract to eat such kind of products made from whole grains. Another product is cookies, black rice cookies. Actually this is from Chakhao rice from northeast region. It has lot of antioxidants and phytochemicals, micronutrients and dietary fiber, but it is a waxy in texture. But we cannot consume as a rice in the whole grain form. It can be used for some kind of ethnic products like your porridge or some kind of products are being prepared, but these kind of export oriented products like cookies,
which retain most of its nutrition after baking at a high temperature. It can be promoted as a healthy variants of cookies, and most important, it is prepared from the entire whole grain. Nowadays, whatever we are getting in the market is from the refined wheat flour, which lacks most of the nutrients and also the phytochemicals and vitamins. But with these kind of rice-based snacks, as we are a growing country, we can promote such kind of rice cookies and also the rice-based products. Another product is rice muesli. Generally, whatever we get in the market, the rice muesli is prepared from oats and also cornflakes, and nowadays so many millet variants are also coming. As a rice growing country, we are aware of all these rice flakes. So we have a very large industry of rice flakes. Why not we can use these rice flakes and other whole grain products to formulate such kind of rice-based muesli, which is totally gluten-free. Nowadays in Western countries, many people are facing gluten allergy. Such kind of products which are gluten-free and it's cereal-based, rice-based products which are easily digestible and can be used as cereal breakfast can be promoted. We have developed 2 variants of muesli using natural sweeteners like jaggery and also the chocolate flavor, wherein you can see most of the nutrients, especially the iron content and the zinc and also the vitamin B, vitamin 12, all these are retained after processing, but these are ready to eat products. So these all products are scientifically, R&D has been carried out and it has been published in peer-reviewed journals. So you can see here these are scientific evidence-based products, and we are sensitizing these products in many of the symposiums like World Food India, BIRC, and also the programs held by APIDA. And also we are training to women self-help groups. We would like to take it forward, these products, for scaling up or piloting through the interested stakeholders like private partners or exporters, or also the startups, companies, or the women self-help groups or MNC companies. We are open to everyone. We will be happy to provide know-how information on these technologies, or we can customize based on the region-wise these kind of products. I would like to lastly thank APIDA Chairman Abhishek ji and Dr. Vinita Sudhanshu ji and the entire project team. Thank you very much. थैंक यू सो मच मैम। और अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर में आगे बढ़ रहे हैं और संजिता मैम आपको हम रिक्वेस्ट करते हैं आप प्लीज़ मंच पर आएँ, और मुकेश जैन जी सर आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ स्टेज पर आएँ। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से डॉक्टर सौरभ बदोनी जी और डॉक्टर हमीदा जी हमारे साथ में मौजूद हैं, और एक ब्रोशर अब हम रिलीज़ करने यहाँ पर जा रहे हैं जो कि GI टैग्ड राइस के वैरायटीज़ की प्रोफाइलिंग डेटा और इंफॉर्मेशन बेस्ड ये ब्रोशर है, और इसी को रिलीज़ यहाँ पर कर रहे हैं डॉक्टर सौरभ जी और डॉक्टर हमीदा जी जो कि ईरी से हमारे साथ में हैं, साथ ही मुकेश जैन जी, संजिता गुप्ता जी, विनीता जी, और साथ ही साथ में अभिषेक देव जी, चेयरमैन अपीडा। हम चाहेंगे जोरदार तालियां हो, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पल जहां पर इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से ब्रोशर को रिलीज यहां पर किया जा रहा है। GI टैग्ड राइस की अलग अलग वैरायटीज है जिसकी प्रोफाइलिंग और डेटा और इंफॉर्मेशन बेस्ड ये पूरा ब्रोशर है। इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट का ये जब आयोजन हो रहा है तो ऐसे में इस सुंदर और शानदार आयोजन के बीच में इस ब्रोशर का रिलीज होना भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, और बहुत ही खूबसूरत ये पल है जब IIRS इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट
थिंक राइस थिंक इंडिया, टेकिंग इंडियाज राइस स्टोरी टू द वर्ल्ड। और इसी मोटिव के साथ में ये एक महत्वपूर्ण लॉन्चिंग, एक रिलीजिंग यहाँ पर हो रही है। ब्रोशर को रिलीज किया जा रहा है ईरी की तरफ से। GI टैग्ड राइस की वैरायटीज़ है, प्रोफाइल डेटा बेस्ड इंफॉर्मेशन जो कि इस ब्रोशर में है, और इसी की रिलीजिंग यहाँ पर हो रही है। थैंक यू सो मच। और ब्रोशर के रिलीज़ करने के बाद में एक और महत्वपूर्ण चीज़ जिसको अब रिलीज़ यहाँ पर किया जा रहा है, रिलीज ऑफ वैल्यू एडेड राइस बेस्ड प्रोडक्ट्स, जिसमें होल ग्रेन काला नमक राइस की कुकीज़ है, ब्लैक राइस कुकीज़ और सीरियल ब्रेकफास्ट, राइस फ्लेक्स म्यूसली, चॉकलेट फ्लेवर राइस फ्लेक्स म्यूसली। ये 4 ऐसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं जिसको भी अभी रिलीज़ यहाँ पर किया जा रहा है ईरी की तरफ से। बहुत ही सुंदर ये पल और ये अवसर है। 2 रिसर्च प्रोडक्ट्स अवॉर्डेड बाय अपीडा, और इसी में ही ये महत्वपूर्ण रिलीजिंग ब्रोशर को रिलीज यहाँ पर किया गया है, और साथ ही साथ में वैल्यू एडेड राइस बेस्ड प्रोडक्ट को भी रिलीज यहाँ पर किया जा रहा है। थैंक यू सो मच। और इन सभी प्रोडक्ट्स की अब एक एक प्रति हम यहाँ पर दे रहे हैं, और इसकी टेस्टिंग भी यहाँ पर हो रही है। स्टेज पर हमारे सभी गेस्ट यहाँ पर हैं। रिलीज ऑफ वैल्यू एडेड राइस बेस्ड प्रोडक्ट, होल ग्रेन काला नमक राइस कुकीज, ब्लैक राइस कुकीज, सीरियल ब्रेकफास्ट राइस फ्लेक्स म्यूसली और चॉकलेट फ्लेवर राइस फ्लेक्स म्यूसली को अब यहाँ पर उसके प्रोडक्ट को रिलीज यहाँ पर किया जा रहा है। संजीता मैम जी हमारे साथ में हैं, साथ ही साथ में अभिषेक देव जी, चेयरमैन अपीडा। ईरी के द्वारा इंडस्ट्री को हैंडओवर ये पूरा प्रोजेक्ट किया गया है। बहुत बड़ी ये उपलब्धि है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पल। तालियों के साथ में हम चाहेंगे कि इस पूरे पल को सेलिब्रेट यहाँ पर किया जाए। अभिषेक देव जी, डॉक्टर सौरभ बदूनी जी, डॉक्टर हमीदा इतागी जी, मिसेस विनीता सुधांशु जी, संजीता गुप्ता जी और मुकेश जैन जी हमारे साथ में स्टेज शेयर यहाँ पर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और फेलिसिटेशन की ओर अब हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें मुकेश जैन जी से आग्रह है कि आप एक एक करके हमारे सभी स्पीकर्स को और गेस्ट को आप फेलिसिटेट करेंगे। इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट 2026 का सेकेंड एडिशन, जिसका पहला दिन आज था, और आज दिन भर में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स यहाँ पर निकलकर सामने आई हैं। बहुत से डिग्निटरीज हमारे साथ में मौजूद रहे। उन सभी को हमारी खुशकिस्मती है कि जानने का और सुनने का मौका मिला है। तो इस तरह से आज IIRS का पहला दिन, 2 दिनों तक ये पूरा प्रोग्राम और ये इवेंट जो कि दिन भर चलने वाला है, दोनों ही दिनों में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस, स्पीकर्स यहाँ पर आ रहे हैं, उनको सुनने का, जानने का मौका और अवसर इसी प्रोग्राम के थ्रू और इसी की कारण में मिल पा रहा है। आज का ये पहला दिन, अब हम इसको रैप अप कर रहे हैं और अपने एंडिंग सेरेमनी की ओर में अब हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें बहुत से आज स्पीकर्स आए हैं, गेस्ट आए, डिग्निटरीज आए, जिनको सुनने का मौका मिला है, और बहुत ही महत्वपूर्ण पैनल डिस्कशंस भी हुए हैं अलग अलग टॉपिक्स को लेकर, अलग अलग सब्जेक्ट के को लेकर और पॉइंटर्स को लेकर ये पूरा डिस्कशन हुआ है। थिंक राइस थिंक इंडिया, टेकिंग इंडियाज राइस स्टोरी टू द वर्ल्ड, और इसी मोटिव के साथ में आज का ये पहला दिन IIRS, जो कि 2 दिनों तक ये पूरा इवेंट निरंतर चलने वाला है, उसके पहले दिन के आज क्लोजिंग सेरेमनी की ओर में अब हम आगे बढ़ रहे हैं। लगभग आज सारा और बहुत ही महत्वपूर्ण ये डिस्कशन हुआ है। और चलिए अब हम आप सभी को गाला नाइट डिनर के लिए, आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये किया गया है। आप सभी आएँ और अब इस पूरे दिन भर में जितनी भी जो बातचीत हुई है, डिस्कशन हुआ है, अब इसको एक सॉफ्ट इवनिंग की तरफ में अब हम टर्न करते हैं, और कल हम आप सभी से फिर से हाजिर होंगे इसी जगह पर और भी ढेर सारे डिग्निटरीज, स्पीकर्स और अलग अलग सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू सो मच। I think we should give a huge round of applause to our MC. She has coordinated so well since morning. I'll request everyone to please. Thank you. Thank you so much to all. Thank you so much.